beautiful journey of Paras ji and Chakshu ji. We also heard about heart-throbbing love story, Rab de bana di jodi, Rab ne bana di jodi, a marriage made in heaven, heaven's real life version. Their professional life experiences, their holistic approach towards it. We also heard about Divya Atma Avatar and invoking pure soul and arrival of a divine soul who is Abhishek ji. We also got to know about Bhavnagar and all the energy pillars that supported Bhavnagar. We also got to know about how Bhatt family got introduced to Samarpan meditation, and then anubhutis just started flowing left and right. And after they, Paras ji and Chakshu ji met Swamiji. Today, we are going to bring many chilling anubhutis and lessons for us to learn from the Bhatt family's life journey. And yes, wouldn't you want to meet the Divya Atma or the pure soul who was invoked by Paras ji and Chakshu ji? So without further delay, let's start this mesmerizing segment and meet the pure soul and get to know about their journey in few minutes. Before that, I would like to invite Sagar to read the disclaimer. Thank you, Sonalji. The only objective of this Samarpan is connecting all living beings of present times. The information and opinions shared here by anyone are personal views of the speaker and are not officially associated with any social, religious, cultural, political, educational, or other organization. We are here to be inspired on how to go back to our original nature of a pure soul or a Holy Spirit. By no means we intend to offend someone or to hurt anyone's emotions. We support understanding of any subject based on our own experiences rather than relying on any online or bookish information, encouraging baseless ideology or superstitious beliefs. Please accept our soulful love or atmiyata and disregard any information that you don't agree with. Now I would like to invite Darshanaji. जय बाबा स्वामी। दिस इज समर्पण। इस सुंदर और मजेदार कार्यक्रम का आधार है समर्पण ध्यान। यह एक प्राचीन और प्राकृतिक ध्यान योग है जो गुरु संस्कार या गुरु के मूल्यों पर आधारित है। हिमालय के योगी और तपस्वी यह ध्यान साधना पिछले 800 सालों से करते आ रहे हैं और यह ध्यान संस्कार श्री शिवकृपानंद स्वामी जी पहली बार समाज में 1994 में लेकर आए ताकि हम जैसे आम आदमी इस साधना का लाभ उठा सके। उन्हीं हिमालय के गुरुओं की कृपा से आज दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में लाखों लोग यह ध्यान साधना कर पा रहे हैं। समर्पण ध्यान साधना किसी भी देश, धर्म, जाति, लिंग, रंग या जीवन शैली का भेदभाव न करते हुए सभी के लिए बिना मूल्य प्राप्य है। समर्पण ध्यान 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है समर्पण। समर्पण यानी हमारी नकारात्मकता, हमारा अहंकार, हमारे भूतकाल एवं भविष्यकाल के विचार अथवा हमारी अपेक्षाओं और आसक्तियों को गुरु चरण में समर्पित करना। दूसरा शब्द है ध्यान। ध्यान वह स्थिति है जिसमें वर्तमान में रहकर किसी भी प्रयत्न के बिना हमारी आत्मा विश्व चेतना से एकरूप हो जाती है। समर्पण ध्यान साधना हमें एक संतुलित मनस्थिति में जीना सिखाती है, जिसे हम सर्वोत्तम आरोग्य और सर्वांगीण प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी ने हमें जय बाबा स्वामी और जय आत्मेश्वर बोलते हुए सुना होगा। जय बाबा स्वामी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम सभी आत्मा रूपी मोती एक सद्गुरु रूपी अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं, जो और कोई भी नहीं पर हमारे प्यारे बाबा स्वामी ही है, और हम आपकी आत्मा को जय आत्मेश्वर कहकर सादर प्रणाम करते हैं। Now I would like to invite Viresh ji.
जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी और जय आत्मेश्वर गुरु बंधुओं। जैसे कि अभी सोनल जी ने बताया कि आज के समर्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भट्ट कुटुंब के 3 सदस्य हैं जो उच्चतम स्तर के आत्माएं हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कल भट्ट दंपतियों के साथ संवाद शुरू हुआ था। आज का वो दूसरा भाग शुरू होने वाला है, क्योंकि आज नए दर्शक जुड़े हैं, उनके लिए फिर से हम उनका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पारस जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पद पर कार्यरत है और कॉलेज के प्राध्यापक रह चुके हैं। डॉक्टर पारस जी आयुर्वेद, योगा और आध्यात्म क्षेत्र के प्रसिद्ध वक्ता है। पारस जी ने वेदों, उपनिषदों, रामायण, भगवत गीता और अध्यात्म से जुड़े हुए बहुत से पंथों पर, बहुत से ग्रंथों पर व्याख्यान दिए हैं। पारस जी का समर्पण ध्यान में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पारस जी समर्पण ध्यान के साथ सन 2001 से जुड़े हैं और समर्पण ध्यान में आचार्य और प्रचारक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आमतौर पे उन्होंने समर्पण ध्यान के विविध कार्यक्रमों, महोत्सवों एवं महाशिविरों का संचालन किया है। जब वे बोलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती उनके जरिए बोल रहे हैं। वह मधु चैतन्य के संपादक मंडल के सदस्य रह चुके हैं और अभी भी है, और गुजराती मधु चैतन्य के सह संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने आध्यात्मिक सत्य और हिमालय का समर्पण योग भाग 1, 2, 3 के गुजराती अनुवाद करने जैसे पवित्र गुरु कार्य भी किए हैं। इन सब के अतिरिक्त पारस जी ने अनुभूति के ऊपर ईशा समर्पण चैनल पर 25 यूट्यूब प्रकरण प्रसारित किए हैं और ज्ञान के साथ भाव को वृद्धिगत करने हेतु आपने अपने यूट्यूब चैनल पर भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और विज्ञान एवं संतों के जीवन संबंधी प्रेरक प्रसंग इत्यादि निरंतर प्रसारित करते आए हैं। अभी हम चक्षु जी के बारे में थोड़ा परिचय देने वाले हैं। चक्षु जी इनके धर्मपत्नी हैं और ये अपने बचपन पेटलाद गांव में बिताए हैं। वहां के एक समाधिस्थ सदगुरु के आश्रम को वे नियमित दर्शन करने जाते थे। उन्होंने बाल्य वय से ही भक्ति के संस्कार थे। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात आपने आयुर्वेद का अभ्यास नडियाद में किया। चक्षु जी अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में भावनगर, गुजरात में कार्यरत है। वह योगा और नेचुरोपैथी की प्राध्यापिका भी रह चुके हैं। आप आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में महर्षि महेश योगी के संस्था के द्वारा विदेश जाने के लिए चयनित हुए थे। आपने आयुर्वेद, आहार, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य ऐसे अनेक विषयों पर रेडियो में प्रस्तुतियां दी है। डॉक्टर चक्षु जी समर्पण ध्यान के साथ पिछले 20 साल से जुड़े हैं और गुरु कार्य में डॉक्टर पारस भट्ट जी के साथ हमेशा सहयोग देते रहे हैं। और इन दोनों का सुपुत्र है डॉक्टर अभिषेक जी, एक आमंत्रित आत्मा है। आप सबने सुना होगा कल कि उनके बाल्य का जो लीला थे, आज उनके बारे में ज्यादा थोड़ी देर के बाद में सुनने वाले हैं और उनका परिचय भी जुरिका जी ने बाद में करवाएंगे और उनसे भी संवाद करेंगे। आइए अभी मैं हितेंद्र जी को बुलाता हूँ भट्ट दंपतियों के साथ संवाद शुरू करने के लिए दूसरे बार।
जितेंद्र जी। धन्यवाद वीरेश जी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। On behalf of Sri Shiv Krupanand Swami and Global Samarpan family, I invite the Bhatt family to our today's part 2 of spiritual journey of a doctor's family in This is Samarpan program. तो पारस जी, चक्षु जी, आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज तो हमें अभिषेक जी के साथ भी मुलाकात करने का मौका सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो सभी दर्शक कल के कार्यक्रम से इतने उत्साहित हो चुके हैं कि उनको और जानना है आपके बारे में, उनको आपसे और कुछ सीखना है। तो आइए हम चलते हैं अपने कार्यक्रम को आगे लेकर। जय बाबा स्वामी। तो पारस जी, कल आपने हमें बताया कि कैसे आपका बचपन गुजरा, कैसे चक्षु जी का बचपन गुजरा, कैसे आपका दाम्पत्य जीवन, अभ्यास और जीवन की शुरुआत आगे बढ़ती गई और आध्यात्मिक प्रगति भी होती गई। एक मकाम आया जब हमें उस गुरु की तलाश होती है जो गुरु हमारे लिए मोक्ष के मार्ग पर सच्चा मार्गदर्शक और आत्मा की माता स्वरूप बन जाता है। ऐसे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से आपकी मुलाकात भी हो गई। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि समर्पण ध्यान जानने के बाद, और आपने जो प्रश्न किए थे स्वामी जी को कि क्या मैं भी कुंडलिनी ध्यान लोगों को सिखा सकता हूं, ये सब होने के बाद आगे आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हुई और क्या स्वामी जी ने आगे चलकर आपको कोई खास तालीम दी, ट्रेनिंग दी, या तो फिर आपको कोई ऐसी महत्वपूर्ण इवेंट्स, प्रसंगों और रिट्रीट के को अटेंड करने का मौका मिला, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आज। जरूर। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जैसा कि कल बात हुई थी, शिविर भरने का अवसर गुरु कृपा में प्राप्त हुआ, लेकिन साथ में पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए, उनके साथ मिलना हुआ और बड़ी अच्छी अनुभूति आई। ये पता चला कि सचमुच में हमारे जो गुरुदेव है वो अंतर्यामी है, हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी है। सही है। तो तब तो सिर्फ शिविर शुरू हुई थी, अभी दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन स्वामी जी के प्रति एक गुरुदेव का भाव आ रहा था। तो शिविर के तुरंत बाद ही 45 दिन का अनुष्ठान शुरू हुआ था। हाँ जी। और तब तो ज्यादातर साधक एक दूसरे से अपरिचित थे। हाँ, कुछ कुछ को जानते थे, कुछ कुछ को नहीं। क्योंकि क्या हुआ था कि 700 लोगों ने शिविर अटेंड की थी, उनमें से 300-350 लोगों ने अनुष्ठान शुरू किया। सही है। और जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ तब 150 लोग बचे थे। लेकिन अनुष्ठान के दौरान एक दूसरे से परिचित होते चले गए। दूसरी बात ये थी कि किसी साधक को कुछ अनुभूतियां हुई हो तो आश्चर्य दूसरे साधकों को बताता कि अरे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी अनुभूति हुई। तो किसी को कुछ ध्यान के विषय में, अनुभूति के विषय में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता था तो दूसरे को पूछते थे। ऐसा कई लोगों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कुछ ना कुछ बताते थे। तो कभी कभी ऐसा होने लगा कि कोई एक व्यक्ति आकर के प्रश्न पूछे, कुछ आध्यात्म से रिलेटेड, साधना से रिलेटेड,
अभी उत्तर दे उससे पहले तीसरा व्यक्ति आकर के कुछ अपनी अनुभूति बताए, तो उसकी अनुभूति में थर्ड पर्सन की पहले व्यक्ति का सवाल का जवाब मिल जाता था। अरे वाह, जवाब देना नहीं पड़ता था। जो आकर अनुभूति बताने वाला था उसे भी पता नहीं रहता था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है ये दूसरे व्यक्ति से। तो लग रहा था कि ये सब कुछ स्वामी जी करवा रहे हैं, गुरुदेव करवा रहे हैं, एक दूसरे को माध्यम बनाकर। ऐसा लगता है गुरु के चैतन्य की लीला हो रही है। जी जी जी, वो सब लीला चल रही थी, वो पता चल रहा था 45 दिन के अनुष्ठान के दौरान ही। कई काफी मित्रों के बहुत अच्छे अनुभव हो रहे, जैसे कि कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया। एक मित्र आकर के बताने लगे कि उन्हें वो तंबाकू, मावा, गुटखा खाने का व्यसन था। उनका जो काम था, साइट पर काम के लिए जाते थे और पिछले 20-25 सालों से था, और वो छोड़ने की ट्राई कर रहे थे, संकल्प भी लेते थे, निश्चय भी करते थे, लेकिन छूट नहीं रहा था। वो छोड़ देते लेकिन वो उसकी जो तलब थी उसे पकड़ लेती थी। तो ऐसा हुआ था। लेकिन उसने एक आश्चर्यजनक बात बताई कि शिविर तो सुबह 6 से 9 की थी और 9 बजे सीधे हुए काम पर चले जाते थे। तो क्या हुआ कि सुबह तो वो पान की दुकानें खुली नहीं रहती थी, तो शिविर में आ गए। पहले ही दिन से उसके भीतर जो इच्छा होती थी कि तंबाकू लूं, मावा लूं, वो इच्छा ही छूट गई और पूरे 8 दिन उनको इच्छा ही नहीं, उन्हें खाया ही नहीं, जो पिछले काफी सालों से काफी प्रमाण में लेते थे। फिर अनुष्ठान के दौरान उन्होंने बताया कि आज तक वो भीतर से ही जो व्यसन की तलब रहती थी तंबाकू की, वो ही चली गई। तो तंबाकू को छुआ तक नहीं। और वो तो तब आश्चर्य की बात थी, लेकिन वो अभी साधक है और मुझे पता है ये 20 साल बाद भी उसका व्यसन फिर से शुरू नहीं हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसी बात थी। तो उसका ही एक दूसरा अनुभव था, वो थोड़ा बात का है, लेकिन फिर भी चक्षु भी फिर ध्यान करने लगी थी और सेंटर पे आने लगी थी। जैसा मैंने बताया ना कि 8 दिन सिर्फ समर्पण धुन पर ध्यान किया और अनुभूतियां आने लगी चक्षु को, और जागृति भी होगी 8वें दिन। उसके बाद मैंने वो मेथड बताई थी गुरु पूर्णिमा के बाद की। तो फिर सेंटर में भी मेरे साथ आ रही थी और सब लोग साथ में, तो एक दूसरे का परिचय होता था। तो उसी साधक ने बात बताई कि उनका तो व्यसन छूट गया, लेकिन उसका भाई वो किसी दूर के गांव में, दूर के शहर में था, जहां पर अभी तक हमारे सेंटर्स नहीं हुए थे, शिविरें नहीं हुई थी। तो उसे लगता था, और तब तक तो लाइव शिविर ही चल रही थी, अभी शिविरें भी शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ लाइव शिविर, स्वामी जी जहाँ जाके शिविर करे, और जिन्होंने शिविर अटेंड की वही ध्यान कर सकते थे। तो ऐसा, तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं तब वीडियो शिविर नहीं शुरू हुई थी? हाँ, वीडियो शिविर भी शुरू नहीं हुए थे जी। हाँ, वही बात लाइव शिविर स्वामी जी के सिर्फ लाइव शिविर, क्या बोले, उनकी हाजिरी में ही जो कुछ होता था वो बता। जी जी जी, तो वही था। तो उन्होंने वो प्रार्थना की, संकल्प की कि अभी तक तो शिविर नहीं हुई है, स्वामी जी कितनी जगह पे शिविर लगे वो भी पता नहीं, कब होगी पता नहीं, लेकिन मुझे जैसे छूट गया है वैसे मेरा भाई का छूट जाए तो अच्छा है। और उसके भाई का भी छूट गया है बिना शिविर ही। इन्होंने ध्यान सेंटर में सिर्फ वो इच्छा व्यक्त की और छूट गया था। तो उन्होंने वो अनुभूति बताई। तो सेम बात चक्षु के साथ थी। चक्षु का जो ब्रदर था वो भी इंजीनियर था, और उसे भी साइट पर जाने, वो तंबाकू कुछ लेने की आदत थी, वो पान मसाला वगैरह। तो अभी तो आप रुक जाइए चक्षुबेन, આટલો સરસ અનુભવ સાંભળીને જોઈને તમને એવું નહીં થયું કે તમારા ભાઈનો પણ આ આદત છૂટી જાય? વહી એટલે પારસ આ રીતે વાત કરી ને કે આવી રીતે આ સાધકની પણ તમાકુ છૂટી ગયો અને એના ભાઈનું પણ છૂટી ગયું, તો મને અંદરથી એમ થયું કે મારા ભાઈને પણ તમાકુ ખાવાની ટેવ છે એમ, તો સ્વામીજી એવી કઈક કૃપા કરો ને એને પણ તમાકુ છૂટી જાય। તો ખાલી બસ મારા મનમાં જ એવો ભાવ આવ્યો હતો અને મારા ભાઈનું તમાકુ છૂટી ગયું। अरे वाह वाह वाह, अब आगे चलिए परेश जी। थैंक यू। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि किसी साधक की दूसरे रिश्तेदार या दोस्त या परिवारजन के लिए या अनजाने आत्मा के लिए भी प्रार्थना करना
गुरु की कृपा से संभव हो जाता है, उसका क्या कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है कि हमने खुद ने प्रार्थना की या नहीं की, किसी और ने हमारे लिए प्रार्थना की, उसमें हमारा कल्याण हो रहा है। तो प्रार्थना का कितना महत्व है, संकल्प का कितना महत्व है, ये पता चलता है। बहुत सुंदर। सही बात, थैंक यू, सही बात। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सेंटर पे अलग अलग साधकों के अनुभव देखने को मिल रहे थे, उनके जीवन में बदलाव, उनके जीवन के जो लाभ थे वो हमें प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे थे, और परस्पर सब अपने अनुभव बांट रहे थे। ये सब चल रहा था। जैसे हमने बात बताई कि 2001 की गुरु पूर्णिमा वो भी हो गई थी, और वहां पर 2001 की गुरु पूर्णिमा में गुरु दीक्षा भी ली। उसके बाद ध्यान तो चल रहा था, सेंटर चल रहा था, लेकिन उस दौरान एक बदलाव वो किया कि पहले तो 45 दिन का ध्यान का अनुष्ठान था, लेकिन उसके बाद संकल्प किया था कि नहीं, हम लोग हर गुरुवार और हर रविवार साथ मिलकर ध्यान करेंगे और बाकी दिन अपने घर पे ध्यान करेंगे। तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, और ऐसी अनुभूति आ रही थी, घर पे भी बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति आ रही थी। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार मैं रात को ध्यान कर रहा था और चक्षु को वाइब्रेशंस फील हुए, उसने काफी परीक्षा की और फिर वो भी, उनको भी इच्छा जागृति हुई। ऐसा एक दूसरा अनुभव हुआ था मेरे भाई को। मैं रात को अपने रूम में ध्यान कर रहा था, तो मेरा भाई अपने रूम में सो रहा था, तो उसे स्वप्न में स्वामी जी आए, और स्वप्न में स्वामी जी ने आकर के कहा कि तू क्यों सोकर अपना समय गवा रहा है, देख तेरा भाई अभी ध्यान कर रहा है। अरे वाह। तो उसने मुझे सुबह पूछा, भाई क्या आप रात को ध्यान कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि आप ध्यान कर रहे हैं। कितना सुंदर। ऐसा, जी जी, ऐसा बहुत कुछ, बहुत बहुत बातें हैं। वैसे तो काफी सारी, लेकिन हमें ये ट्रेनिंग की वो भी बात करनी है, मेजर इवेंट्स की बात करनी है। तो जैसे गुरु पूर्णिमा की बात हुई, उसी तरह एक चैतन्य महोत्सव का आयोजन बम्बई में किया गया था 2001 में, और मेरे ख्याल से वो बोरीवली में था और एक दिन का था, और हम लोग भावनगर से 4 साधक गए थे वहां पर। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उस समय तो संख्या भी कम थी, सही। आज की जो संख्या है उसके हिसाब से तो कंपैरिजन में बहुत कम संख्या थी। तो सब लोग एक दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे। वैसे गुरु पूर्णिमा में भी अलग अलग शहर से आए साधक मिले थे, तो जान पहचान होने लगी थी। और वहां पर मधु चैतन्य का अंक जो था उसका विमोचन हुआ और फ्री गिफ्ट किया गया था। अरे वाह। सबसे पहले वो साईं बाबा, मधु चैतन्य, जी जी जी, साईं बाबा के फोटो, तो वो था। तो ये सब बहुत अच्छी बातें थी। लेकिन आप जो तालीम की बात कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ। चैतन्य महोत्सव 2001 के बिल्कुल एक महीने बाद, यानी 7, 8, 9 दिसंबर 2001 सापुतारा में प्रचारक शिविर का आयोजन किया गया था। मानो ये एडवांस शिविर थी। हाँ जी। जो लोग ध्यान करते आ रहे थे, और उसके लिए आवेदन पत्र भरना था। तो काफी सेंटर से लोगों ने आवेदन पत्र भेजे थे। उनमें से पूज्य गुरुदेव ने पूरे गुजरात में से 20 साधक को पसंद किया था। और बाद में वो ऐसा जानने को भी मिला कि जो फॉर्म्स गए थे उसमें तो सब डिटेल्स, फोटोग्राफ सब कुछ लिख के भेजा था, लेकिन नवसारी के जो साधक वहां पर थे उस समय, उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने किस प्रकार से चयन किया था। स्वामी जी ऐसे ही आंख बंद करके बैठ गए थे, और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ फॉर्म हाथ में लेके नाम बोलो, तो मैं संकेत दूंगा। तो इस प्रकार से काफी सारे फॉर्म्स आए थे पूरे गुजरात भर के सेंटर में से। उनमें से पूज्य गुरुदेव ने 20 फॉर्म में से 20 व्यक्ति का चयन किया था। और फिर तो वो अद्भुत रही सापुतारा में प्रचारक शिविर। और वहां पर पूज्य स्वामी जी के लेक्चर्स तो थे,
पूज्य स्वामी जी के साथ क्वेश्चन आंसर का भी सेशन थे। पूज्य स्वामी जी के साथ 1-to-1 मुलाकात भी दी गई थी। इसके अलावा ऑरा स्कैनिंग का प्रयोग पूज्य स्वामी जी ने करवाया था, जो आप फोटो देख रहे हैं। पूज्य स्वामी जी अर्ली मॉर्निंग ले गए थे और सबको ऑरा, अपनी ऑरा खोल के बैठे थे ध्यान में, और दूर से लोगों को स्कैन करते हुए, ऑरा स्कैन करते हुए जाना था। और फिर समझाया था कि हिमालय में जो ऋषि मुनि है, हिमालय में जो गुरु है, उन्होंने कैसे अपने संकल्प से अपने ऑरा क्षेत्र बना के रखा है, जिसमें उनकी इच्छा के बगैर कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। सही है। तो वो प्रयोग करवाया था प्रचारक शिविर का, और काफी सारी बातें थी। पूज्य स्वामी जी ने उस समय बताया कि आप लोगों को अब प्रचार का कार्य करना है, माध्यम बन करके इस बात को ले जाना है लोगों तक, और आप लोगों को शिविर संचालन करना है। और शिविर संचालन के लिए वीडियो कैसेट्स वो बनाई गई, वो सबसे पहले वहां पर दिखाई। तो 1 दिन की शिविर, 3 दिन की शिविर और 4 दिन की शिविर, इस प्रकार से 3 ऑप्शन रहते थे। तो हम जिन ग्रुप का कांटेक्ट करें, जिनको इनके लिए कन्विंस करें और शिविर अटेंड करना वो चाहते हैं, तो उनकी सुविधा कितने दिनों की है। अगर 4 दिन की है तो बेस्ट है, नहीं तो 3 दिन की भी कर सकते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट है लेकिन उतना समय नहीं है, वो लोग 3-4 दिन नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो 1 दिन भी की कर सकते थे। तो उस हिसाब से अलग अलग कैसेट्स थी, उसकी वीडियो कैसेट। तो लेकिन उसमें एक नियम था कि सिर्फ पूनम के दिन उसका आखिरी दिन होना चाहिए। सही। 1 दिन हो तो पूनम के दिन हो, और 4 दिन की हो तो 12 से 12, 13, 14 पूनम, इस प्रकार से। तो वो शिविर है, और उस समय के दौरान पूज्य स्वामी जी एकांतवास में रहते थे। वो जो शिविर करनी होती थी वो पहले रजिस्टर करवानी होती थी, और उस शिविर के दौरान पूज्य स्वामी जी एकांतवास में रहते थे, और वहां से सूक्ष्म रूप से जुड़ करके शिविर में लोगों को अद्भुत अनुभूतियां होती थी। लेकिन उसकी इफेक्ट पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर पर आने की पूरी शक्यता रहती, इसलिए एकांत में रहते थे। और शिविर के बाद भी उनके उस जो भी असर हो वो निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया की जाए, तो ऐसा था। लेकिन वो समय सभी वो प्रचारकों के लिए अपने जीवन का स्वर्णिम समय था, गुरुदेव के साथ वो शिविर का समय, 7-8-9 दिसंबर 2000। तो 1-to-1 मुलाकात में भी काफी बातें सबकी पर्सनल हुई थी, लेकिन वो ज्यादातर सीक्रेट रखना था। ज्यादातर लोगों की जागृति भी पूज्य गुरुदेव ने की थी वहां पर, और माध्यम के रूप में नियुक्त किया था। जैसे स्वामी जी सूर्य है, तो उनका प्रचार करने वाले, उनकी बात लोगों तक पहुंचाने वाले वो सूर्य के किरण है। सूर्य अपने स्थान पर स्थित है। वो सूर्य लोगों के घर घर में नहीं जा सकता, लेकिन सूर्य की किरण प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचती है, और सूर्य का प्रकाश पहुंचाती है उन लोगों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस हम तरह गुजराती में कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि। जहाँ सूरज नहीं जा सकता है वहां उसकी किरणें पहुंच जाती है। जी, तो ऐसे वो था। साथ में गुरुदेव ने वाटर वाइब्रेट करके दिखाया, वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं वो भी दिखाया। काफी क्वेश्चन आंसर भी चले थे, और पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अब आप लोग वाटर वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसा। तो गुरु के जो वचन है वो मंत्र समान है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी ने वो कहा, मानो सब अधिकृत हो गए वाटर वाइब्रेट करने के लिए, और सभी प्रचारक वापस गए जब, तो अपने अपने सेंटर्स पे वाटर वाइब्रेट करना शुरू किया था, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। लोग आश्चर्यचकित थे कि वाइब्रेट वाटर के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जब सामूहिकता में ध्यान होता था रविवार को, गुरुवार को, तब जो भी लोग हैं
ऐसे अपने फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वाटर वाइब्रेट करने के लिए बॉटल लेके आते थे। और फिर हम लोग क्या करते थे, सब जो भी सेंटर में प्रचारक थे वो मिलके प्रार्थना करते थे और वाटर वाइब्रेट करके देते थे। लेकिन अद्भुत अनुभव थे। बहुत हमारे कुछ डॉक्टर मित्र भी शामिल हुए थे, कुछ कंसल्टेंट शामिल हुए थे, तो वो भी अपने कुछ चैलेंजिंग पेशेंट्स वो देखने के लिए भेजते थे। उनको भी कभी सेंटर में भेजते थे, बाद में तो घर पे भी भेजते थे। आप एक बॉटल वाटर के लेके जाइए परेश भाई के साथ और उनको वो वाटर वाइब्रेट करवा के लाइए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। तो वो डॉक्टर मित्र जो थे उनकी भी श्रद्धा बढ़ रही थी। फिर तो उन्होंने ऐसा शुरू किया कि अपनी स्पेशलिटी जो भी हो, वैसे क्या है यहाँ पर कि एक जैसे कॉम्प्लेक्स हो पूरा, तो एक कॉम्प्लेक्स में अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। एक फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन वाला ऑर्थो, ऐसा। तो उनकी जो स्पेशलिटी है उसके पास में बगल वाले में जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके वहां कोई डिलीवरी का केस आया, वो सिजेरियन करना पड़ेगा बताते हैं। वो इनको भी पहचानते हैं हमारे साधक डॉक्टर को, तो वो बोलते हैं कि इनको कुछ बताओ ना, सिजेरियन का कोई विकल्प नहीं है क्या, नॉर्मल नहीं हो सकती क्या? तो उनको याद आया, नहीं आप फौरन जाइए पारस भाई के पास, ये वाइब्रेट करवा के लाइए बॉटल और देखते हैं। तो प्लांट सिजेरियन करना होता था कि कुछ इतने घंटे बाद वो एनेस्थेटिस्ट को भी बता दे के रखते हैं कि इतने बजे आना है आपको, इतने बजे सर्जरी करेंगे, ऐसा। तो उससे 3-4 घंटे पहले मानो पेशेंट के रिलेटिव आ गए और बताया, तो हम प्रार्थना करके वाइब्रेट करके देते थे कि आप 1-2 चम्मच उनको पिलाइए, बहन जी को जो भी है पेशेंट, और 1-2 चम्मच उनके पेट पर आप लगे, ऐसा। तो आश्चर्य की बात होती थी कि वो प्लांट जो सर्जरी का समय निर्धारित किए गए थे उससे पहले नॉर्मल लेवल हो जाती थी उसकी। तो गुरु शक्तियां ऐसा कार्य कर रही थी, जो भी संकल्प करे, जो भी प्रार्थना की जाए वो फलीभूत हो रही थी। सही। तो अद्भुत रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो ये सब, और सबकी श्रद्धा बढ़ रही थी, सबका विश्वास बढ़ रहा था गुरु शक्तियों में। ऐसा जबरदस्त पर्सनल अनुभूति आ रही थी, सामूहिक भी आ रही थी, परस्पर भी। तो ऐसा चल रहा था। एक बार क्या हुआ था कि हाँ, वो वाटर वाइब्रेट करने का सबसे पहला अनुभव एक हमारे कुछ देर के रिश्तेदार में ही हुआ था। उसको कुछ मानसिक रूप से प्रॉब्लम था और साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन चल रही थी, और उनको थोड़ी सुसाइडल टेंडेंसी भी हो गई थी। कुछ पितृ आते हैं, कुछ हेल्यूसिनेशन होते थे, डेल्यूजन होती थी, भ्रम होती थी, कोई आते हैं कोई बोलते हैं, ऐसा। तो साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चल रही थी, फिर भी उनका मुझ में बहुत विश्वास था। पहले मैं जब प्रैक्टिस करता था तब मेरे पास ही वो मेडिसिन लेती थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी, फिर भी वो चक्षु से पूछते थे, उनके पास जा रहे थे। तो महिला पेशेंट थी, दूर के रिश्तेदार। तो एक बार उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही और आप प्लीज आइए, ऐसा करके। तो मैं गया, उनका घर पूरा चिंतातुर था, उनके बच्चे थे, वो थे, उनके नेबर्स एकत्रित हो गए थे, और उनके हस्बैंड तो काम पे गए थे, तो उनको पता नहीं था, उनकी शॉप थी वहां पर। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, वो साइकियाट्रिस्ट दवा आपने बंद कर दी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो चालू ही है। तो मैंने कहा फिर से दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही मुझे अच्छा कीजिए। तो मुझे स्वामी जी की बात याद आई, और उन्होंने कहा था कि आपकी प्रार्थना, आपका संकल्प, आपका वो 100% होगा, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। तो सामने वाले का रिसीविंग कितना है वो भी देखना पड़ेगा। वो सही है। तो 50-50% दोनों हाथ मिलके 100% होगा। सिर्फ आपका 100% वो 50% रहेगा, दूसरे वाला उनका रिसीविंग होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सभी दवाई से भी अच्छा एक उपाय है मेरे ख्याल से, मेरे गुरुदेव का प्रसादी का जल, आप लोगी क्या? तो उन्होंने कहा कि आप जहर देंगे तो जहर भी ले लो,
उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, आप ही मेरे गुरुदेव हैं, जो भी है आप ही है। नहीं, उसमें क्या हुआ था, उसकी थोड़ी बैक स्टोरी भी मैं आपको बता दूं। वो लोग इतना विश्वास वो दंपति क्यों रखते थे, वो कुछ साल पहले एक संत थे, उनको गुरु मानते थे, भावनगर से 20-25 किलोमीटर दूर, और वो नियमित उनके दर्शन करने जाते थे, उनकी सेवा करते थे, जो भी था। तो कुछ महीने पहले वो जब संत को दिखाने मिलने गए थे, दर्शन को गए थे, तो तब उस संत ने बताया था कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आओगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं, मेरी समाधि होगी, मैं नहीं होऊंगा, ऐसा है। सही है। तो फिर वो दंपति रोने लगे थे बहुत, कि अब हमारा कौन, आप चले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम तो भटक जाएंगे, बीच रास्ते में आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने पूछा ना कि हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके ही रिश्तेदार हैं, और वो डॉक्टर दंपति है, तो आप दवाई लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए तो जाते हैं, लेकिन आप जिस हेतु से मेरे पास आते हैं, जिस समस्या लेकर, जो मेडिकल की ना हो तो भी, तो उस कारण के भी लिए आप उन डॉक्टर साहब जो है उनका आप संपर्क कीजिएगा, आपका कार्य हो जाएगा। और ब्यूटीफुल अनुभूति। तो ऐसा कह के रखा था उस संत ने, और इसीलिए उनका श्रद्धा और विश्वास वो बता रही थी। तो वो उनके गुरु ने कहा था, इसलिए उन्होंने संकेत दिया था, नाम नहीं दिया था, लेकिन हाँ। उनके रिश्तेदारों में डॉक्टर दंपति जो था वो हम ही थे। आप लोग ही हाँ, थोड़ी दूर के, हाँ, उनके और करीबी रिश्तेदार में कोई नहीं थे, वो दूर के रिश्तेदार में जो थे वो हम ही थे, डॉक्टर कपल में। तो बहुत ऐसा, सुंदर। बाकी कोई एक डॉक्टर कपल नहीं था। थोड़ा मुझे ट्रांसलेशन करके कमेंट्स देने जी का जी, मौका दोगे आप, ताकि जरूर फिर जरूर। मतलब आगे का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जी वाइब्रेटेड वाटर और उसकी अनुभूति को हम कवर जी कर जी, लेते हैं। जरूर तो जरूर। we started with the point where they stopped at the completion of 8 days live workshop with Swamiji, what we call Shibir in India, Darshan Shibir. And this particular 8 days workshop was attended by almost 700 people in Bhavnagar in this March 2001. So as per Swamiji's guidance, they wanted to continue for next 45 days Anushthan. During this time, Swamiji encouraged everybody should get together and practice meditation. So they rented the place and they were meeting every day for the group meditation. And at the end of that 45 days, they decided that we will continue meeting on person to 150 people continued for the center group meditation on a weekly basis. So that was the success rate, that was the collectivity at that time. And due to this regular activity, people started knowing each other. Otherwise, they were strangers to each other from the Shibir time. And this built up good rapport, built up good soulful relationship or atmiyata among these sadhak. Then there were some other experiences also. But next thing what happened is, during the December 7, 8, 9, Swamiji had the promotional workshop or Pracharak Shibir in Saputara, which is a hill station near Navsari, where Swamiji have the Dandi Ashram. And before that also, 4 sadhaks from Bhavnagar attended the first Swamiji's birthday celebration in Mumbai, Chaitanya Mahotsav of 2001 in Borivali, Mumbai. So all these things brought some of the sadhaks, including Parasji from Bhavnagar, closer and closer to Swamiji and Swamiji's mission and the grace of Guru in their life. Having said that, during the Pracharak Shibir, there were 20 sadhak who were selected from a big number of applications, but 20 from Gujarat were selected, and Parasji was one of them. In this Pracharak Shibir or promotional workshop, they were taught to understand the effect of aura and presence of aura. Like
Swamiji did the same experiment in UK. Swamiji did the same experiment in Canada also when he came in 2002 August. That he sits in one place and he opens up his aura, and then he asks people to come in his direction where people are sitting. You have to go towards Swamiji and feel the layers of vibrations. My personal experience is when you go closer and closer to Swamiji, on your palm, on your even your physical skin body, you will experience the touch of a layer of vibration as a resistance. You will feel as if you are trying to push the balloon, and the air inside the balloon is trying to push your hand. That is how you experience multiple layer of Swamiji's aura. And this is the live example of what Swamiji says in his discourses during the workshop, that in Himalayas there are gurus, there are yogis, there are ascetics sitting in the caves, and without their wish you cannot even enter in their aura, meaning that their aura is protecting their existence. And unless and until they don't wish or they don't allow, they don't see your frequency, vibrational frequency, they will not allow you, because they will protect their aura. They will not allow their heaven to be disturbed. This was the experience they got during this Pracharak Shibir. And another thing that they learned was to vibrate the water. Now this became a source of miracle, not just for the Pracharaks, but also for the people around them, because Swamiji cannot go and work in the public, in the society, everywhere. He is only one person. This spiritual army was being developed, was being built for Swamiji. You can compare this as the disciples or the apostles of Jesus Christ. Jesus Christ, during his time, his lifetime, he had 12 apostles who went around and spreaded his work. The same way, Swamiji's mission was being spreaded by these people who were attending the promotional workshop. And there are so many beautiful experiences, but one beautiful experience that touched our heart and that he shared with us is one of their relatives. They used to uh, follow a living guru, and they had some issues, health issues. So they were asking always for the guidance and support from their living guru. But at one point, the guru said that this is the last time you are seeing me. You will not be able to meet me again, simply because next time when you come, it will not be my physical body or sthula sharir. It will be my subtle body or samadhist body, or the body of my energy. So they said that Guruji, we rely on you. What will we do? What will we do without you? And that Guru said, you don't have to worry. You will be able to go to a doctor couple who is related to you, and what you are getting from me on an energy level as a guru, you will be able to get from them with the same um, purity, with the same chaitanya. And this happened in their life, and they approached Parasji. They had the issue, they wanted to get some assistance or guidance or support. And Parasji says that if you can trust me and if you want to follow our Gurudev's vibrated water that he taught me, I can give you, and that will probably help you. And they literally bow down to Parasji as if he is their guru. And they said that uh, this was the story told by our Gurudev, and that's why we came to you. And we really feel that whatever you give, even if it is a poison, we are going to accept it as a prasad or as a sacred water or sacred gift from our Guru. And this is where I remember the word of Swamiji. Swamiji says that imagine you are living in India and your son or daughter is studying in America. They are in trouble.
and they need some help. You cannot go to America. So what will happen? You will call your friend who is living in America and say, can you please help my son or my daughter? She need the assistance right away in your place. And that friend will go. The same way, a sadhak or a pure soul, even though he is not a disciple, like in this case, Parasji was not following that living guru. But since Parasji's spiritual status was equally competent enough, equally qualified enough to give the same assistance, gurus always understand and know who is there in the surrounding. They will guide you and they will provide that help. This is how energy works in invisible way. This is how energy works on a subtle level. What a beautiful example. What a beautiful significance of vibrated water. You can understand why Swamiji gives so much importance. And I want to tell you, Paras Bhai, that when Swamiji came in 2002, we got similar thing, similar training. And in Canada and America, we are also able to help. And this is the biggest gift that Swamiji has given us. And this is where I always keep on saying that हम तो लोहे के टुकड़े थे, स्वामी जी ने हमें सोना बनाया. ये वो पारस मणि है जिसने पारस तत्व हमारे अंदर भेज दिया, हमारे अंदर रख दिया. बहुत सुंदर. थैंक यू. आप आगे बढ़िए. तो वो जो बहन जी थी, उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास प्रदर्शित किया. तो मैंने उनके ही घर से एक गिलास पानी मंगवाया और वाटर वाइब्रेट किया, गुरुदेव से प्रार्थना की और दे दिया. और गुरुदेव के प्रति एक भाव उठ रहा था कि गुरुदेव हमारे लिए परमात्मा है. तो गुरुदेव को प्रार्थना करते थे, परमात्मा को प्रार्थना करते थे, दोनों एक सा ही हो गया था. सही. तो वो एकदम से वाइब्रेशंस का फ्लो निकला हाथ में से और फिर वो दिया. उस वाइब्रेट करने के बाद फिर से उस वाटर का ऑरा भी चेक करते थे, तो बहुत चार्ज हो गया था. फिर उनको दिया, वो पी गई. उसके बाद मुझे भी अपनी ड्यूटी पर जाना था, डिस्पेंसरी जाना था. तो मैं सोच रहा था कि शाम को पूछता हूँ कैसा है कैसा नहीं, वो फॉलो अप लूंगा फोन करके, तब तक उनके हस्बैंड से भी बात कर लेंगे. तो क्या हुआ कि शाम को उस बहन जी का फोन आया और उनकी आवाज में ही आत्मविश्वास का रणकार था. क्या बात. वो जो दोपहर को फोन किया था तब रोते रोते किया था. वो काफी साल से डिप्रेशन में थी, वो एल्यूसिनेशन डेल्यूजन सब कुछ चल रहा था. लेकिन मुझे चिंता थी कि वो स्किज़ोफ्रेनिया में कहीं चली ना जाए. लेकिन जैसे ही गुरुदेव का वाइब्रेटेड वाटर दिया, उनकी आवाज में एकदम आत्मविश्वास हो गया था, एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था. काफी सालों पहले जैसा मैं फील करती थी, ऐसा अच्छा फील हो रहा है. और मुझे साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाना है, उनकी दवाई भी नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं. और वो भी आश्चर्य की बात है कि तब पिछले सालों में कुछ सालों से दवाई चल रही थी, वो डिप्रेशन की वगैरह, एंजाइटी की, सब कुछ. लेकिन वो सब कुछ छूट गई, नींद की गोलियां भी छूट गई और आज तक उनको फिर से दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी. क्या बात है, क्या बात है. बहुत तो सुंदर. ये गुरु कृपा है. तो ये वाइब्रेट वाटर की बात निकली, इसलिए मैंने बताया. लेकिन काफी और बातें हुई थी. और जब ऑरा स्कैनिंग करवाया, उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे, तब स्वामी जी करीब थे. मैंने चलते चलते ही स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है, मन में उठ रहा था पिछले दिनों से. उसमें क्या था कि ध्यान जब कर रहे थे, मैं घर पे भी फोटो रखता था स्वामी जी की, उनके सामने दिया जला के ध्यान में बैठता था और ध्यान की समाप्ति पर हम प्रार्थना करते थे, हे परमात्मा, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो. ये सब चल रहा था. लेकिन उनमें से फिर नवसारी से मैसेज आया था और प्रार्थना में कुछ जोड़ा था. वो उसके बाद ये जोड़ा था कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो और उनके द्वारा चल रहे आत्मज्ञान यज्ञ के चैतन्य में पूरा विश्व डूब जाए, इस प्रकार. लेकिन वहां पर हर रोज मैं प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे भीतर सवाल उठता था. जो सवाल उठता था वो मैंने रख दिया. तो स्वामी जी ने कहा, पूछो. मैंने कहा, स्वामी जी, ये हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर प्रार्थना में चेंज हुआ ना, उसके बारे में सवाल ही है.
मैं जब प्रार्थना करता हूं तब मुझे लगता है कि हे परमात्मा कह के मैं जो प्रार्थना करता हूं वो आप तक पहुंचती है, वो आप ही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मेरा भाव ऐसा हो रहा है। तो फिर जब बाद में बोलता हूं कि मेरे सदगुरु श्री शिव कृपाल स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो मुझे वो अंदर से ऐसा होता है कि जिनको मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करो। सही है। ये कैसा है? ये थोड़ा विरोधाभासी मुझे लगता है। तो मैंने पूछ डाला, फिर भी क्या है कि हमारी बुद्धि तो तर्क करती रहती है, चाहे भाव हो फिर भी। बिल्कुल सही। हमारा जो मस्तिष्क चल रहा है, हृदय में भाव है कि हमारे लिए परमात्मा है, फिर भी मस्तिष्क चल रहा है, वो क्या तर्क करेगा कि स्वामी जी ऐसा आंसर देंगे कि नहीं, परमात्मा से आप प्रार्थना करते हैं मेरे स्वास्थ्य के लिए, ऐसी कॉमन वो तर्क रहता है ऐसा। भाव भले है लेकिन फिर भी, सही। लेकिन स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। हाँ, क्या कहा स्वामी जी ने? स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, स्वामी जी ने ऐसा भी नहीं कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी स्वामी जी ने ये कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप आपके ही लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी वो कैसे? तो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी शिव कृपानंद यानी कौन? स्वामी शिव कृपानंद यानी मैं नहीं, ये शरीर नहीं है स्वामी शिव कृपानंद। स्वामी शिव कृपानंद यानी पूरी सामूहिकता, पूरी सामूहिकता का नाम स्वामी शिव कृपानंद जी है। बहुत सुंदर। एक बड़ी आत्माओं की सामूहिकता है और उस सामूहिकता के लिए आप प्रार्थना करते हैं और उस सामूहिकता में आप भी शामिल। बहुत सुंदर, बहुत तो वो सुंदर। प्रार्थना आपके लिए भी अद्भुत था। तो वो बात समझ में आई और वो भी कंफर्म हो गया कि नहीं, मेरा हृदय जो मान रहा है कि हे परमात्मा यानी गुरुदेव, तो वो सही है। और सही में परमात्मा तो निराकार है, लेकिन परमात्मा कोई साकार को माध्यम बना करके प्रकट होता रहता है समय समय पर, अलग अलग देश में, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में। तो ये पता चला कि वर्तमान समय में परमात्मा ने जो माध्यम पसंद किया है वो हमारे गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि हमारी साधिका और वॉलंटियर्स हमें यहाँ पे बता रही है कि ये प्रश्न मेरे मन में भी था और इसका यह जवाब आपकी बातों से मिल रहा है। तो आई एम श्योर कि कई लोगों के मन में यह स्थूल और सूक्ष्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में साथ में कमेंट के साथ समझा देता हूँ। So this is very beautiful question that our buddhi or intellect ask us while we are doing meditation. As we know, when we are meditating, there are a lot of thoughts that are coming because our intellect, our buddhi, our ego, everything is active. So we are living in the combination of mind, body, and spirit complex that is active and that is being affected through the energy flow, through the consciousness that is in the surrounding, which is universal consciousness. As Swamiji says, and in the end of the meditation, there was additional prayer that was made in later stage of 2000 or 2001 or 2002, that, oh Lord, may our Guru Sri Shivkrupanand Swamiji have better health. And Parasji was asking, how can I pray for the health of my Guru, whom I consider as Paramatma or God himself? So isn't it illogical for us to go and say, I want you to take care of you? That does not make sense. So the same way, Parasji was thinking and he asked this question directly to Swamiji. So Swamiji explained that Sri Shivkrupanand Swami is not the name of a person that you are seeing in this body, in this physical body or sthula sharir. Sri Shivkrupanand Swami
is the energy body. It is the body of grace from the Himalayan gurus, and it is the body of Samarpan from the society of the disciples. But the disciples who are connected with the full reverence, with the full uh, uh, emotion and sentiment of Samarpan or surrender to Swamiji as their only savior, as their guru. When we have that Samarpan, when we have that surrender bhav, our Samarpan and Guru's grace become that bonding, become that miraculous bonding that start resolving all the problems, that start bringing miracles in our life. Swamiji say, when you are making this prayer, you are making prayer for that collectivity of divine souls, pure souls, holy souls. If that stays for longer period, the longevity of that Sri Shiv Krupanand Swami is going to continue for next 800 years, not just 1 year, 2 years, 3 years, 800 years through collectivity. And it is going to keep bringing the divine universal consciousness, Guru Shakti's blessings on the earth. Another thing that I had personal discussion with Swamiji in 2002 again, he was guiding me also, because I got chance to live with Swamiji at our home again in 2002. He says that I want you to start adding up this prayer. And he says that I did not see Shiv Baba as a physical body. I had a imagination that God is a huge, giant energy or some human form. But that form is universal consciousness spreaded in every atom, every subatom, every particle, living, non-living. I experienced it through Shiv Baba. So in my concept of God is giant, I changed that God is maybe giant, but for me, today onwards, this is my God. Shiv Baba is my God. The moment I accepted Shiv Baba as my God, all my giant God's imagination got disappeared. And I started feeling the vibrations from that body. Within 3 days, he made such a miraculous change in my own inner existence that I myself could not understand what was happening. What Parasji was saying, that Swamiji said, by adding this prayer for the health of his Sthul Sharir, of my Guru, we are becoming selfish. We are becoming greedy of having the association of this Sthula Sharir, not for the longevity of life of a Guru's body, but for the longevity of our association with this divine energy flowing through that Guru's body and helping us and guiding us constantly during our lifetime. So this is what is very important if you understand this concept of physical and power body. Power body or energy body is the body of grace or light from Guru. And Sthul Sharir or physical body is what you see in the form or a shape as human being. आगे बढ़ते हैं. Thank you. जी, तो ऐसी कई बातें हैं, कई यादें हैं, काफी बातें हैं, लेकिन वो घंटों तक बातें चल रही ऐसी है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा उल्लेख करके. लेकिन एक प्रचारक शिविर में एक सेंटेंस जो स्वामी जी ने कहा था कि परमात्मा के प्रचार कार्य के लिए, परमात्मा के संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की पसंदगी हुई है. बहुत वहां पर कहा गया प्रचार को. तो हमें लगा कि हमारा सबका सौभाग्य है कि साक्षात परमात्मा का माध्यम का सानिध्य में मिला है और परमात्मा का संदेश देने का गुरु कार्य करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है. ये जीवन की धन्य भाग्य की क्षण थी. तो ऐसे सब चल रहा था, काफी बातें हैं, फिर कभी बताएंगे, लेकिन आगे चलते हैं क्योंकि काफी सारी बातें रहती है.
एक एक बात में। तो पहले 2001 में दिसंबर में जो आने वाली पूर्णिमा थी, उस अवसर पर हमने प्रोजेक्टर शिविर का आयोजन किया। वैसे वीडियो शिविर करनी थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, बड़े पैमाने पे करते, वीडियो शिविर की प्रोजेक्टर शिविर करते। तो जहां पर जिस हॉल में हम लोगों ने लाइव शिविर अटेंड की थी, वहां पर उसी तरीके से प्रोजेक्टर शिविर का आयोजन किया। अरे वाह। तो पूरे फिर से 700 लोगों की कैपेसिटी के साथ वो की शिविर। और बहुत अच्छी बात ये थी कि एक वीक के बाद ही पूज्य गुरुदेव भावनगर आने वाले, पधारने वाले थे। तो वो क्या था कि जनवरी 2002 के पहले वीक में कोडीनार जाने वाले थे और सेकंड वीक में भावनगर में प्रोग्राम्स थे। तो भावनगर में 4 प्रोग्राम निर्धारित किए गए थे, पुराने साधकों के लिए, नए साधकों के लिए, पुलिस के लिए और बैंकर्स के लिए, इस प्रकार से। तो 30 दिसंबर की जो शिविर थी वो भी बहुत अच्छी रही, और 30 दिसंबर के शिविर में मेरे पिताजी, मेरा भाई, वो सब लोग भी आए थे। हाँ, चक्षु नहीं आई थी क्योंकि वो अभिषेक छोटा था और उसने सोचा कि नहीं, छोटे बच्चे को वहां पर नहीं ले जाते हैं, दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह से, तो वो नहीं आई थी। और उस समय भी हम ऐसा प्रचार करते थे, 7 साल के छोटे बच्चे को नहीं लाना है प्रोग्राम में, ऐसा। तो चक्षु घर पर ही थी और वहां पर नहीं लाई थी। मेरे पिताजी को बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई। मेरे पिताजी को मेरे ग्रैंडफादर दिखे, उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी बोल रहे हैं। कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि स्क्रीन पर ओशो है, कुछ क्षण पर उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात शिव है, शंकर भगवान है। तो ऐसी अनुभूतियां मेरे फादर को हुई और बहुत आनंद भर गया उनके भीतर, एकदम से स्माइलिंग हो गए थे। और शिविर के बाद भी काफी घंटों तक वो प्रभाव रहा। घर पे भी बताते थे कि जैसे मैं भूल गया मैं ये दुनिया में हूँ, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ, कुछ दिव्य वातावरण हो गया था ऐसा। और ये सब दिखाई दिया। उनका पूरा जो बॉडी है वो ठंडा हो गया था, एकदम से ठंडा। सिर्फ सहस्त्रार पे थोड़ा गर्म था, बाकी पूरा बॉडी ठंडा हो गया था। तो दिखा रहे थे लोग भी, फैमिली मेंबर, नेबर्स भी आ गए थे और वो भी देख रहे थे ऐसा। तो उन्होंने चक्षु से भी कहा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वामी जी नेक्स्ट 1 वीक के बाद आने वाले, तो जरूर अटेंड कर, ऐसा। तो चक्षु भी इच्छा रखती थी, वैसे भी उनको वो धुन के माध्यम से अनुभूतियां शुरू हो गई थी, उसके बाद ध्यान भी शुरू किया था, तो अनुभूतियां भी आ रही थी। तो उसे भी इच्छा थी, लेकिन वो सोच रही थी कि नहीं, अभिषेक को लेके जाए, घर पे रख के जाए, जो भी था। तो नहीं अटेंड कर पाई थी 30 दिसंबर, लेकिन नेक्स्ट वीक करेंगे ऐसा सोचा। हाँ, फिर कोडीनार में प्रोग्राम था स्वामी जी का। तो भावनगर से हम 3-4 साधक कोडीनार गए। पहले 1-2 साधक गए थे, उसके बाद 2 साधक हम लोग गए और 1 साधक बाद में आने वाले थे, ऐसा। तो कोडीनार और आसपास के जो स्थान थे, वहां पर भी स्वामी जी के कुछ कार्यक्रम थे, वो अटेंड करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोडीनार के साधक भी बहुत भावपूर्ण थे। जहाँ रुके थे वहां से अलग अलग साधक के घर खाने के लिए आमंत्रित करते थे, दोपहर को, शाम को, ऐसे। और हम लोग जाते थे और बहुत भावपूर्ण थे। तो एक बार अचानक से क्या हुआ कि हमने दोपहर का भोजन कर लिया, तो उसके बाद तुरंत ही वहां के आचार्य ने कहा कि आपके लिए गाड़ी तैयार। तो हमने कहा, अरे गाड़ी तैयार यानी क्या, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि आपको सोमनाथ जाना है। हमने कहा, अरे शाम को तो पूज्य गुरुदेव का लेक्चर है, वहां पर की कोई स्कूल थी, उसमें पूज्य स्वामी जी का लेक्चर था। तो हमने कहा, अरे वहां जाना है। हमने कहा, नहीं नहीं, स्वामी जी ने ही कहा है कि इन लोगों को सोमनाथ भेजना है। तो हमने कहा कि प्रोग्राम के टाइम हम वापिस आ पाएंगे ना? तो उन्होंने कहा, जरूर आ पाएंगे। तो दोपहर के खाने के बाद हम लोग सोमनाथ गए, वहां पर दर्शन किए। फिर वो भी सोच रहे थे कि नहीं, वो स्वामी जी की कुछ लीला होगी
क्या होगी वो जाने, क्या करवाना है वो जाने, लेकिन कुछ तो रहा होगा उनका गुरुदेव का जो हमें पता नहीं है। लेकिन हम ज्यादा देर वहां रुके नहीं, दर्शन किए, 2-5 मिनट बैठे, थोड़ा सा देखा और सब कुछ। फिर वो ड्राइवर को कहा कि नहीं हमें टाइम पे पहुंचना है भैया, आप पहुंचा ही देना, ऐसा। दूसरा एक लोकल भी कपल था हमारे साथ, तो मैं और एक दूसरी शादी का थी, तो हमने कहा कि नहीं तुरंत ही पहुंचना है, हम लेट ना हो जाए। और हम सोमनाथ से निकले और कोऑर्डिनेटर सीधे ही जहाँ पर शिविर था जिस स्कूल में, उस स्थान पे पहुंचे। आगे भागे से ही पहुंचे, पार्किंग से स्कार्फ पहनते हुए। जैसे हम स्कार्फ पहनकर अपने स्थान पर बैठे, देखा दूर से कि गुरुदेव तो आ चुके हैं स्टेज पर, ऐसा। जैसे ही बैठे, नमस्कार किया और स्वामी जी ने लेक्चर शुरू किया, आए हुए सभी पुण्यात्माओं को नमस्कार। तो मैं लगा स्वामी जी कितना ख्याल रखते हैं अपनी, जो एक शुद्ध इच्छा रखते हैं कि हमें मिस ना हो, एकदम अरे एक सेंटेंस भी मिस नहीं हुआ और टाइम पे बिल्कुल। पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से होता रहा। वहां भी कई स्थानों की कई अलग अलग अनुभूतियां थी। मेरे साथ मेघना रावलकर के एक साधिका थी जो आचार्य भी थी, तो उसे गायत्री मंदिर में एक कार्यक्रम था, वहां पर वो रोती ही रही। स्वामी जी के साथ डिस्कशन हुई, कुछ बातें हुई, वो रोती रही। फिर कार्यक्रम के बाद मैंने पूछा तू क्यों रो रही थी, तो उन्होंने कहा ध्यान में मुझे कुछ दर्शन हो रहे थे कुछ संतों के पहले से, लेकिन मैं पहचानती नहीं थी ये कौन है। लेकिन आज उनका फोटो वहां पर देखा, गायत्री शक्तिपीठ में राम शर्मा आचार्य जी का फोटो था, उनके पीछे बादलों में कुछ था। तो मैंने हाँ कहा वो उनके गुरुदेव थे। और राम शर्मा आचार्य जी की भी गुरु, जो गुरु सत्ता उन्हें हिमालय से। पिछले 4 जन्मों से मार्गदर्शन दे रही थी, जिनके बारे में वो बता रहे थे, वो सब बात हुई। तो ऐसे गुरु शक्तियों के भी दर्शन होते रहते पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में या उनके ध्यान पद्धति से। कुछ मुझे भी उससे पहले हुआ था, उसके बारे में जब मैंने स्वामी जी से पूछा था, तो स्वामी जी ने कहा था कि आपने मेरे गुरुओं के दर्शन, तो बहुत धन्य भाग्य था, जो भी अनुभूति थी। फिर वो एक गांव में ऐसा हुआ था कोडीनार के पास कि शाम को प्रोग्राम था और लाइट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती, तो फिर अंधेरा हो जाता था, साथ में वो माइक बंद हो जाता था, ऐसा। तो 3-4 बार ऐसा हुआ। तो हम लोग सोच रहे थे, तो क्या बीच में ब्रेक हो जाता था, फिर जब लाइट आए स्वामी जी शुरू करते थे, तो वहां के लोग भी स्वामी जी को पहचानते नहीं थे ना, तो हाँ जी। परस्पर बात करने लगते थे, कुछ लोग उठ के चले भी जाते लगे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस वो सब हो रहा था। तो हमें दिल से ऐसा लगता था कि ये लाइट का प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व हो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। तो जो कुछ भी हुआ, स्वामी जी ने इसके बाद लाइट जब जब आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, तो स्वामी जी ने कहा नहीं अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। और पूरा प्रवचन चला और बीच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, सचमुच में नहीं गई। राइट। तो बाद में जब हम भावनगर आए थे और एक सेशन में हमने पूछा स्वामी जी से कि आपने जो जिस विश्वास के साथ कहा और सचमुच में लाइट नहीं गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, तो इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, वो जो समस्या थी ना, मैंने अपने गुरुओं को सौंप दी। तो फिर पूर्ण विश्वास था कि अब गुरु शक्तियां संभाल लेगी। सही सही। तो ये, तो हमें वो भी उदाहरण मिला कि जैसे गुरुदेव अपनी गुरु शक्तियों पे विश्वास रखते हैं, ऐसे ही हमें भी गुरु शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। और चाहे हमें तार्किक रूप से असंभव लगता हो, लेकिन हम अगर गुरु शक्तियों पर श्रद्धा रख के उन्हें समर्पित कर दे, तो गुरु शक्तियां कैसा कार्य कर सकते, बहुत कैसे सुंदर, अद्भुत कार्य हो बहुत सकते सुंदर। हैं, ऐसा। और स्वामी जी ने यही हम सबको दिया है कि देखो जी आप लोग है ना आधा अधूरा अर्पण करते हो, समर्पण नहीं करते हो। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने दे दिया ना, आपने जिस गुरु के सामने खड़ा था उस वक्त पे उस गुरु को ही अपना सर्वस्व दे देता था। वो जी शिव पुराण की वेश्या की कहानी करके भी स्वामी जी ने हमको यही समझाया कि जो देते हो अपने गुरु को, इतना दे दो, संपूर्ण दे दो कि फिर गुरु जो प्रयत्न से हमें जहां पहुंचाना चाहता है, 1000 हाथों से देना चाहता है, वो हमें मिल पाए। हम 1000 हाथों से लेने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने 2 हाथ से ही मांग रहे हैं, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे। ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर समर्पण का ये बहुत सुंदर भाव है। और यही बात प्रार्थना दान के लिए, जो लोग प्रार्थना लिखवाते हैं ना, उनके लिए भी लागू पड़ती है सही कि आप बात। लिखवाओ और फिर छोड़ दो ना, उसके लिए जो सही होगा वो हमको मिलेगा, नहीं मिला यानी कि हमारे लिए जरूरी नहीं था, या हम गलत चीज के लिए
भीख मांग रहे हैं गुरु शक्ति के सामने या परमात्मा के सामने, छोड़ देने का। बहुत अच्छा है जी। फिर जब कोडिनार की भी काफी यादें है, वहां पर भी ऑनर स्कैनिंग के लिए ले गए थे, जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद क्या था, हम लोग कोडिनार से जंगल के रास्ते से, गिर के जंगल है, फॉरेस्ट जो है गिर का, उनमें से पसार होके भावनगर आए थे। रास्ते में तुलसी श्याम भी रुके थे थोड़ा समय, वहां पर भी दर्शन किए थे, थोड़ी बातचीत हुई थी। वहां पर स्वामी जी ने दिखाया था प्रैक्टिकल करवा के कि देखिए आगे से आप वाइब्रेशन देखिए, पीछे से आप वाइब्रेशन देखिए, तो पीछे ज्यादा आएंगे। क्यों? लोग सामने की ओर अपनी समस्या रखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हाँ। जो ऑरा फील्ड है वो चारों दिशा में एक समान होता है। तो पीछे जाके कोई नहीं गिड़गिड़ाता, वहां पर अपनी समस्या नहीं डालता, तो वहां सही। अच्छे आपको वाइब्रेशन फील होगे। वो प्रयोग करवाया था। तो ये सब काफी यादें थी। साथ में वन भोजन भी लिया था वहां पर। अरे वाह। तो 2-3 गाड़ियां थी। एक गाड़ी स्वामी जी की गाड़ी से आगे चल रही थी, बीच में स्वामी जी वाली कार थी, उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी। तो जो ड्राइवर्स थे वो दूर खड़े थे, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, उनको क्यों दूर रखा है, उनको भी साथ में खाने के लिए बुला लो। तो जो वैसे मान्यता है ना कि स्वामी जी दूर रहते हैं, ऑरा फील्ड से दूर रखते हैं, किसी को आने नहीं देना है साधक के सिवा, लेकिन वो कुछ अलग ही अनुभव था कि नहीं, स्वामी जी ने ही कहा नहीं, उन ड्राइवर लोगों को क्यों दूर खड़ा रखा है, उनको भी साथ में खाने के लिए बिठा दो, ऐसा। फिर वन में भोजन था, स्वामी जी ने वो, हाँ, मुझे कहा वो कार में भी वो लेके आए, तो उनमें से वो न्यूज़पेपर निकाला और उसका भी वो नाश्ते के लिए वो सब क्या बात है। बिछाया, और उस पे भी कुछ खोला जो सामान था, और बहुत अच्छा वो भी वन भोजन का अनुभव था। जिस आत्मीयता से, प्रेम से स्वामी जी सबके साथ रहते थे, बहुत अच्छा। तो उसके बाद जब हम आए तो तख्तेश्वर मंदिर तक लाने वाले थे, और भावनगर के साधकों को हमने मैसेज दे दिया था कि इस समय पूज्य स्वामी जी तख्तेश्वर आएंगे और आप सब लोग आ जाइए, हम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करेंगे। बहुत और खूबसूरत। पूरी यात्रा निकाल के हम वहां से सामैयो करीने, गुजराती में क्या सामैयो करीने, हाँ हाँ, तो वरगोड़ हम होते हैं। वहां से ले जाएंगे बैंड बाजे के साथ, वो क्या ढोल बात। नगारे के साथ। और यहाँ से जो नजदीक में ही था, जहाँ पर स्वामी जी को ठहरना था, उनका जो उतारा था वहां पर, तो तख्तेश्वर से बिल्कुल नजदीक था। तो जो कुमारी कन्याएं थी वो कलश, सज धज अरे के वाह। कलश बना के आई थी, साथ में वो ढोल वाले को बुलाया था, ऐसे। तो वैसे स्वागत किया। तो मैंने अपने घर पे भी इन्फॉर्म किया था, तो पिताजी आए थे, चक्षु अभिषेक को लेके आई थी, सब कुछ। तो वो क्या था, हम जब कोडिनार और आसपास वो गिर तुलसीश्याम जाते थे, तो कैसा करते थे, कोई गुरुदेव का चरण स्पर्श न करे, इसलिए हम कवर करके चलते थे, आगे पीछे साइड में, ऐसा। तो मैं जनरली आगे चलता रहता था कि कोई पैर मत छूना, पैर मत छुइए, ऐसा। नहीं तो क्या है, अनजान लोग भी संत देख के पैर छूने के लिए आ जाते हैं, तो उनके रोकते थे। स्वामी जी बॉडीगार्ड की तरह रखते थे कुछ लोगों को। जयाबेन पिसावड़िया तो फ्रॉम सब यूके। तो जयाबेन हमारे वहां यहाँ पर एक। जैसा कि यहाँ तख्तेश्वर से भी जो हम समय करके ले जा रहे थे, मैं आगे चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अभिषेक ने वो कुछ दिनों के बाद मुझे देखा, क्योंकि मैं पड़ी रह गया था वहां पर। हाँ, तो मेरे पास आवाज आ गया, पापा पापा, तो मैंने उसे गोद में उठा लिया था। तो मैं आगे चल रहा था, मेरे कंधे पे वो था, ऐसा, गोद में उठा के रखा था। स्वामी जी पीछे चल रहे थे। तो वो ढोल बाजे सब शुरू से थे, चरणाई वो सब, हाँ, कलश यात्रा भी चल रही थी, पीछे स्वामी जी चल रहे थे। तो अभिषेक ने अचानक से क्या किया कि मेरी गोदी में था, वहां से स्वामी जी की ओर जाने लगा। वो जाने के लिए उछल रहा था, स्वामी जी, स्वामी जी। ऐसा। तो वैसे वो जो अभिषेक छोटा था ना, तब किसी के पास वैसे नहीं जाता था। कोई सही। अगर गेस्ट आए, कोई आए, आजा बेटे मेरे पास, आजा बेटे, तो नहीं, फिर वो चक्षु की ओर टर्न हो जाता था, मेरे पास है तो मेरे ओर, जो भी है। वो किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाता था, और परिचित व्यक्ति के पास तो भी ज्यादा तो नहीं जाता था, बहुत सीमित लोगों के पास ही जाता था, घर के मेंबर्स और कुछ रिलेटिव, कुछ नेबर्स, बस, बाकी किसी के पास नहीं जा रहा। लेकिन ये मेरे पास से छुट के स्वामी जी पर पास जाना चाहता था, स्वामी जी, ऐसा। और मेरे कंधे से उछल के, जैसे मेरे पास नहीं रहना है, उनके पास ही जाना है। बहुत तो मैंने सुंदर, बहुत। देखा स्वामी जी ध्यान की अवस्था में चल रहे थे एकदम से। तो मुझे लगा स्वामी जी को डिस्टर्ब हो रहा होगा शायद, मैं इनको भी कैसे, बेटा नहीं, बेटा नहीं, मैं कर रहा था, ऐसा।
और ये नहीं स्वामी जी मुझे उठा लो, स्वामी जी मुझे अपनी गोदी में उठा लो, ऐसा उचकी लिया। हाँ, तो अचानक से क्या हुआ, मुझे वो फिक्र हो रही थी कि स्वामी जी को डिस्टर्ब ना हो, अचानक से वो चुप हो गया और कुछ सेकंड बाद या आधी मिनट 1 मिनट के बाद बोला, पप्पा मैंने स्वामी जी तेड़ी लिया, अरे वाह। मुझे स्वामी जी ने अपनी गोदी में उठा लिया। ऐसा। तो जो भी, और ये सिर्फ उसने कहा उतना नहीं, आज भी अगर मैं बात करूं तो अभिषेक यही कहता है कि नहीं वो मेरा मानसिक आश्वासन नहीं था, मुझे अभी भी याद है कि स्वामी जी ने मुझे गोद में उठा लिया था, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी अनुभूति करवा दी, जो भी ये सूक्ष्म स्तर पे, लेकिन उसे वो तृप्ति हो गई कि स्वामी जी ने मुझे उठा लिया क्या बात है, अपनी क्या गोद बात। में, ऐसा। वो एक अलग ही रिश्ता तो ये होता है। हुआ था। जी जी जी। तो ये हुआ था। उसके बाद जो प्रोग्राम्स थे, पुराने साधकों के लिए जो प्रोग्राम था वो हमने बाहर कहीं डिक्लेयर नहीं किया था, क्योंकि नहीं तो वो नए साधक भी आ जाते, क्योंकि नए साधक के लिए तो अलग से प्रोग्राम था ही था, बैंकर्स के लिए भी था, वो पुलिस के लिए भी था, तो ये सब प्रोग्राम्स थे। तो पुराने साधकों को सिर्फ हमने इन्फॉर्म किया था पर्सनली, और जिन्होंने लाइव शिविर अटेंड की थी, अनुष्ठान किया था, उनको पोस्ट कार्ड लिख के सब कुछ, बाकी नहीं, बाहर कहीं जाहिर नहीं किया। तो वो क्या था कि 7-8 दिन पहले ही 31-30 दिसंबर 2001 को शिविर थी, उसमें स्वामी जी ने चक्रों की बात की थी, लाइव शिविर में भी बात की थी, प्रैक्टिकल वर्क भी हुआ था, सबके चक्रों पर नाड़ी पर शुद्धिकरण हुआ था। कोडिनार में देखा तो स्वामी जी वही बात कर रहे थे। तो उस समय मुझे लगा कि अब स्वामी जी कुछ आगे की बात बताए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग पिछले 9 महीने से ध्यान कर रहे हैं और एक ही सेंटर को इतने समय से पकड़ के बैठे हैं, एक ही साधना कर रहे हैं, तो स्वामी जी कुछ आगे का मार्ग बताए तो बहुत अच्छा। तो ये मेरे भीतर ये भाव था। तो एंकरिंग में कर रहा था, उस दिन 30 दिसंबर को भी गया था, उसकी भी काफी अनुभूति आई, लेकिन थोड़ा मैं आगे चला। कोई तो बात। उस समय एंकरिंग में पूज्य स्वामी जी से मैंने विनती की, प्रार्थना की कि आज का कार्यक्रम है सिर्फ पुराने साधकों के लिए, ये भाव रखा, और स्वामी जी से विनती है, ये प्रार्थना है कि अब कुछ आगे का मार्ग दिखाए, कैसे मानव से महामानव बनते हैं, कैसे जीव से शिव तक पहुंचते हैं, कैसे नर से नारायण की यात्रा संपन्न होती है। हे गुरुदेव, कृपया आप आगे का मार्ग दिखाइए। तो ये शुद्ध इच्छा थी, वो एंकरिंग में व्यक्त की, और पूज्य गुरुदेव का वो पूरा प्रवचन इस पर हुआ, अविस्मरणीय प्रवचन हुआ, जिसका नाम ही है नर से नारायण। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो सुंदर, पूरा प्रवचन उसके ऊपर हुआ, बहुत सुंदर। और उसकी जो सेंट्रल थीम की अगर बात करो, पूरा प्रवचन तो आप लोग सुनोगे, लेकिन जो था कि नर से नारायण तक पहुंचने के लिए वो स्थान का अवलंबन करना चाहिए जिस स्थान का स्वयं नारायण ने अवलंबन किया था। वो स्थान है गुरुचरण। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं थोड़ा समराइज कर लूं। जी तो जरूर जरूर। what you are seeing on the screen, रसिका जी आप रखिए, what you are seeing on the screen is Nurse Narayan audio cassette. In those days we did not have CDs or YouTube channels. We used to have this as the direct medium to share Swamiji's discourses that were recorded and published. And I admire Baba Swami Multimedia, Jayesh Bhai and team for the excellent job of producing almost like 200 audio cassettes within a day or two. They bought big equipments to make sure that the sadhaks all over the world are able to take advantage of Swamiji's discourses and Swamiji's words spread all over the world. So just sharing these images from my collection, probably Parasji, you might also have it from the early days, but what Parasji said in his last point is when Swamiji came from Kodinar to Bhavnagar, they conducted 4 different darshan shibir with Swamiji, one for the new sadhaks, new people, one for the old sadhaks who have been practicing from
the Anushthan time from last Shibir onwards, and one for the police in Bhavnagar, and last one was for the bankers, because one of the sadhak who is coming next month, Jitu Bhai, I think he was with the State Bank of India, and there were many bankers who were willing to learn about this Samarpan meditation also. So this way the programs were organized. But in this program for the all sadhaks, Parasji as an anchor made a prayer to Swamiji that Gurudev, these people have been listening all this what you are giving about Paramatma, Dharma, Guru, and meditation. We want to learn a little bit more how we can progress on the next level of spirituality. Show us something how one can become from soul to super soul. Show us something how we can become Jeev or living soul to Shiv or the God himself or Paramatma. How we can become Nar se Narayan, meaning from the human form to the Lord Vishnu's form. So in that prayer, the bhav that came out from the Parasji's prayer reached to the heart of Swamiji, and the answer that came is this discourse, Narse Narayan, meaning living in the human body, stool sharir, but reaching up to the state of Narayan or God or the subtle body. So this was the discourse. Very beautiful city and very beautiful couple photo, by the way, Parasji and Chakshuji. Uh, let's go and summarize couple of things. I want to share something very interesting, Parasbhai, that you probably or other people might not know in Samarpan family. In 2001, when Swamiji came for the first time, I expressed a strong desire, like you are asking for the Narse Narayan. I expressed strong desire to Swamiji that Gurudev, I want to surrender my life for the rest of the living time to continue your mission. But I don't know much about Samarpan meditation, about Guru Shakti or anything. Is it possible for you to record in a video form, and then I can use that to promote Samarpan meditation in the um, future for Canada? And he says that अभी मैं जाकर, दिस वाज इन सितंबर, जाकर सबसे पहला काम ये करूंगा कि वीडियो कैसेट बनाऊंगा और आपको भेजता हूं. एंड आई वांट यू टू रियलाइज इन दिसंबर Jai Baba Swami, I think Hitendra ji की तरफ से connection frozen है. We will just resume in a few seconds. While he's joining, Parasji, you can share another anubhuti with us, so that audience, आप कुछ भी और कोई अनुभूति बता दीजिए जब तक आ रहे हैं. जी जरूर. जब तक हितेंद्र जी आते हैं थोड़ी बात बताते हैं. ठीक है. तो ऐसा हुआ था उस समय कि जैसे 30 दिसंबर के दिन मेरे पिताजी और ब्रदर आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा था, अच्छी अनुभूति हुई थी. तो उन्होंने बच्चों को भी कहा, मैं तो कहता था और उसे भी इच्छा थी, लेकिन अभिषेक छोटा है तो क्या करे, वो सोच रहे थे. लेकिन जो गोदी में उठाने का भी एक्सपीरियंस हुआ, और जिस तरह से अभिषेक भी घर पे आंख बंद करके हमारे साथ बैठने लगा था वैसे. तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तू अभिषेक को लेके ही आ जा, लेकिन क्या करना है कि पीछे की ओर बैठना और गेट के पास बैठना. अगर कुछ ऐसा लगे डिस्टर्बेंस जैसा तो तू निकल सकती है अभिषेक को लेके, ऐसा. तो ठीक है, वो आई, सब साथ में तैयारी करके लाई, मिल्क की बोतल वगैरह सब कुछ, और बैठे. जैसे ही पूज्य गुरुदेव आए और उन्होंने दीप प्रागट्य किया,
अभिषेक बैठा था, वैसे बात कर रहा था, आसपास देख रहा था, लेकिन जैसे ही दीप प्रागट्य किया, चक्षु को ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो गया, ऐसे ही उसने सर डाल दिया। तो चक्षु को घड़ी भर तो ऐसा लगा कि नहीं, ये जो छोटे बच्चे के लिए एंट्री नहीं है क्या, वाइब्रेशन वो सह नहीं पाया, बहुत वाइब्रेशन हो गई, क्या हो गया ऐसा। फिर देखा नहीं, वो सो गया है। तो ऐसे गोदी में लिटा दिया और वो बैठ गई और पूज्य गुरुदेव का पूरा प्रवचन चला। और प्रवचन के बाद जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि चलो अब हम ध्यान करते हैं, तो वो जो गोदी में लेटा हुआ था अभिषेक, तुरंत ही बैठ गया पालकी मार के और आंख बंद करके वो ध्यान में शामिल हो गया। तब देखिए, जो भी चिंता थी, जैसे ही स्वामी जी ने दीप प्रगटे किया, ऐसे ही वो सो गया उसी सेकंड, उसी क्षण। और जैसे ही स्वामी जी ने कहा प्रवचन पूर्ण करके अब हम ध्यान करते हैं, वो बैठकर सीधा ध्यान में शामिल हो गया। तो ये भी गुरु शक्तियां कैसा कार्य करती है, गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं, और वो उसने पूरा उस समय तक जैसे उनकी निगरानी में था। तो ऐसे ध्यान भी हुआ। मेरे ख्याल से हितेंद्र जी फिर से वापिस आ गए हैं। जी, हितेंद्र जी आ गए हैं ना? Jai Baba Swami. I cannot see myself, but probably you can see me. जी सही जी, है? अब दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी कोई बात नहीं, जी मेरा जी नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो जी आर यू एबल टू हियर मी? आपको मेरी आवाज सुनाई देती जी है? जी, आपकी हाँ, आवाज भी सुनाई देती है और आप दिखाई भी देते हैं। हाँ, बहुत खूब। अच्छा, तो मैं जो कहने जा रहा था कि जब स्वामी जी 2001 में आए थे ना, तभी जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि गुरुदेव आप तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे गुरु कार्य करना है, तो आप हमें कुछ बना के भेजिए ना, ताकि उसे हम यूज कर सके। तो जो एक दिन का जो वीडियो बनाया था उस वक्त पे प्रचार के लिए, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन के 3 सेट्स, उसमें से एक दिन के वीडियो में स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं आपके कनाडा आया था, तो हम नाइग्रा फॉल्स गए थे और वहां पे ध्यान किया था, आप सबको बहुत अच्छा लगा था। तो नाइग्रा फॉल्स पे लोग घूमने के लिए आते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, उनको न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वहां पे हजारों करोड़ों पानियों के बूंदों की सामूहिकता है, और उस सामूहिकता में हम शून्य हो जाते हैं, सामूहिकता में ही परमात्मा बसता है, निर्विचार हो जाते हैं। तो ये मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं हम सबका। जब हमें एक सच्चे दिल से प्रार्थना करने का मौका मिले और उसका हम सदुपयोग कर ले, तो गुरुदेव उस वक्त पे उसको फलीभूत कर सकते हैं, और उस फलीभूत हुई प्रार्थना से एक आत्मा का नहीं, लाखों करोड़ों आत्मा का कल्याण हो जाता है। यह आपके नर से नारायण प्रवचन और ये वीडियो शिविर के वीडियो बनाने में से हमें मिल रहा है। और यहीं पे आत्माओं का सानिध्य या सूरज के किरणों वाली बात जो है, वह हमें जीवंत लगती है, यानी कि प्रैक्टिकल लगती है। दिस इज व्हाट इज वेरी ब्यूटीफुल। पारस जी हैज मेंशन about several things, and one of them was about this video that we use for the projector or video shibirs. But from that time onwards, Swamiji literally exponentially multiplied his Guru Karya. Before, it was Swamiji who was going from places to places, and I requested Swamiji that how can you be to so many places when Shirdi Sai Baba is saying that it is a global level work and you have to take help. Probably if we go with the video shibir kind of concept, then it will work. And from that point onwards, video shibir started. One of them was in the Bhavnagar that they conducted. So there is a history and there is a pure wish of sadhaks that involves in so many Guru Karyas. But apart from all that, Guru came to bless us. Guru came to awaken our soul. Guru came in our life because he wanted that those who are stuck in this cycle of bhauruk, life and death cycle, get liberated and get the moksha in this lifetime. So very beautiful thing. Thank you very much, Parasji. We will continue on the next point. जी जी।
तो इस तरह से बहुत अच्छी बातें, कई सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से कुछ बात बता रहा हूं। उस दौरान एक और भी बात हुई थी। पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि आपकी वाणी बहुत मधुर है, आप बहुत अच्छा बोल देते हो। तो उस समय काफी वो एक सेकंड में काफी विचार आ गए कि हाँ, वो ये वैसे भी लेक्चर लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन एक फीडबैक ऐसा मिला था, वो उस समय याद आ गया। अगले दिन जो प्रोग्राम था उसमें से कुछ आए थे साधक के साथ काम करने वाले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि પરેશભાઈ બીજું બધું તો બહુ સરસ છે, પણ એક ફીડબેક મળ્યો છે આવો, એમ કરીને એમણે મને વાત કરી કે हमारे साथ के कर्मचारी थे, वो बता रहे थे कि ये एंकर अच्छा बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा लंबा बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन क्या था कि समय, जो निर्धारित समय पे हमने कार्यक्रम शुरू करना था, और जब तक स्वामी जी नहीं आते तब तक हम बताते रहते हैं स्वामी जी के विषय में, समर्पण ध्यान के विषय में। वो उस व्यक्ति को पता नहीं होगा ना, फिर भी वो मुझे वो क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। तो मैंने मुझे गुरुदेव से बताया कि एक ऐसा फीडबैक मिला है कि हम तो गुरुदेव को, स्वामी जी को सुनने के लिए आए थे, एंकर ने जैसे समझ लिया। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, वो आप अपने पे मत लो, कोई भी अच्छा बोले कोई भी बुरा बोले, वो मेरे विषय में बोल रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं, आप अपने ऊपर मत लीजिए। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना, तो आपके भीतर से मैं बोल देता हूं, तो कोई कुछ भी कहे अच्छा या बुरा, आप अपने पर नहीं लेना है। तो तब से वो कंफर्म हो गया। वैसे भी एक हृदय मानता था, लेकिन बुद्धि बीच में तर्क करती रहती है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि जो भी बुलवाने वाले हैं वो गुरुदेव है। और काफी ऐसे अनुभव रहते थे कि हम सोचते कुछ और बोलने का, लेकिन जब भी टॉक देते हैं गुरु कार्य के लिए, किसी के साथ बात करते हैं, तो हमने सोचा भी ना हो ऐसी बहुत अच्छी बातें निकल जाती है, और सामने वाले के हृदय को वो स्पर्श करती है। तो हमने सोचा कुछ और रहता है, बोल देते हैं कुछ और। तो सब गुरु शक्तियां कार्य करवाती है, गुरु कृपा में सब घटित होता है, लेकिन ये गुरुदेव ने कहा। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको ये ख्याल रखना है कि हम जब भी गुरुदेव का कार्य करने के लिए निकलते हैं, गुरु कार्य करते हैं, तब वो कार्य संपन्न करने वाली वो गुरु कृपा होती है, गुरु शक्तियां होती है। तो हमें ऊपर, अपने ऊपर नहीं लेना है। तो जो भी कार्य किया उसकी सफलता का अहंकार भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ भूल हुई हो तो उसकी आत्मग्लानि भी नहीं रहेगी। हम संतुलित रह के कार्य कर पाएंगे, और कार्य के बाद भी संतुलित रह पाएंगे, क्योंकि ये सब गुरु शक्ति के द्वारा, गुरु कृपा में घटित होता रहता है ऐसा। तो ये सीखने का मिला। तो काफी ऐसी बातें थी। इसके अलावा स्वामी जी ने अचानक से कहा कि राजकोट में एक मैं प्रवचन दूंगा, तो वहां पर आप आयोजन कीजिए। तो उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। 12 जनवरी को वहां पर रखा, राजकोट में। तो वो क्या हुआ कि हमारे 2 प्रोग्राम हो चुके थे और 2 प्रोग्राम बाकी थे। नए साधक का, पुराने साधक का वो हो चुका था, और बैंकर्स का और पुलिस का बाकी था। तो स्वामी जी ने मुझे कहा तुम जाओ। तो मैंने कहा स्वामी जी वो 2 कार्यक्रम बाकी है, उसका भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो तुम दूसरे 2 लोगों को सौंप दो, आपको जैसे लगता है वो कर लेंगे, तो उनको सौंप दो और आप राजकोट जाइए ऐसा। तो 30 दिसंबर को ही एक युवान जुड़ा था, जो कि नया साधक था लेकिन उत्साहित था, और उसने कुछ पढ़ाई कुछ समय तक 1-2 साल कुछ डिग्री डिप्लोमा जो कुछ भी था राजकोट किया था। तो वो जानता था राजकोट को और वहां के कुछ लोगों को। फिर हमने भावनगर के जो दूसरे साधक थे उनके जो कॉन्टेक्ट थे
वो सब लिए, उनके नाम, नंबर, एड्रेस, सब कुछ, और निकल पड़े। लेकिन चक्षु ने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां मत रुकना, आप हर रोज अप डाउन कीजिए, सुबह जाके रात को वापिस आइए। तो वो जो यंग साधक था वो वहां पर रुक गया, और मैं सुबह से शाम तक वो कार्य करता था, और रात की जो लास्ट बस थी उसमें भावनगर आता था, फिर अर्ली मॉर्निंग चला जाता था, ऐसा। तो उस दौरान क्या हुआ कि बहुत अच्छी सबकी मदद मिल रही थी, सब कुछ हेल्प कर रहा था। बाकी तो कोई जानता नहीं था, स्वामी जी को भी और हमें भी, जो भी मदद करने वाले थे, लेकिन वो तैयार हो जाते थे। एक प्रोफेसर थे, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे, उन्होंने हॉल बुक करवा दिया, उन्होंने प्रेस नोट भी देने की जिम्मेदारी ले ली, हमने दे दी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दे दूंगा। एक सोफा वाले थे, उनको हमने इनवाइट किया, फिर उन्होंने ऐसा कहा कि आपको प्रचार कार्य करना है तो लीजिए, हमारा स्कूटर भी लीजिए अगर चाहिए तो। हमने कहा एक और डिमांड है, तो बोले क्या? एक अच्छा सा नया सोफा बहुत सुंदर कंडीशन में आपको स्वामी जी के प्रवचन के लिए देना है। तो उन्होंने कहा जरूर। हमने कहा हमारे पास फंड नहीं है, आप उस समय के लिए दीजिए और वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा हम लोग तो भावनगर से, यहाँ के नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपको जिम्मेदारी लेनी है, समय पे पहुंचाना है, समय पे वापस भी ले लेना है, सब कुछ उन्होंने कबूल कर लिया। इतने अनजान लोग इतनी हेल्प कर रहे थे सबको, और ये सब कुछ भी हुआ, काफी बातें उसकी भी। लेकिन वहां पर स्वामी जी आए और 400 लोगों ने वो प्रवचन अटेंड किया, और सिर्फ प्रवचन नहीं रहा, शिविर हो गई। स्वामी जी ने मंत्र भी दिया और जागृति करवाई। तो जैसे एक दिन का प्रवचन नहीं, वो शिविर ही हो गई। बहुत तो ऐसा हुआ था। काफी उससे भी जुड़ी बातें है, लेकिन मुझे वो भी ख्याल है कि हमें आगे बढ़ना है, और बाद में अभिषेक का भी सेशन है। तो कल तो 5 घंटे का हो गया था, तो ऐसे ही थोड़ा स्पीड में चलता हूँ। तो ऐसे सब था। स्वामी जी वहां पर भी, भावनगर में भी एक बार ऑरा स्कैनिंग के लिए ले गए थे, 15 जनवरी के दिन वापिस आए। 12 जनवरी को राजकोट में रात को प्रोग्राम था, फिर 13 को स्वामी जी यहाँ पर आए, और 14 जनवरी उत्तरायण के दिन सुबह ऑरा स्कैनिंग करने के लिए भावनगर के साधकों को भी ले गए थे। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। मेरे पिताजी, वो सब लोग आए थे, और काफी उनमें से भी थोड़ा प्रवचन जैसा हुआ। उसमें के बाद स्वामी जी ने कहा किसी को कुछ प्रश्न है पूछिए, तो प्रश्नोत्तरी भी हुई थी। काफी बातें हुई थी, काफी अच्छी बातें रही थी। लेकिन इस तरह साधक जुड़ते गए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उस समय 13 तारीख को ही आचार्य जो थे वो फिर आगे वो बिजी हो गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रिजाइन करता हूँ, और उससे पहले मुझे बताया था कि आप आचार्य बन जाइए, लेकिन मुझे वो उस समय ठीक नहीं लगा था। मैंने सोचा कि हम अपनी तरह से नक्की कर ले, उसकी बजाय स्वामी जी जो भी बोले वो अच्छा रहेगा। और फिर स्वामी जी को उन्होंने बताया, तब स्वामी जी ने मुझे कहा कि आप आचार्य बन जाइए। तो मैंने कहा कि हाँ, गुरुदेव की इच्छा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार से बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा स्वामी जी को कल बताऊंगा। 13 तारीख रात को ये बात हुई। तो 14 को वो रात को मैंने बात कर ली। मेरे पेरेंट्स, चक्षु, सबको ही तैयार हो गया। मैंने कहा कि नहीं, अब कार्य ज्यादा रहेगा, प्रचारक के रूप में भी कार्य करना है, आचार्य के रूप में भी कार्य करना है। तो थोड़ा अभिषेक की जिम्मेदारी आप लोग भी संभाले तो होगा, स्कूल पहले जाना, जाना, वो सब कुछ है। थोड़ा टाइम में गुरु कार्य के लिए दूंगा। तो चक्षु ने और मेरे फैमिली ने वो हाँ बोले। तो फिर मेरी नियुक्ति आचार्य के रूप में 14 जनवरी 2002 के दिन हुई थी। तो ऐसा मकर संक्रांति के दिन। जी, मकर संक्रांति के दिन। तो ऐसा स्वामी जी ने अगली नाइट को मुझे कहा था, वैसे 13 तारीख को। लेकिन तो एक बात मैंने देखी है पारस जी, आप जो कुछ भी स्वामी जी के कहने के बाद भी जरा पहले घर से कंफर्मेशन तो ले ही लेते हो, चाहे फिर मम्मी से हो, पापा से हो, या चक्षु जी से हो। स्वामी जी કહ્યું છે ને, हाँ, स्वामी जी કહેલું છે ને કે એમ કે જ્યાં સુધી પોતાની પત્ની ખુશ નહીં હોય ને ત્યાં સુધી આમાં પ્રગતિ નહીં स्त्री થાય। शक्ति, स्त्री शक्ति। वो स्वामी जी जब पहली स्त्री शक्ति का बहुत रोल है ना। स्वामी जी जब पहली बार कनाडा गए थे ना, तो उस साधक के घर पे बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, क्योंकि बीवी को नहीं बोला था उसने। स्वामी जी कहते पहले बता दो भाई, कम्युनिकेशन क्लियर रखो।
तो नहीं, वैसे भी वो सबके साथ चले, साथ लेके चले तो अच्छा, तो ऐसा सही, तो बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्टिव थे सब लोग इसमें। ત્યારથી અભિષેકની જવાબદારી છોડી દીધી છે ને છોડી દીધી नहीं છે. नहीं, वो स्कूल के समय पर नहीं नहीं, वो उसका तो ऐसा था कि वो गुरुजी ने ही बोला था कि माँ की सेवा बहुत लेने वाला है अभिषेक, तो इसमें पारस जी का तो कुछ है ही नहीं, आप इसके ऊपर मत नहीं डालो। वैसे बहुत थे वाली, लेकिन वो पहले मैंने जैसे तय किया था स्कूल लेवल का जो टीचिंग था ना, मैंने चक्षु से कहा कि नहीं, वो मैं कॉलेज वाले एज ग्रुप को पढ़ाने का आदी हुआ हूँ, तो मैं उस हिसाब से समझाता हूँ। वो केजी और प्राइमरी का वो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आएगा किस तरह से समझाऊं, तू ही करना, तो वही कर रही थी। पर वो वैसे बात हो गई कि उनका पूर्वजन्म का भी कुछ रिश्ता था। बाद सही में अभी ने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो देखा भी, वो बताएगा शायद, लेकिन हाँ। ऐसे गुरु कृपा से उन्होंने पास्ट लाइफ भी देखी और जो भी उसका रिलेशन था वो भी क्लियर हुआ, लेकिन इस तरह से हुआ था। तो हम जो बात कर रहे थे कि इस तरह से चलता था। 2002 जनवरी में स्वामी जी आए थे। हाँ, इसके अलावा गुरुदेव ने मुझे एक घी दिया था वाइब्रेट करके, गाय का घी था, उसमें कपूर डाल के वाइब्रेट करके दिया था, और उन्होंने एकदम परफेक्टली कहा था कि वो जो गुरु कार्य संबंधी, एंकरिंग संबंधी, जो वाणी बनने का कार्य था, माध्यम बनने का कार्य था, उसके संबंधित बात किया कि आपका विशुद्धि चक्र वैसे अच्छा है, लेकिन उसकी 16 पंखुड़ी रहती है। 16 पंखुड़ी में से लेफ्ट साइड की 2 पंखुड़ी में जरा सा, थोड़ा सा वो है, ये इसके नाक में बूंद डालने से वो शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना कि जिसका भी सेंटर में विशुद्धि चक्र ब्लॉक है उनको ये घी देना। सही है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। उस समय मेरे ब्रेन में वो तर्क आया कि मैं कैसे जानूंगा कि किसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है, लेकिन फिर हृदय में से उत्तर आया कि नहीं, वो तो स्वामी जी का कार्य है ना, वो स्वामी जी संपन्न करवा ले, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में नहीं सोचना है, ऐसा। तो ये हो गया, वो रख लिया। उसके बाद भी काफी बातें हुई, बीच की भी बातें हैं 2002 की गुरु पूर्णिमा की, चैतन्य महोत्सव की, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात कर लेता हूँ कि शायद 2003 की गुरु पूर्णिमा में या 2002 की, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन स्वामी जी ने वो जो फॉर्म मंगवाए थे गुरु पूर्णिमा के लिए, उसमें स्वामी जी ने सबका वो स्कैनिंग किया था उससे पूर्व, और कौन से व्यक्ति के कौन से चक्र में क्या है वो लिख के भेजा था एक लाइन में, और उसका प्रिस्क्रिप्शन था एक लाइन में, यानी डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि किसी को स्वादिष्टान का प्रॉब्लम है, अति विचार मत करे, किसी को लगा था हृदय चक्र, तो चिंता मत करे या नकारात्मक मत विचार करे, किसी को लिखा था विशुद्धि चक्र, आत्मग्लानि मत करे, किसी को लिखा था आज्ञा चक्र, क्षमा कर दे, ऐसा। तो ऐसे भेजा था गुरुदेव ने सबके लिए। तो मैंने क्या किया कि विशुद्ध चक्र, मैं आचार्य था तो मेरे पास ही लिस्ट आया था, तो मैंने क्या किया कि विशुद्धि चक्र वाले अलग से निकाले। हाँ, उस समय क्या हुआ था, कुछ फॉर्म में ऐसा था कि चक्रों का मेंशन नहीं किया था, तो मेरे फॉर्म में भी नहीं किया था, अभिषेक के फॉर्म भी नहीं किया था। हाँ, अभिषेक का भरा था, वो बात भी लंबी है, लेकिन जो भी था, स्वामी जी का फोन आया, मैंने पूछा कि मेरी पत्नी आना चाहती है लेकिन बच्चा छोटा है तो क्या करे, ऐसा ऐसा, क्योंकि 7 साल की समय मर्यादा थी और ये 7 साल का भी नहीं हुआ था, छोटा। तो गुरुजी ने कहा कि आप देख लो ना, ध्यान कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अरे ध्यान तो करता है, 2002 की शिविर के बाद हमारे यहाँ सेंटर शुरू किया और हर रोज प्रार्थना भी वही करवाता है, हर रोज ध्यान में बैठता है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, तो ले आना। तो मैंने उसी समय सबके फॉर्म में आचार्य के रूप में जब मैं साइन कर रहा था, उसी समय चक्षु अभी का फॉर्म भर दिया सर। तो क्या था, ये तारीख थी उस मंथ की, वो साल चल रही थी, तो मैंने वो अभिषेक का फॉर्म भर के वो तारीख डाल दी, लेकिन वो 97 के बदले वो जो 2002 2003 वो डाल दी जून की तारीख। तो फॉर्म तो मार्च अप्रैल में भर दिए गए थे, स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी ने देखा, अरे इसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ लेकिन जो भी था, अभिषेक में सिर्फ ध्यान करे ऐसा लिखा था, बाकी चक्र का नहीं लिखा था। और मेरे वो फॉर्म में लिखा था, चक्र का कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था, मैं आपके साथ हूँ।
बहुत सुंदर। ये सिर्फ एक ही फॉर्म था जिसमें पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि मैं आपके साथ हूँ। तो तब से वो एक विश्वास दृढ़ हो गया है कि गुरुदेव सदैव हमारे साथ है, सदैव बिल्कुल, हमारे साथ है, बिल्कुल उनकी सही कृपा है। सदैव बरसती है, ऐसा। तो ये था, लेकिन क्या था, वो फॉर्म्स मैंने कलेक्ट किए, अलग लिस्ट बनाई और सबको इन्फॉर्म किया कि आपके लिए एक गुरुदेव की प्रसादी है, वो लिस्ट अलग करके, और आप ले जाइए, जब भी आपको समय मिले ले जाइए। और कोई आता था तो मैं बोलता था चक्षु को, एक खाली बोतल ला, उसमें भर के दे देता था। तो मैंने ऐसा कोई ये टोटल घी इतना ग्राम है, डिवाइडेड बाय इतने लोगों को देना है तो इतने इतने ग्राम देना है, ऐसा कोई पैकिंग करके पूर्व कोई निश्चित नहीं मेजरमेंट नहीं रखा। किया, मेजरमेंट नहीं किया था। हाँ, लेकिन वो चक्षु को बोलता था एक खाली सीसी ला। वो जो वायल हो सीसी हो वो भर के दे देता था अप्रोक्सीमेट। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, लोग अलग अलग समय पे आए, एक साथ भी नहीं आए, जिस समय जिस साइज की बोतल हाथ में आई वो भर के दे दी। लेकिन आखिरी व्यक्ति आया और आखिरी वो केक खत्म हुआ क्या एकदम, बात, वो नाप क्या भी बात। बिल्कुल सही निकला। तो गुरुदेव 1 साल पहले 2 साल पहले भी जो सूचना देते हैं वो कार्य संपन्न करवा लेते हैं, और वो किस तरह से करवा लेते हैं वो उनकी लीला वही जाने। ये हमारी बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल सही नाप है। तोल कुछ भी काम नहीं करता। सब तो वही कभी, करवा लेते या कभी कभी हम धार्मिक कथाओं में सुनते हैं कि कहीं पे जैसे अन्नदान चल रहा है, कहीं पे खाना भंडारा चल रहा है, और अचानक 200 लोग उमड़ पड़े उस दिन, और वहां पे खाना बना था 100-150 लोगों का, लेकिन 200 लोगों का खाना कैसे बनेगा? यहाँ पे प्रार्थना, समर्पण, गुरु की कृपा, भगवान का चमत्कार सब कुछ दिख जाता है। बिल्कुल वही इस भाव में हुआ कि आपने ये घी जो स्वामी जी ने आपके लिए भेजा और आपने बांटना चाहा, तो स्वामी जी ने ये प्रयोजन भी कर दिया, देखो कि इतने साधकों के साथ करवा दिया। तो स्वामी जी बार बार कहते हैं अपने प्रवचन में, आपका देने का भाव है, उसके हिसाब से परमात्मा का चैतन्य, गुरु की कृपा बरसेगी। आप सही बात देना कितना चाहते हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने भी महसूस किया है अपने जीवन में कि जितना हम देते जाते हैं विदाउट वरिंग अबाउट मेरा क्या होगा और मेरा कितना लूट रहा है, मैं कितना बचा पाता हूँ, तो ये भाव हमें ऊपर ले जाता है और दूसरों का कल्याण कर देता है। और बिल्कुल सही। इधर जी आश्चर्य की बात वो थी कि स्वामी जी ने जो घी दिया वो तो मैंने सिंगल टाइम ही यूज किया, और वो हो गया था शुद्धिकरण आपका सिर्फ वंस। आपका 2 पंखड़ी एक क्लियर हो गया। पहली बात, एक ही बार यूज किया था, और वो यूज करने के बाद थोड़ा मुझे फ्यूरिश जैसा लगा। तो हाँ, चक्षु ने कहा अरे आप कुछ दवाई ले ले, मैंने कहा नहीं ये दवाई नहीं, ये शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। तो वो नहीं मान रही थी। तो हमारे एक डॉक्टर मित्र फिजिशियन आ रहे थे, उनको फोन करके बताया, एक लेबोरेटरी वाले थे उनको भी बताया कि ये पारस ये दवाई लेने की मना कर रहे हैं, उनको फ्यूरिश है, ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, कुछ मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो उन डॉक्टर मित्र ने जो साधक थे उन्होंने कहा नहीं आप आइए, एक बार तो आपका टेस्ट कर लेते, चेकअप हो जाए और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कर लेते, सच में नॉर्मल है या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, काउंट सही बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो फिर सही। टेस्ट कर लो यार, तो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। फिर मैंने चक्षु को कहा, देख मुझे समय नहीं मिला, अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके वो भूमि माता को समर्पित कर देता हूँ। तो इस मेथड से ध्यान किया जो स्वामी जी ने बताया था, तो एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ी, और वो अनुभव हुआ था वैसे भी कि ये खुल गया है ऐसा। तो दूसरी बार जरूरत नहीं हुई ऐसा। तो बहुत काफी ऐसे अनुभव है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात करनी है, उसके बाद अभिषेक का जल्दी ही बारी आ जाए। वो क्या है कि 2002 की गुरु पूर्णिमा चक्षु अटेंड नहीं कर पाई थी, उसको हाँ, इच्छा बहुत थी, लेकिन अभिषेक छोटा था और लेके नहीं आ सकती थी। हाँ, इच्छा वो 2003 में पूर्ण हुई, लेकिन 2002 में क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा में मैं गया, एंकरिंग मुझे ही करना था 2002 का गुरु पूर्णिमा का। वैसे शिवरात्रि का भी 2002 की शिवरात्रि का भी गुरुदेव ने ऐसे ही वहां पहुंचने के बाद कहा, मुझे नवसारी के एक साधक मित्र ने बताया कि स्वामी जी आपको माइक दे देंगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे कि स्वामी जी ने कहा तुम उसका एंकरिंग कर लो प्रोग्राम का ऐसा। सही। तो शिवरात्रि 2002 में ऐसा ही एट अ टाइम ही कहा गया और वो हो गया था। फिर 2002 का गुरु पूर्णिमा तो पहले से सूचित किया था कि आपको उस कार्यक्रम का एंकरिंग करना है।
ऐसा। तो वो हो गया था। तो उस दौरान चैतन्य महोत्सव निश्चित भी हुआ था एक स्थान पे, महाराष्ट्र के एक स्थान पे। जब मैं वापिस आया तब चक्षु ने कहा कि वहां पर क्या इस तरह से हॉल था, 2 मंजिले का था, तब तिगरावाड़ी में था कार्यक्रम। चक्षु बोल सही। रही थी कि ऊपर के हॉल में ऐसे प्रवचन वगैरह होते थे, नीचे ऐसे भोजन वगैरह व्यवस्थित। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर चक्षु ने कहा इस प्रकार से स्टेज डेकोरेट कहा था। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो तूने कैसे जाना? तो वो बोल रही थी कि मैं वहां पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे वो थॉट आ रहा था कि अगर मैं वहां जाती तो कितना अच्छा होती, मेरा क्या बात। सदनसीब होता अगर मैं दूसरे लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा में जा सकती। तो मुझे ध्यान में वो दिखाई दे रहा था इस तरह का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चक्षु ने वो कहा था, एकदम सही था। फिर चक्षु ने मुझे कहा कि नहीं, अब चैतन्य महोत्सव है ना वो भावनगर में होगा, मैं नहीं आ पाएंगी ना तो स्वामी जी आएंगे, गुरुदेव यहाँ पर भावनगर में आएंगे। बहुत सुंदर। मैंने कहा अरे उसकी तो घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र के इसी सेंटर के साधकों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद घोषणा भी की गई थी कि अगला चैतन्य महोत्सव जो है वो इस सिटी में, हाँ मैं अभी नाम नहीं बता रहा हूँ, उस सिटी में होगा ऐसा। तो दक्षु ने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव यहाँ आएंगे, भावनगर में होंगे। तो आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिनों के बाद मुझे स्वामी जी का फोन आया और स्वामी जी ने कहा कि इस बार चैतन्य महोत्सव भावनगर में हो सकता है क्या? अरे वाह। कहा जरूर गुरुदेव, लेकिन वो तो दूसरी जगह पे वहां पर वो हमने अनाउंस किया था। तो स्वामी जी ने कहा हाँ वो तय हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, गुरु शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि इस बार शिव बाबा की भूमि भावनगर में चैतन्य महोत्सव हो। तो क्या मैंने कहा बात। फिर तो गुरुदेव हो जाएगा, अगर गुरु शक्तियों की इच्छा है तो फिर भावनगर में ही। तो स्वामी जी ने कहा कि कितना पैसा लगेगा साधकों को? तो उस समय गुरु पूर्णिमा में नवसारी में जो भी अ, रखा गया था शुल्क, तो उनसे मैंने 50 रुपये कम करके कहा, जैसे कि 350 थे तो 300 कहे ऐसे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो फिर सर्कुलर ही निकल गया फाइनली। हम लोगों ने तो कुछ सर्वे नहीं किया था सही है, सही कि है। कार्यक्रम में हॉल का इतना लगता है, स्टेज का इतना लगता है, लोगों को रहने के लिए उतारा की व्यवस्था करते हैं उसमें उसका लगता है, खाने का भोजन का इतना लगता, कुछ भी सर्वे नहीं किया था, ऐसे ही बोल दिया और उसका सर्कुलर निकल के आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही फिर हम लोगों ने कमेटी बनाई, नर्सरी से गाइडेंस लिया कि आप लोगों ने किस तरह से अरेंज करते हैं, किस प्रकार से कमेटियां बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने वो कमेटियों का निर्माण किया, कमेटियों के अध्यक्ष चुने गए और सब कुछ जिम्मेदारी है वो बांट दी गई। तो फिर लेकिन वो बात बजट ये थी, बैठ गया, फिट बैठ गया बजट अरे आपका। अरे एकदम से फिट बैठ गए, उतना ही नहीं, उसमें से आधे से ज्यादा तो वो बचत हुआ, वो सब नवसारी आश्रम में जमा हुआ। अरे वाह 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 वाह, बहुत क्या। कम खर्च हुआ, आधा भी नहीं, शायद 25% या 30% में हो गया। उसमें क्या हुआ गुरु कृपा से कि ज्यादातर व्यवस्थाएं हमें फ्री ऑफ चार्ज मिली। हाँ 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 हाँ। वहां पर कार्यक्रम संपन्न करना था, वो जगह भी हमें फ्री में मिली। बाहर से आने वाले लोगों को हमने उतारा की जो अलग अलग प्लेसेस पे व्यवस्था की, क्योंकि एक जगह पे नहीं हो पाई, तो वो भी सब हमें फ्री मिल गया। फिर सोचा कि ये अलग अलग स्थान पर साधकों को रखा है तो समय पर सुबह पहुंचना और रात को वापस ले जाना, तो उसके लिए एक ट्रैवल्स वालों ने व्यवस्था दे दी, फ्री ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेशन पूरे 3 दिनों के लिए। तो वो भी हो गया। तो सिर्फ भोजन व्यवस्था का, स्टेज का ऐसे ही कुछ खर्च लगाने पड़े, तो काफी बचत हुई। और भोजन वालों के साथ भी वो सब कुछ बैठक करके, मीटिंग करके उनको समझाया, तो उन्होंने काफी लोएस्ट रेट पे कर दिया ऐसा। बहुत तो सुंदर, गुरु बहुत। कृपा में बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते थे ना, तो जो भी कमेटी मेंबर्स थे, जो भी कमेटी के अध्यक्ष थे, किसी ने एक भी घर का भी फंक्शन नहीं किया था, किसी को उसका अनुभव नहीं था। जैसे हाँ, किसी की बेटे की शादी है या बहन की है, भाई की है, और अरेंज किया हो, उनको अनुभव नहीं था। बारात वाले आने हो और व्यवस्था, कुछ भी नहीं, सीधा ही बड़ा प्रोग्राम। वाह वाह। स्टेज वाले भी पहली बार कर रहे थे, हाँ नवसारी से प्रभाकर जी का गाइडेंस उनको मिल रहा था, लेकिन भावनगर के युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया उनके मार्गदर्शन में और अच्छा स्टेज बना। उसके बाद वो परमानेंट टीम हो गई स्टेज की, कि वो प्रभाकर जी के
वो वो निर्देशन में करने लगे हर साल। प्रभाकर जी के साथ इतने अच्छे से जुड़ गए हैं कि आज भी हमने जब जी, लास्ट मंथ हाँ, जो वो स्टेज करने के भागवती लिए का जाते हैं। कार्यक्रम किया तो बहुत से लोग भावनगर से जी जुड़े जी थे। तो ये जी भावनगर यानी कि भाव की नगरी। जी सच बोले तो मैं तो कहता हूँ कि स्वामी जी के गुरुदेव दादा गुरु जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, वो भाव जी की नगरी से आए और उनके भाव की वजह से ही आज समर्पण गुजरात में स्थापित हुआ है और जी समर्पण का बीज गुजरात से सारे विश्व में फैल रहा है। तो जी ये स्वामी जी जो बार बार कहते हैं ना कि आप सिर्फ भाव रखो, भगवान भाव का भूखा है, और यहाँ पे लॉजिक और बुद्धि सब पिछवाड़े पे छोड़ दो। हमको कोई जरूरत नहीं आपकी बुद्धि की, बजटिंग की, प्लानिंग की। अगर भाव है तो गुरु आपको माध्यम बनाकर कहीं से भी कार्य करवा देगा। जैसे स्वामी जी एक प्रवचन में कहते थे कि पप्पू जा खेत में दाने डाल के आ, वैसे मैं दाने डाल के आता था, पीछे मुड़ के देखता भी नहीं था और फिर वो दानों में से अच्छा फसल निकल जाती थी। तो ये बात है। मुझे तो मेरे जीवन में भी यही लगा कि इवन आज मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, थोड़ा अंग्रेजी में बोलता हूँ ताकि पीपल गेट एंजॉयमेंट इन दिस। तो what we were talking is about the bhav or the sentiment of love and surrender to your guru or God. Okay, when you have that, automatically God's love and grace start flowing towards it. They were Parasji and the team who organized the Chaitanya Mahotsav. It started with the pure wish of someone like Chakshuji, who says that next Chaitanya Mahotsav, Swamiji's birthday, will be celebrated in Bhavnagar. And Swamiji himself asked from the front side that, would you like to do Chaitanya Mahotsav celebration in Bhavnagar? Then Swamiji asked, what would be the charge that you want to ask participants to pay for the fees? And Parasji said, randomly I said 50 rupees less than what they suggested they used for the Guru Purnima celebration in the same year in Navsari. So, to their amazement, there were so many suppliers and the vendors who were giving free services. Okay, we will provide this, we will provide this, and they did not charge. So many things just got happened, even though people who were becoming part of the committees to organize the event did not have any such major events experience, but it started happening. And the last one is the stage decoration. Prabhakar Sharmaji, who was our guest from last month TIS, he guided some of the sadhaks from Bhavnagar, and it was a beautiful decoration of the stage. I believe it was the planets, right? Brahman ka जी pura जी सही decoration बात है, किया। ब्रह्मांड का दर्शन। So it was a beautiful decoration, as if the Swamiji is sitting in the cosmos, in the space, and all the different planets and stars were on the stage. So it was beautiful thing. Again, the most important thing is bhav. मैं आपको ये कहना चाहता था पारस जी, जी in Canada and America, we are working very closely together because this was Swamiji's wish, Swamiji's dream. He told me from 2001, very first day, that you will become instrumental and medium for both US and Canada. You will have to support and promote in both these areas. When I was appointed by Swamiji in 2017 uh, for the as a managing trustee, he did not give me any names as a committee members or trustees to start the work, but I selected sadhaks from all over USA instead of selecting only from one specific area. And then I collaborated with the Canadian sadhak because already I knew, as I was coming from Canada. Together, when Swamiji was in video conference with us in 2017 September, he says that you American sadhaks will have to support Canadian sadhak because they don't have that many sadhak in Canada, but they have Mangal Murti. So you have to support and help them making the Guru Shakti Dham. And randomly, I took the leadership and I said, okay, Swamiji, whatever is the cost that we can budget, the Canadian sadhaks have budgeted, we will provide 50% of that funds. From 2018 till today, we are constantly supporting that project. And because of that, Guru Shakti Dham, we have our own land.
and we are going to start the construction also now. Bhav, sentiment of love and samarpan for your guru is very important. So that is where we are connecting very well, because आपके हृदय में भी भाव है, हमारे हृदय में भी भाव है, और सभी साधकों के हृदय में भाव है, इसलिए आत्मीयता से दिस समर्पण प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सुंदर लगा आपकी बात से, थैंक यू। जी जी आगे बढ़े जी। काफी बातें हुई थी, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख करता हूं कि दांडी आश्रम की जमीन के जो पेपर्स थे वो ऑफिशियली स्वामी जी को चैतन्य महोत्सव भावनगर में अर्पण किए गए थे। वो भी बात थी। दूसरी बात, वर्ल्ड लीडर की पोस्ट क्रिएट की गई थी और उसकी घोषणा भी गुरुदेव करने वाले थे, तो वो भी गुरुदेव ने घोषणा की थी। और उस समय वर्ल्ड लीडर के रूप में श्री धर्मेश भाई शाह की नियुक्ति की घोषणा पूज्य गुरुदेव ने की थी भावनगर चैतन्य महोत्सव 2002 में। तो ये भी हुआ था। इसके अलावा पूज्य गुरुमा घर पे पधारी थी। हाँ, इसके अलावा हाँ, गुरु पूजन जो किया था उसमें अलग अलग सेंटर से अलग अलग दंपति गुरु पूजन में शामिल हुए थे। तो उस समय भावनगर की ओर से मुझे और चक्षु को वो अवसर प्राप्त हुआ था। तो चक्षु की बहुत इच्छा थी, वो भी पूर्ण हुई। और स्वामी जी ध्यान में बैठे थे, तो चक्षु को ऐसे ही मन में भाव हुआ कि स्वामी जी जब मैं पूजन करूं आप मेरे ओर देखना, ऐसा। तो जैसे ही चक्षु ने स्पर्श किया वो अत्तर डालने के लिए गुलाब जल, तो स्वामी जी ने तुरंत ही देखा। बाकी के समय वो आंख बंद करके बैठे थे। तो छोटी से छोटी इच्छा वो पहुंचती है, ऐसा गुरुदेव तक। तो गुरु माँ घर पे आई थी, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लैंड देखने के लिए जाना था। तो गुरु माँ घर पर ही थी और सब कुछ बात कर रही थी। हाँ, एक चक्षु એટલે ગુરુમાં અમારા ઘરે આવ્યા, પછી બધી આમ સરસ સરસ બધી વાતો કરતા હતા. ગુરુમાં અનુરાગજી અને શાશ્વતી નહોતી આવી, અનુરાગજી ને ગુરુમાં બે આવ્યા હતા. પછી અભિષેક ને કે બેટા તને ખબર છે હું કોણ છું? તો અભિષેક કે હા ગુરુમાં એમ. તો કે ના ના, કે હું તારા પપ્પાની માં છું એમ. તારા પપ્પાની મમ્મી છું એમ, કે તારા પપ્પાની માં છું. તારી દાદી છું. ગુરુમાં કે અભિષેક ને તો કેટલા નાની ઉંમરના ફઈ કાકા, એટલે શાશ્વતીજી અને અનુરાગજી એમ કાકા ને ફઈ થાય ને, તો એમ અભિષેક ના કે તારે કેટલી નાની ઉંમરના ફઈ છે, તારે કેટલી નાની ઉંમરના કાકા છે એમ. કે એમ કે હું તારા પપ્પાની માં છું ને કાયમ રહીશ. वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो भाव कितना सुंदर भाव है। और गुरु माँ ने और स्वामी जी ने हम सभी साधकों को रिगार्डलेस ऑफ आवर बैकग्राउंड, आवर एज, सभी को बच्चों की तरह ही रखा है, आज तक रखते आए हैं। इसलिए वो सच में हमारे लिए एक आत्मीय परिवार बना दिया उन्होंने, स्वामी जी ने और गुरु माँ ने। हम सबके लिए माँ और पिता का स्थान दे दिया उन्होंने। પછી મેં કીધું ગુરુમાં તો હું તમારી દીકરી નહીં એમ. તો ગુરુમાએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે ના, પારસ મારા દીકરા એટલે તું મારી વહુ જ થઈ એમ. એટલે કે દીકરી હોય ને તો કે દીકરીને આપણે પરણાવીને સાસરે મોકલી દઈએ એટલે દીકરી પરાઈ થઈ જાય એમ. જ્યારે વહુ છે ને આખી જિંદગી આપણી સાથે રહે એમ. बराबर से, बराबर से। और फिर बहू भी तो बेटी ही होती है ना, तो ये भी बहुत सुंदर चीज है। लेकिन वो बेटी जो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाने वाली, मेरी सेवा करने वाली। बहुत सुंदर कहा गुरु माँ ने। तो ऐसा सब चल रहा था, उस समय फोन आया। उसमें क्या था, गुरु माँ आने से पहले तो फोन आ गया था एक बार कि स्वामी जी के साथ जाना है। तो मुझे लगा कि हाँ जाना है, लेकिन गुरु माँ अभी आ रही है तो उसके बाद जाएंगे। तो गुरु माँ बैठी थी और बातचीत, फिर से फोन आ गया, स्वामी जी बुला रहे। फिर गुरु माँ ने कहा क्या है, मैंने कहा ऐसा फोन है। तो फिर गुरु माँ ने कहा नहीं आप जाइए, ऐसा स्वामी जी बुला रहे हैं। तो कहा था कि मेघना को लेकर आना है, वो भी आचार्य थी मेरे साथ। तो मैं पहले उसके घर गया और हम दोनों गए स्वामी जी जहाँ पर रुके थे वो उस बंगलो पे। तो क्या हुआ, देर हो चुकी थी तो स्वामी जी तो निकल गए थे, लेकिन कह के गए थे पारस और मेघना को भेजना, ऐसा धर्मेश भाई के साथ गए थे और कुछ लैंड देखनी थी।
तो फिर हम लोग गए पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते, वो रफली आइडिया था। ढूंढते फिरते थे, तुम कहाँ गुरुदेव, तुम कहाँ, आप कहाँ, ऐसा। वो लैंड थी और छोटी टेकड़ियां थी, पहाड़ियां थी, बहुत वृक्ष थे ऐसे। तो वो जो गांव थे उनके सरपंच वो दिखाने वाले थे, क्योंकि उनकी जो गोचर की जमीन थी, अगर उनमें से लेना है तो ऐसा। हाँ, तो फिर वहां गए थे। फिर उन्होंने घर पे आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा स्वामी जी घर पे आएंगे, तो मैंने कहा नहीं, स्वामी जी तो शायद नहीं आएंगे। फिर भी मैंने कहा पूछ लेता हूँ, धर्मेश भाई से पूछा, तो धर्मेश भाई ने पूछा, स्वामी जी ने हाँ बोल दिया। अरे तो वाह, फिर वहां पर भी गए थे। तो ऐसे स्वामी जी बहुत साधक नान साधक का भेद नहीं करते, ऐसा कोई भाव से अगर कहते हैं तो स्वामी जी हाँ बोलते हैं, वो भी देखा कितने सरल है ऐसा। तो वहां पर गए थे, थोड़ी बातचीत चली थी, लेकिन फिर लैंड कैमरे में ऐसा हुआ कि वो भावनगर से करीब करीब 20-25 किलोमीटर दूर थी जगह। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, आप लोग हर रोज वहां पर जा सकते हैं क्या? तो उस समय तो हमारी सामूहिकता वैसे कम ही थी ना, ऐसा धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन सब कोई वर्किंग था। ऐसे ज्यादा कोई रिटायर्ड पर्सन हो या ज्यादा कोई अभी युवक हो जो काम पे नहीं जाते, ऐसे बहुत कम लोग थे, नहींवत थे। जो भी थे वर्किंग पर्सन ही थे ज्यादातर। तो हमने कहा नहीं स्वामी जी, हर रोज तो नहीं जाते, सैटरडे संडे जा सकते, संडे पूरे दिन रह सकते सही, ऐसा। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, तो अभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम अपने बोर्ड लगा के रखे अपना आश्रम में, और कोई आए तो ताला देखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए वहां पर, ऐसा। सही, तो आप ऐसा कीजिए कि नजदीक में जहां पर आप हर रोज कोई ना कोई हो, ऐसा स्थान ढूंढिए, ऐसा बताया था। लेकिन ये याद है। तो और काफी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी का टाइम वो आने लगेगा। तो अभी मुझे लगता है कि मेरी ओर से बात खत्म करूं, अगर कुछ ना हो तो, क्योंकि अनुभूतियां भी काफी है, घंटों तक बात चल सकती है। आपने देखा, राइट, कल मैं बोल रहा था तो मुझे टाइम का पता नहीं चला था। फिर अभिषेक ने मुझे कहा कि स्वामी जी पहली बार मिले, उसकी बात आप घंटे तक बोलते चले गए। मैंने नहीं नहीं, कहा कोई मुझे तो पता भी तो नहीं चला ऐसा। वो क्योंकि बिल्कुल अच्छा है, वो क्या है, और हमें गुरुदेव कोई की फिक्र बात नहीं करने लगते हैं ना, तो समय का पता नहीं चलता सही है। ऐसा। तो तो आत्मा के लिए आज समय नहीं होता है, आत्मा के लिए समय भी नहीं होता है, और पैसे का बजट भी नहीं होता है, तो इसकी फिक्र मत वो करो आप। समय से पर, वो क्या हाँ, है कि हम सब समय के भीतर है, यानी काल में है, काल पुरुष के नियंत्रण में है। लेकिन परमात्मा है ना, वो महाकाल है, वो काल से परे है, काल भी उनके कंट्रोल में है। तो हाँ, जब उनको हम समर्पित होते हैं, तब हम भी काल के बाहर होने जाने लगते हैं। बिल्कुल बोलने बिल्कुल। वाले सुनने वाले सब काल से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ गुरु कृपा में रहते हैं, तो पता नहीं चलता What ऐसा। a beautiful. So, what I would like to summarize, because you were able to read some of the English translation on the screen itself, I would say the most important thing is pure chitta, that is purity of your thoughts, purity of your emotions, and the sentiment of surrender. That is what I see in the story of Chakshuji and Parasji. Chakshuji, being a feminine energy, had a pure wish. Anytime she was making wish, even while being in the program or doing the Pad Puja of Swamiji, that she wants Swamiji to look at her, Swamiji will turn and look at her. If she is wishing that Swamiji do the Chaitanya Mahotsav celebration in their hometown, it happened. If she is wishing that Swamiji don't leave the airport without saying goodbye to her, that also happened. These are the kind of experiences that proves what Swamiji has told us again and again. Jaisa tera gana, vaisa mera bajana. The way you sing, I play the drum. Okay, Guru is always puppet of the pure wish of his disciple. When a sadhika like Chakshuji or any sadhak make a pure wish, Gurudev, I want to serve you, I want to do this for you, I want to be instrument for you, like what Parasji have said from beginning. And it started happening. It kept going on till today in their life, in our life. And we are all feeling that we are so blessed that what Swamiji wanted to do, being present,
in one location, wherever we are as sadhak, Swamiji is making it happen. Today, I am very proud to say, not just in India, but in many countries, especially in the Americas, what we have seen in last 2 years, every young sadhak and sadhika, they are becoming instrumental in Guru Karya. They are providing their day and night services for any little thing that has been witnessed by Bhatt family itself in last 2 months. We have been working together for this program and asking so many information that were very important for us to present to the world, how their samarpan bhav, how their sentiment of surrender and Guru Bhakti has brought such a beautiful result in their life, such a joy and happiness, as if they are living in paradise. They are living in the heaven itself on the earth. Okay, so all this is possible in anyone's life, your life, my life, Parasji's life, when we have a living Guru who is capable to make it happen, just like God Himself. Okay, and when you surrender yourself, that okay, I am for you. You are my God. Make it happen. And it starts happening. So, this is the beautiful story. Let us go on the next part of the program. Thank you very much, Chakshuji, Parasji, for sharing with so much love and telling us so many details that I cannot even describe in one word or in thank you that how grateful we are, how grateful we are to you, because this is the best advice and learning we can see from the live example of one's life, one story. अभी मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा. थोड़ा गुरु कार्य के बारे में आप बताइए ताकि आपके गुरु कार्य से अगली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले. पारस जी. जी, वैसे गुरु कार्य हम नहीं करते, वो गुरुदेव करवा लेते हैं. तो जो भी है गुरु कार्य करने का सुअवसर गुरुदेव प्रदान करते हैं, उसमें जैसे बात हुई आचार्य और प्रचारक के रूप में गुरु कार्य के का अवसर प्राप्त हुआ था. उसी प्रकार से डबिंग का गुरु कार्य पूज्य गुरुदेव ने दिया. उन्होंने कहा कि गुजरात के अभी काफी विस्तार ऐसे है जैसे कि गांव के विस्तार, तो वो लोग हिंदी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, तो उनके लिए गुजराती में डबिंग करना चाहिए. तो डबिंग का गुरु कार्य का अवसर पूज्य गुरु कृपा में प्राप्त हुआ, गुरुदेव ने दिया. तो वो भी हम तब जानते नहीं थे कैसे डबिंग करना है, कैसे है. तो सबसे पहले तो मैंने वो नरसे नारायण वो गुजराती में रिकॉर्ड करके भेजा. क्या बात. तो फिर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, वो तो वैसे भी ऑडियो कैसेट थी. स्वामी जी ने कहा वीडियो होगा और वीडियो में मैं जो बोलता हूँ वो स्क्रीन पर मैं दिखूंगा, लेकिन वो आवाज आपकी होगी गुजराती में. ऐसा सही है. तो फिर मुझे समझ में आया. फिर वो कैसेट्स प्रोवाइड की गई शिविर की और वो शुरू किया. तो पहले हमारे पास तो कोई कैसे करना वो भी आइडिया नहीं था, कौन से सॉफ्टवेयर है कुछ भी पता नहीं था, क्या करना है, कैसे मिक्स करना है. वो धीरे धीरे सीखने लगे, कुछ लोगों की हेल्प ली. लेकिन पहला जब हमने बनाया और मैं और चक्षु चेक कर रहे थे कि कैसा बना है कंप्यूटर में, तो उसी समय हम ऊपर के रूम में कंप्यूटर में चेक कर रहे थे और अभिषेक उस समय नीचे से ऊपर आया. तो छोटा था वो, 2005 की बात है. तो आते ही उसने बोला, अरे स्वामी जी गुजराती में बोल रहे हैं. तो पता चला कि स्वामी जी ने कंफर्मेशन दिया बच्चे को माध्यम बना करके, क्योंकि वो मेरी आवाज नहीं पहचाना, तो उसको ऐसा ही लगा कि स्वामी जी गुजराती में बोल रहे हैं, तो कंफर्म हो गया. तो ऐसे तो वो गुरुदेव ने ही करवा लिया, उन्होंने सौंपा और उन्होंने करवा लिया. और जो भी लोग शिविर अटेंड करते थे उसमें गुरुदेव उतनी ही अनुभूति करवाते थे जैसे दूसरी वीडियो शिविरों में, हिंदी वीडियो शिविरों में होती थी. तो गुरुदेव सब जगह पे समान रूप से कार्य करते, बस
कोई ना कोई गुरु कार्य के लिए सिर्फ उपस्थित हो जाए, उतना ही। बाकी गुरु शक्तियां ही, गुरुदेव ही कार्य संपन्न करवा लेते हैं। बहुत तो सुंदर। ये सब है। तो डबिंग का कार्य उसी प्रकार से। उसके बाद एक बार कुछ गुरु पूर्णिमा या चैतन्य महोत्सव का कार्यक्रम वहाँ दांडी में था और मैं एंकरिंग में था, तो बीच में ही मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए स्वामी जी और गुरु माने, और कुछ सांस्कृतिक वगैरह कुछ चल रहा था, मुझे पता नहीं था या कुछ दूसरा। तो मेरे साथ जो बहन जी थी उनको मैंने कहा कि हाँ, इस कार्यक्रम में ऐसा मेरे कागज जो थे कि इस प्रकार से टॉपिक है। क्योंकि क्या है कि अगर कोई गुजरात वाले मान लो सांस्कृतिक वो करने वाले हैं तो उनको पता नहीं रहता, वो मुझे सौंप देती थी कि ऐसा, तो फिर वो मैं बता गया गुजराती की ये गरबा है, ऐसा 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 है, आप संभाल लीजिए, मैं जाता हूँ ऐसा। तो फिर वहां पर गुरुदेव ने कहा कि आप एडिटोरियल बोर्ड में आपको कार्य करना है, ऐसा। फिर कहा कि गुजराती मधु चैतन्य के बारे में मुझे कहा कि तो मैंने कहा हाँ, गुजरात में काफी लोग हैं जो हिंदी पढ़ नहीं पाते, तो वो अगर हो जाए तो अच्छा है, ऐसा। तो सब कुछ मिक्स ओपिनियन वैसे भी आ रहे थे, लेकिन वो एडिटोरियल बोर्ड में भी गुरु ने कहा था गुजराती में अगर निकलेगा तो पारस भाई वो संभालेंगे, ऐसा। लेकिन तब तक रिव्यू ऐसे आ रहे थे कि नहीं, हिंदी का सेलिंग कम हो जाएगा अगर गुजराती में प्रकाशित करेंगे। मेरा मन में भाव था कि नहीं, काफी लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना ही नहीं जानते। अगर हिंदी आप पब्लिश करोगे लेकिन उसके काम का ही नहीं है, सिर्फ गुजराती पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए क्या। तो अगर गुजराती में आएगा तो हिंदी की संख्या कम नहीं होगी, वो लोग ऐड होगी, ऐसा। और स्वामी जी ने एक बार अचानक ही अनाउंस कर दिया कि गुजराती में मधु चैतन्य होगा, ऐसा। इसके अलावा गुरु कृपा से पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक सत्य हिमालय का समर्पण योग भाग 1 से 4 उसका अनुवाद करने का, गुजराती अनुवाद करने का कार्य दिया, अवसर दिया, सुअवसर प्रदान किया। उस समय के भी काफी अनुभूतियां थी, सब बताने जाऊं तो घंटा चलेगा, इसलिए सिर्फ उल्लेख ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार से एंकरिंग का गुरु कृपा से जो सुअवसर प्राप्त होता रहा, गुरु पूर्णिमा, चैतन्य महोत्सव, महाशिविर जो भी था। हाँ, एंकरिंग से पूर्व की एक बात बता देता हूँ, वो स्वामी जी से रिलेटेड है, कुछ मजा आएगी। समय जा रहा है फिर भी एक बात बता रहा हूँ। आप फिक्र मत करो जी। अहमदाबाद महाशिविर जो थी, उसके 2 दिन पहले मुझे स्वामी जी ने बुलाया था कि ग्राउंड पे आना है, मीटिंग है, ऐसा। तो मैं वहां पर गया था और 10 मिनट के लिए बुलाया था। तो मैं रास्ते में सोच रहा था यहाँ से अहमदाबाद 4-4.5 घंटे लगते हैं, वापिस आने के 4-4.5। स्वामी जी सिर्फ 10 मिनट में लगे, स्वामी जी कुछ ज्यादा मिले तो अच्छा हो गया, ऐसा। फिर ग्राउंड पे गया, स्वामी जी अभी नहीं आया था, ध्यान कर लिया कि स्वामी जी से मिलने से पहले। फिर स्वामी जी आए, मिले और सब कुछ बताया, प्रोग्राम के बारे में भी कुछ बताया, कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दी, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हाँ। मैंने कहा कि एक एक बात बताने में काफी, मुझे लगता है कि सब बात बताने लगो ना तो 8-10 दिन चलने लगेगा, हर रोज 5-10 घंटे का। और हमारी ऑडियंस कहती है कि ऐसा लगता है पारस जी को बस सुनते रहे, इतना सरस चैतन्य बह रहा है आपकी बातों से। और जो भी एक गुरुदेव का है, जो भी कुछ है गुरुदेव का है, मैं पसंद आता ये है दिस तो। इज समर्पण प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि चैतन्य का भंडारा है। कोई भी आके जब भी खाना पीना हो तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, आपको गुरु की कृपा का प्रसाद मिलता ही रहेगा, पेट भर जाएगा। बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के और अनुभूतियां सुन के। कोई बात नहीं, आप संक्षिप्त में जितना बता सकते हैं जरूर बताइए। जी जी। तो उस दिन 2-3 घंटे से फिर स्वामी जी ने साथ में रखा और मैदान में भी टांग दी, फिर ऐसे घुमाया, चलो देखते, ये देखा वो देखा, स्टेज पे ले गए, वहां पर देखा, फिर के देखो साहित्य स्टॉल की ओर जाते, ऐसा। तो वो क्या था कि स्वामी जी मुझसे 8-10 कदम आगे थे, मैं 8-10 कदम पीछे था और मैंने मोबाइल साइलेंट करके रखा था सही है। ताकि किसी की रिंग ना आ जाए। तो क्या हुआ, जैसे ही हम वो साहित्य स्टॉल की और कैसी वो रखा है वो देखने के लिए जा रहे थे कि क्या व्यवस्था है, स्वामी जी आगे ही थे और मुझे पता चला फोन थोड़ा वाइब्रेट हुआ। रिंग तो नहीं थी क्योंकि साइलेंट ही कर दिया था, लेकिन वाइब्रेट मोड पर रखा था। तो सिर्फ मुझे थोड़ा वाइब्रेट हुआ, पता चला कि नहीं किसी का तो मैसेज आया कुछ ऐसा। तो बाद में देखूंगा जो भी है। तो स्वामी जी ऐसे में जो 8-10 कदम आगे थे वहां से घूमे, मेरी ओर देखा,
हाँ, एक बात बताना भूल गया, मोबाइल के लिए इंस्ट्रक्शन देना है कि स्विच ऑफ ही रखना है। मोबाइल वो क्या है, सिर्फ साइलेंट मोड पे नहीं रखना है, उसमें क्या है डिस्टर्ब होता है, सिर्फ आवाज का डिस्टर्ब होता है ऐसा नहीं, लेकिन क्या है कि मोबाइल के जो तरंग आते हैं वो तो पकड़ेंगे, तो वो जो पूरा आभा मंडल बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बना है, जो तैयार हुआ है, उसमें वो डिस्टर्बेंस करेंगे, कलेक्टिव आरा फील्ड जो बनेगा उसमें। तो मोबाइल स्विच ऑफ रखना है। तो पता चला कि स्वामी जी इतने दूर है, ये वाइब्रेट मोड में, फिर भी किसी का मैसेज आया तो स्वामी जी को पता चला, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये वाइब्रेट हुआ। अमेजिंग, सबको अमेजिंग लगता है, लेकिन मुझे खुद को भी ऐसा अनुभव हुआ था। स्वामी जी को ड्राइव करके मैं टोरंटो से रिटर्न होना था, उनकी फ्लाइट टोरंटो से थी, तो हम लोग एक दिन जल्दी निकले और मैं बोला स्वामी जी हम नायग्रा फॉल्स के दर्शन में आपको कराना चाहता हूँ, उसके बाद आप जाओ, तो एक दिन जल्दी निकलेंगे। मैं और स्वामी जी दो ही थे जाते वक्त। तो मैं चाहता था कि वहां पे जिनके घर पे हम रहने वाले थे उनको मैं फोन करूं, तो स्वामी जी बोले कि नहीं तू उसको फोन मत कर, लगेगा नहीं। मैं बोला ऐसे कैसे कहते हैं स्वामी जी, लगेगा नहीं? बोलता है नहीं लगेगा नहीं। फिर वो जनरली क्या करते हैं स्वामी जी, एक प्रोटेक्टिव ओरा बना के हमेशा चलते हैं। तो उस गाड़ी में जब हैं हम, तो गाड़ी के अंदर और गाड़ी के आजू बाजू जितना ओरा स्वामी जी ने ब्लॉक करके रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, उसमें सिर्फ वही चीजें होगी जो स्वामी जी चाहते हैं। तो वो मेरे साथ बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि कितने दिन से मैं ये सोचता था, वो सोचता है, वो सब तुझे बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा जाने का वक्त हो गया है, लोग आके तुझे पूछेंगे ऐसे। फिर जैसे ही हम टोरंटो से करीब 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस रहा होगा, वो बोले अब तुझे फोन करना है तो कर, तुझे मैं फ्रीडम देता हूँ, वो कर, लगेगा फोन तेरा। फिर मैंने किया, तुरंत लगा। तब चला मैं 2-3 बार ट्राई भी कर चुका, मैं मुझे मालूम नहीं था ना ये सब, तो मैं ट्राई कर चुका, बोलता नहीं लगेगा तो अभी मत कर, अभी नहीं लगने वाला है। तो ये बातें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमको समझना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अवर ओरा, तो उसमें हमें जीना है और गुरु की कृपा से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो गुरु शक्तियां इतनी सुंदर तरह से हमारा प्रोटेक्शन करती है और हमें संभालती है। इसलिए सोनल जी यहाँ पे प्रोग्राम में भी कहती है जरा अपना फोन ऑफ कर दीजिए, वाइब्रेशन से भी निकाल दीजिए, ताकि ये एनर्जी जो है आपको मिलती रहे और आपका कार्य बनता रहे। बहुत सुंदर अनुभूति कि कैसा सुंदर स्वामी जी कैच करते हैं और हमारे जरिए माध्यम बनाकर कितने लोगों तक पहुंचाते हैं ये सब बातें। जी जी सही बात है। तो ऐसी काफी बातें अहमदाबाद शिविर से रिलेटेड भी काफी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक दो बात बताता हूँ कि स्वामी जी आने से पहले वो मुझे सुगंध का अनुभव हो जाता था एकदम से, एक डिवाइन, और पता चलता था कि स्वामी जी वो मैदान में पहुंच गए हैं ऐसा। तो स्वामी जी ने वैसे भी कहा था कि आपको जो बताना है बताते रहे, मैं कोई एकदम से स्टेज पे धमक नहीं जाऊंगा, आपको जो बतानी है आराम से बताइए। वो ट्रस्टी तो आपको आके बताएंगे कि स्वामी जी आ गए हैं, लेकिन आप आपके हिसाब से चलिए ऐसा। तो लेकिन क्या होता था, स्वामी जी मैदान में एंटर होते ही पता चलता था कि हाँ स्वामी जी आ गए ऐसा। वो ट्रस्टी बाद में दौड़े दौड़े आते थे कि हाँ स्वामी जी आ गए ऐसा, जल्दी कंप्लीट करो ऐसा, लेकिन उससे पहले पता चल जाता था। तो 8 दिन ऐसा हुआ था। हाँ, मैंने कहा ना कि स्वामी जी ने वो थॉट जाना कि नहीं स्वामी जी सिर्फ 10 मिनट के 2 घंटे 3 घंटे दे तो अच्छा ना ऐसा, तो उसी हिसाब से दिया। और एक बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि शिविर प्रारंभ का समय बताना, समय समाप्ति की जो शिविर समाप्त कब होगी वो नहीं बताना ऐसा। तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी वो तो छप चुका है सब, कि इतने बजे से इतने बजे तक है, जैसे कि 6 से 9 या 7 से 10 जो भी है, वो तो बैनर्स में सब जगह पे छप चुका है। शुरू का टाइम और एंड का टाइम ऐसा। तो स्वामी जी के नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं बताना है कि इतने बजे पूर्ण होती है, और इतना ही नहीं, आपको उसका थॉट भी नहीं लाना है कि इतने बजे पूर्ण होती है, क्योंकि वो जो भी है अपनी ओर से जो भी बोला जाएगा वो चलता जाएगा। अगर आप इच्छा करोगे तो बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा। हाँ, तो मेरे लिए ये कुछ नया था। हमारी वैसे ही भी इच्छा रहती है कि हाँ ये बंद हो। हाँ ज्यादा से ज्यादा हम सुने, लेकिन विंटर सीजन था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ दिसंबर महीना था, और वो कॉमन जो है कि लोगों को वो नेचुरल वो जो यूरिनेशन का रहता है, वो भी हाँ, काफी लोगों को वो होता है हाँ, कि
कब के आए हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठे हैं। तो मैं तो प्रिपेयर रह के आता हूँ था, क्योंकि पहले के भी जो अनुभव थे कि दोपहर के बाद पानी ही नहीं पीता था। सही है, सही है। लेकिन के लोगों के अनुभव थे। और एक दिन बहुत लंबा लेक्चर चला था। आप देखिए कि पहले 1.5 घंटे के या 2 घंटे के से कम टाइम के लेक्चर रहते थे, लेकिन अहमदाबाद के शिविर के सभी लेक्चर्स 2 घंटे से ज्यादा लंबे। सही है, आपने सही है। बात किया होगा। तो एक दिन वो ऐसा था और मुझे लगा कि नहीं, ये लोग तो बैठे हैं ऐसा नेचुरल कोर्स वगैरह सब नेचुरल, तो ऐसा ही कि स्वामी जी अब खत्म करें तो अच्छा। और एकदम से उस दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने लेक्चर खत्म कर दिया एक अरे दिन में। आप नोट करेंगे, अगर पूरे दिन सुनेंगे कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया वो, लेकिन स्वामी जी अंतर्यामी और जो कहा उसी हिसाब से उन्होंने किया ऐसा। सही, सही है, और हमने जानबूझ के किया नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि ये लोग कैसे सब बैठे होंगे। फिर सही है। स्वामी जी ने लेक्चर खत्म भी कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो उनको सब बिठाने वाले भी स्वामी जी है, उठाने वाले भी स्वामी जी, हम क्या Exactly. करते, हमें थॉट तो नहीं करना चाहिए। ये लेकिन समर्पण की बात है, और यहाँ पे ही हमारे प्रोग्राम में भी आप देखोगे हम स्टार्टिंग पॉइंट एकदम परफेक्ट टाइम पे शुरू करते हैं, दिस इज समर्पण। जी हम जी कभी भी एंडिंग टाइम नहीं देते। और कई जी लोगों ने मेरे प्रोग्राम के बारे में अच्छी बुरी कमेंट्स देकर, जैसे आपको कहा गया ना कि बहुत बोलता है, बहुत सारा कहा, जी लेकिन मैं जी मानता हूं कि मैं बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे प्लानिंग में ही नहीं होता है। जी तो मैं क्यों उनसे डरूं, और मैं क्यों उनकी बातों को बढ़ावा दूं। जी इसलिए हमने दिस इज समर्पण का एंडिंग टाइम नहीं रखा है। और मैं, जो कोई भी गेस्ट आते हैं ना, हम सारी टीम को ये समझा दिया है, अतिथि देवो भव। यह जी भाव की वजह से मेरे जीवन में मेरी पत्नी मुझे मिली, यह भाव की वजह से मुझे मेरे गुरु मिले, और यह भाव की वजह से आज हर वो आत्मा मिल रही है पिछले मोर देन ऑलमोस्ट 2 years नाउ, कि वो आते हैं, मिलते हैं, आपकी तरह बातें करते हैं, अपने जीवन का सारा जो बाथा है आध्यात्मिक खाली करके जाते हैं यहाँ पर। जब परमात्मा आपको और मुझे बिठाकर ये बांटना चाहता है, तो मैं क्यों बीच में बाधक बनूं, और किसी को क्यों बाधक बनने दूं। क्योंकि वो जब आत्मा बाधक बनती है कि इनको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मालूम नहीं है कि वो कहीं ना कहीं गुरु शक्तियों को या परमात्मा को उन प्यासी आत्माओं तक पहुंचते हुए रोक रहे हैं। और ये भी एक कर्म बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति में जी बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं जिसे हम समझा नहीं सकते। What I was saying to Paras ji about the time, this is very important for everybody to understand. Paras ji was sharing his experience about the Ahmedabad Shibir, in which Swamiji instructed him very specifically. He traveled more than 4.5 hours from Bhavnagar to Ahmedabad only for 10 minutes of appointment with Swamiji. And in that 10 minutes of appointment, Swamiji was giving the instruction about the 8 days workshop that is going to happen, and how the preparations will take place, how the stalls will be located, and all that things. Parasji had a desire, I wish Swamiji give me a little bit more time. But during this time, while they were visiting the land or the ground where the program was going to be conducted, Swamiji was walking almost like 10 to 15 feet ahead of Parasji, and Parasji was walking in the back. He turned off his phone, but still it was on vibrating mode. At the moment something came on his phone, whether it is call or text message, he felt the vibration in his pocket. He did not even take out the phone. As soon as the vibration came, Swamiji turned back and looked at him and gave him the instruction. Yes, in the program, you will have to make an announcement that the cell phone has to be completely turned off, not even on vibration mode, because the electromagnetic waves get will create disturbance when Swamiji is trying to pass the energy. And I was sharing my experience also when Swamiji was in Toronto, in Canada, and we were traveling to Toronto. Swamiji told me not to call the people whom we were going to visit. All these things are showing us that Guru has a specific wish, and he has a special way of managing our life and giving the consciousness. Another point, very important point, is about the timing. Swamiji gave him instructions that you give the time for the starting of the program, but you don't declare the time for the end of the program. And Parasji followed it with total surrender. But one day the thought came that it is cold, it is winter season, and people may have the urge to go to washroom, restroom for urination.
that one little thought of Parasji, because you have to understand, when you are becoming medium for Guru Shakti, you are the face of Guru. Guru is making you do and speak on his behalf. Right now, that is what is happening when Parasji or I am talking in this interview. Guru is talking, but we are just a puppet. He is just making us dance. Okay, you have to understand, your thought itself can disturb Guru, and suddenly Swamiji on that day stopped the discourse and stop giving the how you say, the chaitanya to the audience. So we have to be very careful when we are around Guru, or when we are in the meditative state also. We have seen the benefit of pure wish of Chakshuji, that she was asking for it and Swamiji was giving that things to her. But at the same time, when we are in connection with Swamiji for the Guru as a medium for any Guru Karya, we should not try to bring our intellect or our logical issues in the program. We have to totally surrender and let it flow from the grace of Guru. Another thing, I want to just summarize some of the Guru Kari activities that Parasji has been doing. He, apart from being the Acharya or area head, center head for the Bhavnagar, he also, as we learned, became a promoter. He did some of the dubbing of Swamiji's discourses, because Swamiji said that you have very beautiful voice. Aap acha bol lete ho. And I want you to give voice to my discourses as dubbing those videos. And Parasji did not have those equipments, but still they tried. And to his surprise, the little Abhishek came while they were experimenting the dubbing part. And he says, look, 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 Swamiji is talking in Gujarati, because he has heard always Swamiji talking in Hindi. So Parasji said that that means through Abhishek, Swamiji is giving us indication that my voice is soothing, and we did good Guru Karya of dubbing, even though we were experimenting and we are not professional with this dubbing job. Parasji has been very instrumental also for the Madhu Chaitanya, which is the bi-monthly publication, especially not just for Hindi publication, but with his pure wish, they started the Gujarati version of Madhu Chaitanya also. And Gujarati is the language from the land of Gujarat, the state of Gujarat, where Swamiji's Guru comes, Dada Guru. And in the same language, I was talking to Chakshuji during this interview. So it became very instrumental, even though some people resisted in the beginning. Parasji said that, in fact, there are so many Gujaratis who don't read or don't understand Hindi very well. I am very glad to tell you that some of the sadhaks who are watching YouTube, yesterday's program, they gave me the feedback that it was so pleasant to hear you talking in Gujarati with Chakshuji, because we felt like it is our own language and we felt like somebody is talking in our language. So we are trying to make as much possible to serve all demography of our audience and make you happy. Parasji had the same wish, Swamiji has the same wish. This is not my or Parasji's wish. This is the wish of our Guru Shakti. They want to give you everything and to the fullest. You have to have open mind and willing to accept these things. Also, Parasji, most of the sadhak in Samarpan family knows him as an anchor or MC for Swamiji's program. But apart from this, he has done so many Guru Karya. Some of us have not even read one volume of Himalaya Samarpan Yoga, but Swamiji blessed him not just one or two, 4 volumes of Swamiji's autobiography to translate from Hindi to Gujarati. He also translated the Adhyatmik Satya or spiritual truth in Gujarati, which makes him such a pure medium and which make him such a blessed soul for the Guru Karya. And if you want to know more about Parasji's anubhuti, as he keep on repeating when he comes to the brain level, intellect level, oh, it is going to take a lot of time. I don't want to go more in detail, but you can go and visit our another sadhak's channel, Isha Samarpan. Isha Samarpan on YouTube has almost 25 episodes where Parasji has gone in depth each and every experience, where you can see and hear more things. हाँ जी बोलिए. जितेंद्र जी
25 एपिसोड में भी सिर्फ मैंने 2001 से 2004 तक की बात ही कह पाया हूँ। काफी बाकी है जो बतानी बाकी है उसमें भी। पिछले तो- ज्ञान ध्यान में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज इन साधकों की बातों को, उनके दिल की भावनाओं को याद रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें फ्यूचर में दिस इज समर्पण में आकर 2005 के बाद की कुछ यादें तैयार रखना। कभी भी जब हमें मौका मिलेगा हम आपको लेके आएंगे और आपसे वो सब अच्छी अच्छी अनुभूतियां सुनेंगे। जब भी ये वादा गुरुदेव की करते इच्छा हो, हो, गुरुदेव ये वादा की करते कृपा हो हो कि आप जाएगा। आओगे हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, जी, जरूर। जी। जब तो भी बस ये गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव की इच्छा होगी, हो जाएगा। ये है ना, जैसे नानी से नानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधे मिले मारे दो दो लात। तो चक्षु जी के पास मैंने ये गुण सीख लिया, अच्छी इच्छा कर लो, गुरुदेव सफल कर देंगे। तो मैं उनके सामने ही इच्छा कर लेता हूँ अभी। इनके वाइब्रेशन से आप हमारे पास आ ही जाओगे फ्यूचर में। वहां पे अभी 11:11 हुई है ना, तो वहां पे इट्स 11 विश जो भी करते हैं वो फुलफिल होती है। तो बिल्कुल हितेंद्र जी बिल्कुल ने अभी विश की 11:11 पे, वहां के टाइमिंग्स के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और टर्म्स मैं ऑफ आपको, EST। हाँ, और मैं आपको कहता हूँ ये एक नई शुरुआत है। 1111 इज ए वेरी यूनिक नंबर, एंजेलिक सिग्नल। ओके, हाँ, प्रकृति का और चैतन्य का एक बहुत ही यूनिक सिग्नल है। 11 इज 2, अगेन 11 इज 2। तो दो इंसान में शिव और शक्ति का जो तत्व है, मेल एंड फीमेल एनर्जी, पति और पत्नी में भी शिव शक्ति रहते हैं। तो 11 फ्रॉम हस्बैंड, 11 फॉर वाइफ, ये कपल की जो एनर्जी होती है, वैसे साधक साधक में भी होती है। कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसमें जेंडर का, उम्र का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन 1111 इज अ वेरी यूनिक नंबर। अभिषेक, तुमने क्या पकड़ा है यार। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी 2000, 11 फरवरी 2022, उसमें दो दो और फिर 3 बार 2, यानी कि 5 बार 2 होता है, उसका टोटल करो तो 1 होता है। तो उस वक्त पे इस आध्यात्मिक जगत की एक नई शुरुआत हुई है। इसमें हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अगले 20 दिन तक, यानी कि 2 फरवरी से 22 तक ये डिवाइन पोर्टल खुला है गैलेक्टिक लेवल पे, यानी कि ब्रह्मांड में एक ऐसा द्वार खुला है। इस वक्त पे हम अच्छी इच्छा कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसका फायदा होता है। जैसे चक्षु जी ने और आप लोगों ने दिव्य आत्मा अवतरण के लिए अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, अच्छे विचार रखे, तो अभिषेक का जन्म हुआ। वैसे ही यह धरती के लिए एक सुंदर गर्भधारणा का समय काल चल रहा है। इसमें अगर हम शुद्ध इच्छा रखते हैं, जो बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि हम ये करें, हम ये भाव रखें, हम समर्पण रखें, क्योंकि इस भाव से मैं हर सुनने वाले के हृदय और आत्मा तक पहुंचना चाहता हूं, अपने गुरुदेव की साधना को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि इसमें जो संकल्प हो जाएगा और इच्छा हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा होने वाला है। समर्पण का सूर्योदय, जैसे स्वामी जी ने कहा था ना, ऐसे अलग लेवल पे सारे संसार के लिए हो रहा है। तो बहुत सुंदर पॉइंट लेके आए अभिषेक जी। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। अभी पारस जी, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, क्या है नेक्स्ट? तो what is the most interesting अनुभूति you had that you will never forget? कोई ऐसी अनुभूति है जो आप कभी जीवन में भूलोगे ही नहीं? क्योंकि हाँ, बहुत सारी अनुभूतियां हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जिसको, जैसे वो नारियल खाते हो और दांत में चिपक जाता ना, वैसे आपके आत्मा में, आपके दिमाग में चिपक गया हो ऐसा। बहुत सारी है, बहुत सारी है, और वो स्वामी जी से रिलेटेड है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ और 2 मिनट में बताता हूँ कि जिस दिव्य सुगंध की शुरुआत हुई थी पहली शिविर के पहले दिन से, और मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था। मेरे सभी तर्क भी पीछे छूट गए थे और भाव की वृद्धि हो गई थी। वो अनुभूति पहली, ये दिव्य सुगंध की, वो सुगंध बार बार आती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 2005 में महाशिवरात्रि से रामनवमी के बीच मेरे भीतर से वो सुगंध उठनी शुरू हो गई थी,
और वो फिजिकल बॉडी से जैसे निकल रही हो, क्योंकि आसपास के सब लोग उसे महसूस कर पाते थे, सबको वो स्मेल का आनंद मिल रहा था, सभी फैमिली मेंबर्स जो भी मिले, और हर थर्सडे को हो रहा था। तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये क्यों हो रहा है। होता था, अच्छा होता था, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं था कि वो 7 दिन 8 दिन चले। सिर्फ थर्सडे को था, थर्सडे के ध्यान के बाद होता था। हाँ जी, हाँ जी। संडे को सामूहिकता ज्यादा रहती थी, लेकिन संडे को नहीं होता था, सिर्फ थर्सडे को। और वो भी पता चला कि जब तक ध्यान के बाद मेरी निर्विचार स्थिति चालू रहती है, तब तक वो सुगंध निकलनी चालू रहती है। तो धीरे धीरे अभ्यास से वो प्रयत्न करता था कि नहीं, थॉट नहीं लाना है, सिर्फ निर्विचार रहना है, शस्त्र में रहना है। तो धीरे धीरे मैं सुबह ध्यान के बाद 7 से 8 ध्यान किया, तो दोपहर के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वो स्थिति मेंटेन रह सकती थी, निर्विचार स्थिति, और वो सुगंध चालू रहती थी। तो वो मार्च अप्रैल का समय था, तो दोपहर को पसीना निकले तो पसीना भी सुगंधित निकलता था। तो मेरे शर्ट धुलने गया, दूसरे दिन वो लटकता सूखता था धूप में, तब भी उसमें से सुगंध निकलती रहती थी। तो वो हुआ था, और वो 1-1.5 महीने तक वो हर गुरुवार को वो चला था। वो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी अनुभूति कह सकते हैं। इसके अलावा भी काफी अनुभूति थी, कौन सी एक चुनूं, लेकिन ये चुन के मैंने आपको बताया। थैंक यू। जय वसानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बताइए कोई बात। क्या बोल रहे हैं? और भी बहुत सारी अनुभूतियां है हितेंद्र जी, नहीं, हाँ जी, तो हाँ जी। आप बता सकते हो। पापा को बोल रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि फिर से एपिसोड रखेंगे तो खुल के बात कर पाएंगे, ऐसा कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दैट एक्सपीरियंस इज very beautiful, and जो Paras ji is saying about unique fragrance that was coming out on every Thursday. So we believe that Thursday is the day of Guru. That's why it is called Guruvar in Hindi, and he had this divine fragrance coming out every Thursday from morning. And Abhishek, I want you to summarize that experience. मैं थोड़ा शून्य में चला गया था जब ये सब हो रहा था। तो तुम summarize कर सकते हो इंग्लिश में? Same here. I was also in a meditative state, and that's why I said that you must continue with the other anubhutis as well. Right. Because audience is also demanding for the same, and I think that he must continue. Yeah. चलो एक और बता दो। एक तो चक्षु जी already said कि her brother was able to give up his addiction just because of her pure wish, and that we discussed it yesterday. And Papa also said about Nurse Narayan. That was also we discussed earlier. Next one is 2006. While living with brother and family, brother's daughter woke up and asked Swamiji. She says Swamiji in the picture had come and was sitting right next to me. तो वो एक बहुत सुंदर अनुभूति थी 2006 में। मेरे भाई की बेटी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या हुआ था उस वक्त पे? आपकी भतीजी जी, वो भतीजी छोटी थी और सो रही थी, और वो कुछ बाकी लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ उसे सुलाई थी। उसके बाद उसकी मदर गई, तब वो जागी, और जागी या ऐसे ही लेटी थी, जो भी था। और उन्होंने उनकी मदर से वो उस बिटिया ने पूछा कि मम्मी स्वामी जी कहाँ गए? तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि यहाँ कौन से स्वामी जी, किसकी बात कर रही है? तो उसने कहा कि नहीं, वो फोटो में है ना स्वामी जी वो। तो उन्होंने कहा तूने सपना देखा होगा। नहीं मम्मी, मैं जागती लेटी थी, वो स्वामी जी यहाँ पर बैठे थे जो फोटो में है वो। Very beautiful, very beautiful. This is so amazing. के दर्शन भी छोटी सी बच्ची ने कर लिए थे। तो वैसे तो गुरु शक्तियां मौजूद रहते हैं, मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी कोई जो निर्दोष है, अबोधित है, ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को
कभी कभी दर्शन हो सकते हैं। So again, I want to remind everybody in the audience that even one person in the family will start doing meditation. Slowly, because of the influence of the aura clearing up for that person through meditation, entire family will start experiencing this niece of Parasji. She woke up and she's asking her mom that the guru that we see in the photo, he came in our house, he was sitting here. Same thing, Parasji's brother had the experience before also, that Swamiji came in his dream and told him that your brother woke up at night and he is doing meditation. Why you are sleeping? So all these things are not just dream. These are the kind of signal that the guru energy will start influencing the aura in the house, and every soul living in that aura will start feeling that positive energy. Yesterday we also heard how Chakshuji started getting influence, being the YouTube of Parasji as the first person, and then everybody in the family started experiencing also. Very beautiful अनुभूति। पारस जी, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। ना तो मैं, ना हमारी ऑडियंस, ना हमारे वॉलंटियर्स आपको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। तो पारस जी, ये तो सब हुई हमारी समर्पण ज्ञान की, आपके आध्यात्म की और दूसरी सब बातें, लेकिन कुछ अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में भी हमें बताइए। जरूर जरूर। वैसे जैसे मैंने बताया था कि रीडिंग का तो बचपन से शौक था और धीरे धीरे दूसरे विषय छूटने लगे और धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पढ़ने में रुचि ज्यादा रही उसके बाद, तो वो ज्यादातर रीडिंग होता रहा। ये खास करके बात थी। दूसरी बात, मैं जब स्कूल टाइम में था, कॉलेज टाइम में था, तब गाने का भी शौक था। फंक्शंस में गाता था, एनुअल फंक्शन इत्यादि में। और उसके बाद धीरे धीरे प्रवृत्ति में पड़े तो वो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन फिर भी साल में एक दो बार क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स का, हमारे एसोसिएशन का फंक्शन है, तो एक ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक का प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें गाता हूँ। कभी कभी कुछ अच्छा ग्रुप हो, सब एकत्रित हो जाए, तो एक दो बार उसमें गाते, ऐसा चलता है। कुछ ऑर्केस्ट्रा वाला मित्र है तो उनके साथ गाते। और आज तो कराओके की फैसिलिटी हो गई है। तो कभी फ्रेंड्स के साथ घर पे भी गाते हैं, जब बहुत आसान हो जाता है, मजा आता है। जी, क्योंकि संगीत भी एक माध्यम है। उसमें क्या है, परमात्मा का जो विभिन्न स्वरूप है उनमें से एक है नाद ब्रह्म, और कहते हैं कि नाद ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और नाद है जो विचार से मुक्त कर देता है, भाव की ओर ले जाते हैं, तो उसका भी अपना नाद ब्रह्म के रूप में उसका महत्व है। और इसीलिए हमारे भी फंक्शन में एक संगीत का एक पार्ट होता है, रहता है, तो वो भी अच्छी बात है। वो बड़ा विषय है, लेकिन वो भी अच्छा है, तो उसका भी शौक रहा था। ऐसा काफी अच्छी अच्छी हॉबीज है आपको, पढ़ने की, लिखने की, गाने की। अभी एक थोड़ा ऐसे ही मजाक के रूप में बोल रहा हूँ, डांस वांस भी कर लेते हो क्या? नहीं, डांस नहीं जानता ऐसा। हाँ, एरोबिक्स वगैरह कर लेते हैं मेरे साथ। एरोबिक डांस। तो कोई बात नहीं, अभी तेरी शादी में तो हम मम्मी पापा को नचाएंगे ही नचाएंगे। और वो क्या है, अभिषेक काफी समय से मुझे बोल रहा था कि आप ब्लॉग रखिए, और सोशल मीडिया के काफी कुछ है, सबके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन वो सजेशन करता था कि आप उसमें पोस्ट डालिए, आप उसमें लिखिए, इसमें सब कुछ। लेकिन क्या हुआ आखिर में, काफी लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोग मुझे पूछते थे कि आप एंकरिंग जो करते हैं उसकी नोट्स आप दीजिए। मैंने कहा मैं नोट्स ही नहीं बताता। मेरे साथ जो एंकर रहते हैं उनको पता है कि मैं टॉपिक ही लगता हूँ कि इतने बजे गुरु पूजन है, इतने बजे ये गेस्ट आने वाले, इतने बजे सांस्कृतिक है, और कुछ नहीं रहता। तो वो तो उस समय जो भी गुरुदेव बुलवाए वो बोल देता हूँ, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उदाहरण वगैरह देते हैं, तो मैंने कहा एट अ टाइम आते हैं। फिर लोगों ने कहा नहीं, आप लोगों को बताइए। तो फिर वो YouTube चैनल का आइडिया वो अभिषेक ने ही रखा था कि आप YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताइए। तो जो भी इतने सालों से रीडिंग का शौक तो था ही, जो भी जानता था, मानता था, उसमें गुरु कृपा में जब
समर्पण ध्यान में पहुंचा, अनुभूतियां ही आई, तो फिर अनुभूति जन्य एक दृष्टिकोण निर्मित होता है, कुछ संकेत मिलना प्रारंभ होते हैं, तो उसके आधार पर यूट्यूब पे अलग अलग विषय पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहना शुरू किया। तो जैसे भारतीय संस्कृति है, धर्म है, विज्ञान और अध्यात्म है, संतों के जीवन चरित्र है, क्योंकि संतों के जीवन चरित्र है ना, उनके भी जीवन प्रसंग काफी भाव में वृद्धि करने वाले हैं। सही सही है, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ाना वो पूर्ण बात नहीं है, साथ में भाव भी वृद्धि होना चाहिए, तो ही संतुलित हमारी वो विकास हो सकता है, संतुलित वो भाव वृद्धि हमें आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ने में सहायक हो सकता है। तो ऐसे ही विभिन्न विषय को साथ लेकर यूथ के लिए उनको दिमाग में उतरे, साथ में उनको प्रेरित कर सके, ऐसे भी कुछ टॉपिक लिए, भारतीय संस्कृति रिलेटेड, उत्सव रिलेटेड, विभिन्न अवतार रिलेटेड, तो फेस्टिवल्स रिलेटेड, और साथ में हेल्थ रिलेटेड कुछ टिप्स आयुर्वेद के आधार पर, योग के आधार पर, तो ऐसे विभिन्न विषयों में कुछ ना कुछ बात रखते हैं। उसमें भी क्या है, वो धर्म ग्रंथों पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें काफी शॉर्ट करना चाहा, लेकिन भारतीय वैदिक साहित्य बहुत विशाल है, तो शॉर्ट करते करते फिर भी 20 मिनट से ज्यादा चला गया। तो फिर अभिषेक ने मुझे कहा कि नहीं, लोगों की सुनने की कैपेसिटी कम है, तो आप 10-15 मिनट तक का ही बनाइए तो अच्छा है, ऐसा। तो मैंने कहा उसमें ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, फिर भी वो बनाते हैं। फिर 2-2 पार्ट किए कुछ में, तो जैसे गुरु नानक के 2 पार्ट किए थे, शिव तत्व के 2 पार्ट किए थे, कृष्ण पे 2 पार्ट किए थे, ऐसे भी किया। तो देखते हैं जैसे जैसे वो गुरु कृपा में आता जाएगा। आपका देने का भाव है, और आपको बेटा भी ऐसा मिला है जो मदद कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये पूरा समर्पण परिवार मेरे बच्चे हैं, और आपके बेटे को भी मैंने मेरे छत्रछाया में ले ही लिया है। मैं तो सभी बच्चे जो हमारे साथ आते हैं उनको अपने ही बच्चे समझता हूँ, और इन्होंने इतना प्यार और इतना साथ दिया है कि हमें यहाँ पे ये सोल सत्संग चैनल पे ये गुरु कार्य करने को मिलता है। लेकिन मुझे कई सिमिलरिटी आपके भाव में और समर्पण में दिखी जो मेरे अंदर है, और मुझे लगता है कि स्वामी जी ने कैसे हम सबसे जुड़ जुड़ के चुन चुन के निकाला है, जैसे नमूने जैसे लोग हैं सब, और पूर्व जन्म के हमारे कर्म और गुरु के प्रति जो भाव था। और मुझे लगता था, मैंने अपने एक खुद की नोट्स लिखता हूँ, उसमें लिखा था कि मुझे पूर्व जन्मों में स्वामी जी ने वादा किया था कि जब मुझे मिलेगा तो मैं खुद तेरे घर पे आके देके जाऊंगा, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा कहाँ पे भी होगा। तो मेरे जीवन में तो ऐसे ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब हमारा ऋण बनता है कि गुरु दक्षिणा दे, और गुरु दक्षिणा इस गुरु कार्य के जरिए ही दे सकते हैं, जहां पर गुरु का दिया हुआ ज्ञान चैतन्य हम संसार में बांटे। और कई लोग अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं कि पारस जी, आपकी और आपके परिवार की ये यूट्यूब चैनल और ये सबसे तो आ ही रही है बातें, कुछ बुक भी लिखना। मैं भी खुद लिख रहा हूँ, और पहले मुझ में गिल्ट था, सच बोले तो, कि मैं बुक लिखूंगा तो शायद मैं समर्पण के सिवाय दूसरी बातों को भी लिखूंगा तो कहीं मेरे गुरु के चैतन्य का या उनकी परंपरा का अपमान ना हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने मेरे जीवन में आकर जो दिया, अभी आपकी कहानी सुनी, कई साधकों की कहानी सुनी, तो हमारा बचपन ही कई गुरुओं की और देवी देवताओं के आशीर्वाद से बना है इस आध्यात्म के मार्ग पे। तो अगर उस मार्ग पे हम चल बसे हैं और आगे आए हैं उनकी कृपा से, तो हमें कोई ऐसा लघु ग्रंथि नहीं रखनी चाहिए। वी शुड नॉट कीप एनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की माय गुरु विल बी ऑफेंडेड और ही विल फील बैड। We can accept and respect every guru शक्ति। वो हितेंद्र जी क्या है कि गुरु तत्व एक है, शरीर अलग अलग है, तो मुझे वो कहा कहीं पे डिफरेंस ही नहीं लगता। सब गुरु हमारे गुरुदेव के साथ ही है, भूतकाल में हुए वो भी उनके साथ है, भविष्य में होने वाले हैं वो भी उनके साथ है, वर्तमान गुरु में मौजूद है। और हम नमस्कार भी ऐसे ही करते हैं ना, सभी भूतकाल के गुरुओं को नमस्कार, भविष्यकाल के गुरुओं को नमस्कार, और वर्तमान के जो माध्यम है गुरु उनको नमस्कार। और आपने अगर सुना होगा ध्यान से तो आपको पता चला होगा, जो भी सुनते हैं, कि चाहे मैं भूतकाल के गुरु की बात करूं, लेकिन उनमें संकेत है, वो वर्तमान समर्पण का संकेत मिलेगा ही मिलेगा, उसमें इशारा बिल्कुल 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 मिलेगा ही मिलेगा। स्वामी जी की कहीं ना कहीं बात जोड़ के वो रिलेट करके, चाहे स्वामी जी का नाम दिया हो ना दिया हो, लेकिन मैसेज उनके मिलेंगे, उनके जीवन से, उनके उदाहरण से। ध्यान से जो भी सुनेगा
बिल्कुल तो बिल्कुल। और पीछे स्वामी जी, बैक ऑफ माइंड उनके समर्पण का थॉट्स, वो सिद्धांत वो चलते जाएंगे। और ये यात्रा अभी भूतकाल के गुरुओं की चल रही है, भूतकाल से गुरुओं से वर्तमान गुरु तक आएगी ही आएगी, यही उसका एक आपको लेकिन मैं ये बता शुरुआत दूं, आपको मैं ये जी बता दूं, दिस इज समर्पण, ये वर्तमान के गुरुओं की ही कहानी है जो आगे चल के भूतकाल बनने वाला है। हम जी स्वामी सही जी के बात है, कहने के सही हिसाब बात से, स्वामी जी के जी कहने के हिसाब से हम सब, कई आत्माएं ऐसी है जो योगी थे, तपस्वी थे, साधु थे, जी या ऋषि जी पुत्र थे, ऋषि पुत्री थे, सही बात वो सब आए हैं इस मार्ग में। और जो हम वर्तमान में रहना सीख गए और शून्य बनते गए, तो उस चैतन्य के सागर में मिलते ही गए ना। और सबसे जी सही पहली बात तो स्वामी जी ने यही सिखाई है हमको कि जी हमें शून्य बनकर उस चैतन्य में आगे मिल जाना है। बस तो सही बात है, सही बात बहुत ही सुंदर हो रहा है आपके जरिए ये कार्य, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी थैंक यूट्यूब यू चैनल, ये सोल सत्संग यूट्यूब चैनल, और आगे आने वाली कई अलग अलग ब्लॉग और मीडियम्स जो हो रहे हैं जी वर्तमान के हिसाब से। तो स्वामी जी का कहना ये था, वर्तमान का गुरु वर्तमान के स्थान और समय और हालात के हिसाब से बोलेगा और देगा। तो जी आप वह माध्यम बन रहे हो, हम वह माध्यम बन रहे हैं। जो स्वामी जी के जमाने के गुरु थे, वो अपनी तरह से घूम घूम के, फिर फिर के पर्सनली देते थे। जी फिर स्वामी जी ने ऑडियो कैसेट किया, वीडियो कैसेट बनाया, फिर ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए। तो स्वामी जी ने एक शब्द भी कहा था, हमें याद होगा तो, कि हम साइंटिफिक एज में आए हैं, विज्ञान के युग में आए हैं। तो वी हैव टू राइड द चैरियट ऑफ साइंस, and we have to cross this ocean of Bhausagar, and we have to make sure that we go across this ocean. We become liberated, and we take more and more people in our boat, in our ocean, in our chariot, so that we all travel together and enjoy the ride. तो हमें वो करना है। और आप सब जैसे पवित्र आत्मा आते हैं और अपना चैतन्य बांटते हैं, पूरे खुले दिल से बांटते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात आपके परिवार में ये लगी, कोई कंडीशन नहीं है, पूरा समर्पण है, और खुले दिल से आप बात करते हो, तभी आपसे इतना चैतन्य बह रहा है और लोग डूब जाते हैं। तो जब ऐसी आत्मा से मिलते हैं ना, तो लगता है मैं स्वामी जी और गुरु माँ को मिल गया, और स्वामी जी और गुरु माँ को तो मिल ही गया, परमात्मा से मिल गया। तो ये आत्मा से आत्मा का मिलन, ये आत्मीयता की यात्रा, यही गुरुदेव का सबसे बड़ा प्रसाद है समर्पण परिवार और मानव जाति के लिए। धन्यवाद। जी आगे। अच्छा, तो अभी ये आपकी YouTube चैनल की हमारे बच्चों ने एडवर्टाइज बनाई है, आपने देखा ही होगा पहले। लेकिन जी देखिए बहुत अच्छी तरह कितना सुंदर वीडियो बनाए, जितने गुरुओं के बारे में आपने कहा ना, वो सब आ गए हैं जी यहाँ पे। जी जी And we बहुत encourage अच्छा our audience to subscribe for this channel and enjoy more of the Chaitanya from Parasji. Learn about different Guru Shakti. तो संपूर्ण श्रेय गुरुदेव को है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु शक्ति है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। और गुरु तत्व का प्रवाह निरंतर चलता आ रहा है, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। विभिन्न देश में, विभिन्न संस्कृति में, विभिन्न स्थान पे, विभिन्न भाषा में, उस समय की आवश्यकता के अनुसार गुरु तत्व ने देह धारण किया, किसी देह को माध्यम बनाया और उस समय के लोगों को मार्गदर्शन दिया। परमात्मा की जो अनुभूति प्राप्त की, तो उस अनुभूति के अनुभव बताए, परमात्मा के संदेश बताए। बाद में वही गुरु सदगुरु के रूप में माने गए, परमात्मा के संदेशवाहक के रूप में पूजे गए, अवतार के रूप में पूजे गए, भगवान के रूप में पूजे गए। कितना सुंदर वीडियो है, और ये आपका ही है। स्वामी जी कहते हैं ना, तेरा तुझको समर्पित, आपका ही आपको समर्पित करके ये भेंट दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु की बहुत कृपा है आपके और आपके परिवार के ऊपर। बस ऐसी ही कृपा
सभी दर्शकों के जीवन में उनके साथ, उनके परिवार के साथ भी रहे, इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रोग्राम के लिए मैं सोनल जी और टीम को सुपुर्द करता हूँ। जय बाबा। एक क्वेश्चन बाकी रहा। 2 क्वेश्चन और है। अगर समय का बंधन नहीं है जैसा आपने कहा, और आपके शब्द आज स्वामी जी के थ्रू निकले हैं, तो आपने 2-3 बार स्वामी जी ने आपसे बुलवाया है कि देयर इज नो टाइम लिमिटेशन, हम दूसरे ही प्लेन पे हैं आज। तो अगर अभिषेक जी को भी ठीक है और आपको भी ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन और आप आंसर कर दीजिए उनको बुलाने के पहले, क्योंकि Sonal ji, I am perfectly fine with it. हाँ, Is audience okay with that decision? यस यू वोंट बिलीव कि हमारे व्यूअरशिप इंक्रीज हो रही है एज टाइम इज हाँ, गोइंग। वो मैं देख रहा हूँ। वो दोनों Zoom पे और इधर तो, और हमारा सेशन यूट्यूब पे रहेगा, तो जो लोग अगर समय के बंधनों से या पर्सनल कारणों से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी लाइव सेशन, वो बाद में इसका चैतन्य का लाभ ले सकेंगे। तो ये क्योंकि आज हम जो सीख रहे हैं बहुत ही हमारे लिए भी, बैक स्टेज टीम सारे गुरु कार्य के जो करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें हम नोट्स बना रहे हैं कि आगे हम यूज कर सके। तो बस ये 2 क्वेश्चन और पारस जी, और उसके बाद फिर हम अभिषेक जी के साथ धमाका करते हैं। ओके फिर। Sure. तो अच्छा हुआ मैंने सोनल जी को बीच में इनवाइट कर लिया, क्योंकि एक अपडेट मिल गया हमको, क्योंकि हम सब जीरो हो जाते हैं जब कार्यक्रम में होते हैं। तो इट इज गुड थिंग। तो पारस जी, ये प्रश्न अगला जो है वो इस प्रकार से है कि समर्पण ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और पहले कुछ हो रहा था, पहले कुछ, क्योंकि आपका तो इतना सारा ज्ञान है, इतनी सारे, आप तो शिक्षक यानी कि गुरु ही थे, तो लोग आपको बहुत ही आदर भाव से और उससे देखते थे। तो थोड़ा हमें बताइए पहले क्या था, आगे क्या हुआ। जी, वो क्या था कि समर्पण ध्यान में मैं 2001 से जुड़ा, लेकिन क्या था कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे, वो काफी स्टूडेंट्स, वो मेरे साथ, मेरे प्रति एक बहुत अच्छा भाव रखते थे। वो भी मेरे साथ मेरे परिवार जैसे वो इस तरह से घुलते मिलते थे, और वो मेरे लेक्चर्स वो रिकॉर्ड करते थे। जैसे मैंने कल बताया था, मैं जो भी बोल रहा था वो रिकॉर्ड करते थे कि सर ऐसा हमें कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है, तो विविध विषय के लेक्चर्स वो टैप करते थे। फिर मैंने सत्कारेश्वर महादेव करके एक टेम्पल है, वहां पर भगवत गीता पे हर मंडे को भगवत गीता पे प्रवचन देने शुरू किए थे। तो वहां पर भी वो सुनने के लिए आते थे। मैं ध्यान करवाता था कि जिनको इंटरेस्ट हो आए, मेरे घर पे वो ध्यान करने के लिए भी सब आते हैं। तो उन लोगों ने कुछ 97, 98 के आसपास मेरा गुरु पूर्णिमा पर आ गए गुरु पूजन करने की। मैंने उनको मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं बस आपका मित्र हूँ, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लेकिन उनका भाव था और उन्होंने एकदम आग्रह रखा और गुरु पूजन कर ही डाला ऐसा। फिर मैंने सोचा कि ये लोग करते हैं, फिर भी मैं उनको मना कर रहा था। फिर मैंने उनको रोकने का प्रयत्न किया, उन्होंने 2-3 साल ऐसा किया। फिर क्या हुआ कि 2001 से तो मैं समर्पण ज्ञान से जुड़ गया, और मैंने वो बंद ही करवा दिया था वैसे भी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ कुछ तो नहीं, हमें करना ही, आप हमारे गुरु है। तो 2001 से तो क्या हुआ कि मैं ही खुद गुरु पूर्णिमा में जाने लगा। तो घर तक आते थे और वापिस जाते थे। फिर क्या हुआ, मेरा एंकरिंग शुरू हुआ, तो वो लोग गुरु पूर्णिमा के लिए, नमस्कार के लिए, वंदन के लिए फोन करते थे, लेकिन मैं स्विच ऑफ रखता था। पता था कि इन लोगों का फोन आएगा, और वैसे भी साइलेंट नहीं रखना था। तो ऐसा, लेकिन कुछ गुरु कार्य वजह से वो जो ट्रस्टीज हमें कुछ मैसेज देने के लिए, तो फिर साइलेंट में रखा। लेकिन उन दिनों में मैंने बता दिया कि आप फोन भी मत कीजिएगा, मैं कार्यक्रम में रहता हूँ, मुझे अनाउंसमेंट करना है, उसमें आपका भाव अच्छा हो, वंदन करते हैं, लेकिन वहां पर संचार में डिस्टर्बेंस हो सकता है। सही है। तो फिर वो एकदम ही बंद करवा दिया। और वो क्या था कि 2001 की जो 30 दिसंबर की शिविर थी, उनमें भी मेरे कुछ स्टूडेंट आ गए, जुड़ गए, अच्छी तरह से जुड़ गए। आज काफी स्टूडेंट्स अलग अलग सिटी में है,
लेकिन कहीं ना कहीं वो समर्पण ध्यान से जुड़े हैं, समर्पण ध्यान करते हैं, उनको भी अच्छी अच्छी अनुभूति आ रही है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने तो अपना घर का एक पूरा हॉल बनाया, अरे वाह। बड़ा हॉल बनाया हाँ। और स्थायी सेंटर के रूप में दिया, स्पेशली ध्यान करने के हेतु से। और इंडिया में तो ये बड़ी बात हो गई कि कुछ 2000 स्क्वायर फुट का हॉल बनाया और उसमें बहुत। 6 एसी लगवाए, साधकों को गर्मी ना हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। उसका मेन पर्पज ये था। तो इस तरह से तो काफी ऐसा है। और मेरे जो भी रिश्तेदार थे, मैं इच्छा करता था कि सब लोग ध्यान ग्रहण करें तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। पहले मैं स्वामी जी के विषय में, समर्पण ज्ञान के विषय में बताता था, लेकिन उससे भी ज्यादा भाव करता था कि ये लोग ध्यान अपनाएं। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, मेरे पिताजी के पक्ष में, मेरे माताजी के मायके से, या फिर मेरे ससुराल में से जितने भी रिश्तेदार थे, कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो समर्पण ज्ञान से जुड़ा ही जुड़ा। और बहुत उन सुंदर। लोगों को भी बहुत लाभ हुआ, उनको भी अनुभूतियां हुई और काफी अच्छा ऐसे चल रहा है। और मेरे स्टूडेंट्स जो आते थे वो गीता प्रवचन सुनने के लिए, स्वैच्छिक रूप से, उनके सिलेबस के पाठ के रूप में नहीं था। लेकिन जब मैं सापुतारा गया प्रचारक शिविर में और वापिस आया, तब से कुछ स्टूडेंट्स ने फील करना शुरू कर दिया कि सर आपके प्रवचन की क्वालिटी बदल गई है। मैंने कहा यानी क्वालिटी बदल गई यानी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उनमें से कुछ हीलर्स भी थे, प्राणी हीलिंग सीखे थे, रेकी सीखे थे, जो तो वाइब्रेशंस बहुत बढ़ गए। आप बोलते हैं तो पहले से भी ज्यादा वाइब्रेशंस बढ़ गए और हमें सुगंध आती है। आप जब बोल रहे थे तब हमें सुगंध आती है, बहुत ऐसा। सुंदर। तो उन लोगों को भी ये फीलिंग शुरू हो गया और वो भी धीरे धीरे साधक बन गए, और कुछ ऐसा। साधिका ने अभी भी, जब आपने ये अनुभव शेयर करना शुरू किया, लिखा है कि जी सुगंध आनी मुझे शुरू हो गई। अभी भी जी ये प्रवचन के दरमियान भी यही जी। दर्शाता है कि आपका आत्मा कितना पवित्र है और आपका देने का भाव कितना शुद्ध है। नहीं, तो जो भी है गुरुदेव का है, जो भी है गुरुदेव का है। एनर्जी भी है तो वो गुरुदेव की है ना, अनुभूति तो होती है तो गुरुदेव करवाते हैं, हम कुछ नहीं है। मैं जी बार बार कहता हूँ कि गुरुदेव नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बीजों को वृक्ष बना चुके हैं। जिन साधकों के दिल में सच्चा भाव, समर्पण और आत्मीयता है, ओपन माइंड है, वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। जिनमें नहीं है, वो तो फिर बुद्धि के तर्क पे, विचार पे वहीं के वहीं रहेंगे और उनको उसी स्तर की ज्ञान भी मिलेगी ना, ऐसा नहीं है। सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो ही रही है, किसी भी स्तर पे हो, लेकिन हम जितना भाव रखेंगे उतना हमें उसका फायदा होगा, यही भी कह सकता हूँ। ये अनुभूति का आनंद जो है वो भी भावनगर का प्रवचन था। इसीलिए खास मैंने रखा वहाँ है। मेरी मेरी गुलिस्ता पूरी। ग्राउंड में था। हाँ और उसमें क्या था कि उसमें एंकरिंग में मैंने ज्यादा ही बोल दिया था, यानी ज्यादा समय ले लिया था, ऐसा। हाँ, तो वहीं पे फीडबैक आया था। और फिर स्वामी जी का शुरू हुआ था, तो फिर पता चला, मुझे समय का पता ही नहीं चला, ऐसा। वो इतने सारे कार्यक्रमों में जो जहां पर मेरा एंकरिंग रहता है, इसमें हाँ। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे समय का पता नहीं चला और सचमुच में ज्यादा बोला। स्वामी जी भी आ गए थे, ऐसा। लेकिन बाद में पता चला कि वो स्वामी जी की इच्छा ही थी, स्वामी जी की इच्छा ही थी। और स्वामी जी वैसे भी कम बोलना चाहते थे, हाँ। इसलिए वो ज्यादा बोला गया। लेकिन आ, वो उसके बाद पता चला कि स्वामी जी नहीं बोलना चाहते थे, कुछ जो भी था उसका रीजन अभी नहीं, लेकिन कम बोलना चाहते थे। लेकिन फिर भी स्वामी जी भी 2 घंटे बोले, ऐसा। और सबने बहुत अनुभूतियां प्राप्त की और अनुभूति का आनंद ये कैसे तो बहुत बहुत अच्छा। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। So I want to tell our audience, I probably did not translate that part of Parasji's comment. Anubhuti ka anand is the joy of experience. Can you put back this same screen? Joy of experience. You can go back Anubhuti ka anand slide. This is the discourse given by Swamiji in the same city of Bhavnagar where Parasji lives. And on that day, Parasji said that probably I took longer time than what I should be taking because Swamiji was already on the stage and I was still not able to stop what I had to say. But in fact, it was Swamiji's wish. Swamiji told him that I wanted to speak less today. Again,
in the previous explanation, there are some sadhaks who were giving the feedback that your anchoring is beautiful, but sometimes you are taking more time. You are giving longer comments or longer information. In fact, this is Samarpan also get that kind of comments for Hitendraji. Nothing to worry. We are used to it that. Uh, I tell you one more story जो on कुछ एक the गुरुदेव का है. हाँ, तो हम पहले तो सोचते ही नहीं है और सोच के बोलते ही नहीं है. जो हृदय से निकलता है वो अपने आप बोले जाता है. So we speak from the heart chakra, and heart chakra does not go in the walls or in the time limits. Heart chakra flows like a river that is flowing from the mountain to the ocean without any borders. So that is what we all want to become one day: timeless, thoughtless. Uh, so don't worry, Parasji, I can understand and I can connect with you on that point. Another thing that we can go back on the previous question part. Parasji, he had his students because he was a professor, and those students were they started considering and revering him as guru before Swamiji came in his life. Between 1997 and 2000, they were doing the Guru Puja of Parasji as their own guru. But from 2001, when Swamiji came in his life and started becoming anchor for Swamiji's program, he made them totally stop it. In fact, he told them from the beginning that please don't consider me guru. I'm just your friend, or I'm just a mentor, not the guru. But it was the bhav or the love of those sadhaks. And today I believe that Swamiji's Guru Tattva, the element of Guru, the light, the Chaitanya, the consciousness, has been flowing through the sadhaks like Parasji. And last month also we had Prabhakar Sharmaji, we call him Prabhuji, or Sri Vishweswaranandaji. They became like Guru. People do research. When the inner soul become giant in Chaitanya, when inner soul become very pure and enlightened, automatically people who come across that soul will bow down. It is not the person, it is not the root, it is not the knowledge or education or title of that person, but it is the Chaitanya that make other people bow down to them. So Parasji, agar कोई आपको गुरु माने और आपके सामने झुकते हैं, तो उसमें हमें कोई दुनिया की कमेंट्स और नेगेटिव अटेंशन की बात नहीं है. इसमें हमारी आत्मा की स्थिति और गुरु की कृपा की बात है. मैं ये मानता हूँ. तो हमारे हृदय से भी आपकी आत्मा को बहुत बहुत वंदन, और हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा के जरिए कई लाखों करोड़ों हजारों आत्माओं का कल्याण हो, और ऐसे ही गुरु कार्य के लिए गुरु शक्तियां आपको माध्यम बनाते रहे. यही हमारी प्रार्थना है. बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी. मैं आपके भाव का भी आदर करता हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैं मेरी ओर से ऐसा मानता हूँ कि मैं एक सुपात्र शिष्य बन सकूं तो भी बहुत है, और गुरु कृपा में शिष्य बन सकूं. सच बोले तो पहले हम सबको सुपात्र शिष्य ही बनना होता है, क्योंकि आप सुपात्र बन गए तो पात्र से फिर बहता है. ये बात है. लेकिन you also mentioned कि Saputara Pracharak Shibir, the promotional workshop, brought an amazing change in the vibration and energy, because after that people started experiencing the beautiful vibration when Parasji was talking, and they also started smelling the beautiful fragrance while Parasji was talking. So this is the practical experience that the Chaitanya is not intellectual. The Chaitanya or information is not coming from the brain or intellect or ego. The Chaitanya is coming from the divine. And even today, while we are listening, a sadhika in Canada was experiencing divine fragrance while Parasji was talking about his past experience. So here, this is where we have to understand and believe the difference between the divine consciousness that is flowing by the grace of Guru directly from heaven or universal consciousness or Paramatma. So this is why I encourage everyone to at least experiment Samarpan meditation if you have not started.
आप इस मार्ग पे आइए. Please come and join this path of Samarpan meditation and see how an ordinary person can become soul. Swamiji start with the first journey. I am a pure soul. I am a holy soul. We have been enough of human being. We have been enough of intellectual being. We have been enough of egotistic person. Let us try to become a pure soul with this Samarpan meditation. And that can change our life. And if Parasji can become such a pure medium and pure student, as he says, disciple, how we cannot be such a pure soul and such a good disciple? We can also become that. It is just a प्योर विश दैट रिक्वायर्स एंड प्योर रिजोल्यूशन. संकल्प चाहिए, सब हो सकता है हमारे जीवन में, परिवर्तन आ सकता है. और नेक्स्ट, सो पारस जी कुछ ऐसा हमें देके जाइए जिसे हम वो इमली के बुट्टे की तरह चुसते रहे और याद करते रहे, ये पारस जी ने हमें कहा था और हमें अपने जीवन में उतारना है एक अच्छे शिष्य बनने के लिए और अच्छे साधक बनने के लिए. तो आप हमें गाइड कीजिए कि क्या याद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए गुरु कार्य में, हम आगे अच्छा गुरु कार्य कर सके, एक साधक की तरह अच्छी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ सके. जी, जय वसाई. मुझे लगता है कि मेरी ओर से कुछ नहीं कहना है, वो जो गुरुदेव ने कहा है वही याद दिलाना है. और आप सब जानते ही है कि ध्यान और गुरु कार्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये दोनों साथ मिलकर चले तो बहुत अच्छा है. जैसे एक पक्षी उड़ता है तो उसकी दो पंख होती है, वैसे ही अगर हमें आध्यात्मिक आकाश में ऊंचाई तक पहुंचना है तो ध्यान और गुरु कार्य रूपी दोनों पाक साथ साथ में पैरेलल चढ़नी होनी चाहिए. और दूसरी बात, भीतर से एक गुरु प्रति जो भाव है उसका आदर्श उदाहरण स्वामी जी है. स्वामी जी ने कहा ना कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है. ये जानते हुए भी मैंने गुरु को परमात्मा माना क्योंकि विश्व चेतना मुझे वहां से मिलने के लिए उस माध्यम को अपनाया. तो मैंने विश्व चेतना तक पहुंचने के लिए उसी माध्यम को परमात्मा माना. तो ये जो भाव है अपने गुरु को साक्षात परमात्मा मानना, ये जानते हुए भी कि कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि स्वामी जी ने ये चाबी दे दी. और सिर्फ स्वामी जी ही नहीं, लेकिन वो जितने भी साधक है उन सभी के भीतर वो स्वामी जी का अंश है. उनको देखना, उनमें स्वामी जी का दर्शन करना, मुझे लगता है कि सभी ओर से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे. तो सूक्ष्म शरीर व्याप्त है पूरी सृष्टि में, सभी साधक में भी है और उनका अंश हमारे भीतर भी है, जैसे सब साधकों भीतर है. तो अंदर भी गुरुदेव, बाहर भी गुरुदेव, कण कण में, खट खट में व्याप्त हो. उनके साथ हम कब विलीन हो जाएंगे पता नहीं भी नहीं चलेगा. सिर्फ जरूरी है समर्पण भाव, और समर्पण भाव के साथ ध्यान और गुरु है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So very beautifully said. What Parasji said is, if you want to fly in the sky of spirituality, like a bird, you need to strengthen your two wings. And those wings are first wing of personal and collective meditation, and second wing of Guru Karya, or passing down what you learn and what you earn in this spiritual journey. So that is two things: Guru Karya, or serving the humanity, serving the Samarpan organization and the members who are benefiting from the Samarpan meditation, and strengthening our own soul through meditation. Second thing he said is, like Swamiji, we have to remember and learn to surrender to your Guru as he is the ultimate Parabrahma. He is the ultimate Paramatma, or universal consciousness. When you start having that vow, automatically
that Chaitanya start flowing from the universal consciousness to you. We know that Guru is a perishable, non-transient, like transient being. He is a physical body. He is not permanent. But because we start believing that he is my medium for Paramatma, he become a bridge to bring that universal consciousness from the space, from the cosmos on the earth. And third thing, Swamiji also told, and Parasji also said, Guru is not a person. Guru is collectivity of soul. Guru is Shakti or consciousness. When we start seeing in every human being, in every disciple, our own Guru, we will start loving them. We will start respecting them. We will start being kind and generous to them, because we will never be disrespectful to our Guru. The same way we will never be disrespectful to any sadhak. When we see this kind of change in our attitude, you believe that Guru has blessed me. You believe that I have started becoming part of that heaven that my Guru wanted to create. I am becoming the real fulfillment of my Guru's dream, Vasudhaiva Kutumbakam. This entire world, this humanity is my family. So that is the beautiful thing. And if you go to the question, आपने मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में भी कुछ कहा था कि Ayurveda is this science which is combination of mind, body and soul. Yesterday we covered that part also. And there is a life not just between birth and death. There is a life before and after death also. That is the life of soul. Okay, so soul is longer than what you can imagine or understand on an intellectual level. And we need to get out of the birth and death of a physical body to attain the moksha through yoga. And yoga is not just limited to asana or pranayam. Yoga is also up to dhyan and samadhi. So that was the summary that you gave. And क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, सिर्फ प्यार है. हम तो प्यार करते हैं, प्यार देते हैं. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी, जय बाबा स्वामी. ચક્ષુબેન, મજા આવી ગઈ હા તમારી સાથે ગુજરાતીમાં વાત કરીને અમને. મને પણ બહુ મજા આવી. યા, અને તમે આવ્યા અમારા પ્રોગ્રામમાં એ સૌથી મોટી આનંદની વાત છે, કારણ કે હું હંમેશા એવું ઈચ્છું છું કે એક સાધક ત્યારે નથી બનતો કે એની પાસે ગુરુ મળી ગયો કે એને સાધના ચાલુ કરી. એક સાધક ત્યારે બને છે, જેમ એમણે કીધું ને, એક આદર્શ શિષ્ય બનવું છે મારે, પારસભાઈએ કીધું ને, કારણ કે એના બાળપણથી જ આ યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ હોય છે. જેમ આપણે અભિષેકની વાત કરી, તમારી વાતો કરી, આપણા જે સંસ્કાર છે એની વાતો કરી. આઈ થિંક it is very important for everybody to understand from this is Samarpan, the way we are presenting the story from childhood till end of present time, how one evolves through different experiences from parents, from life, from education, from professional life and family life as a husband and wife and everything. We grow and mother or woman has a very big role. इसलिए आपको हमने स्पेशली बुलाया. पारस जी के मुंह पे जो रौनक है ना, वो 10 गुना हो गई, क्योंकि आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम में कभी कभी उनके हाथों पे प्यार से गाल पे थोड़ी तकलीफी लगा दी. तो ये देख के हमको बहुत प्यारा और क्यूट लगा. हमारी ऑडियंस भी ये महसूस करती थी कि कितना प्यार है इतने सालों के बाद भी इनके बीच में. ये हमें बहुत प्यारा और अच्छा लगा. थैंक यू. जय बाबा स्वामी. सोनल जी, आपकी टीम को दे रहा हूँ, आप आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को. Yes, they are ready. Zurika, kindly share the screen and Darshana is ready to announce. It's set to go. Dara, can you please tell us all about the upcoming events? Hi, Jai Baba Swami, everyone. Such a lovely session. It's so amazing to hear all these wonderful and mesmerizing anubhutis. If you want more sessions as such, but for you, this is the right place for you.
Here's a very exciting opportunity for middle schoolers all across the globe. This youth workshop will be next weekend on February 19th at 12 p.m. EST. We will be discussing about how you can calmly and effectively achieve your goals now in order to better prepare yourself for your high school and college career with the help of Samarpan meditation. Make sure to tell your nieces, nephews, sons, daughters, and anyone you can think of that can benefit from this to join us so they can discover their inner spark at the perfect age. Can't wait to see you all there. Thank you. Jai Baba Swami. Thank you so much, Dara. I would like to invite Palka Aunty to give us instructions about next events. Jai Baba Swami, thank you, Darshana. We are so thankful that this program is being organized for us, because I'm thankful to all the back stage team also, because they are working so well to get this program done. And today though we got double buy one get one free from Hitendra Bhai. So much of knowledge and so much we don't want to move from here. So thank you so much, Parasji. તમારા તો અમે વિડિયોઝ દરરોજ જ જોઈ છે, બહુ સરસ હોય છે. Thank you. અમને એવું લાગ્યું તમે અમારા બધાના ઘરે ગ્લોબલી આવીને વાતો કરી ગયા, એટલું સરસ લાગે. અમને ત્યાં જોયા હતા સ્ટેજ પર બાજુમાં બેસીને, મેં કીધું હિતેન્દ્રભાઈ આવું જ વાત કરો, સેમ વાત કરે છે એવી જ. એટલે આજે તો બે સાથે પારસમણી ભેગા થઈ ગયા, એટલે બહુ મજા આવી ગઈ. જય બાબા સ્વામી. So the upcoming program is a soul bonding session that our American Samarpan Americas are organizing, and it is on 26th February at 10:30 EST time. This time it is going to be very special because the West Coast area is really progressing in Samarpan this year, and we are very excited because all the registration that have come are all from the West Coast, and because Hitendra ji had just visited them all, they have lot of anubhutis to share. So don't miss it. Please all mark your calendars for February 26th, 2022 at 10:30 a.m. Thank you. Back to Darshana. Thank you so much, Palka Aunty. Pranavji, can you please tell us more about the TIS event? Jai Baba Swami, what a wonderful session this is. I'm totally speechless. Let's talk about who is coming next. Now you can just imagine what we are experiencing and what is coming up. Next month, we are going to meet another pioneer who defines the Samarpan meditation as a Samarpan movement and has been deeply involved in spreading the treasure of Samarpan internationally in every possible way. We are really excited to invite Shri Jitendra Patwari ji as our next TIS guest. Just like Paras ji, he joined Samarpan in 2001 Bhavnagar Shibir and became instrumental for the first 8 days Rajkot Mahashibir in 2005 that was attended by more than 60,000 people. Jitendra ji is a renowned metaphysical speaker, life coach from the American Union of NLP, Reiki Grandmaster, and has been in the field of Kundalini, Nadis, and Chakras for nearly 25 years. He is also an author of a book called Chakra Samhita. Apart from his personal achievements, he has been very instrumental in various Gurukari activities, like being an active preacher in spreading Samarpan meditation globally, convener of many Shibirs, Guru Purnima, and other important events. So please save the date for the next TIS session and do not miss this opportunity to progress spiritually. Thank you. Jai Baba Swami. Thank you so much, Pranavji. Krishna ji, I would like to invite you next. Jai Baba Swami, I wish today would go forever and doesn't end this day. It's so nice to be with Hitendra ji and the Bhatt family. We are so much blessed to have you here. We are having a talent show which is coming on 26th March 2022. Swamiji is always with us and showering his grace on all of us all the times. So this is the time for us to say thank you to Swamiji and all the Guru Shaktis by presenting your bow. We are really very excited to bring you the great opportunity to present your bow
for Gahan Dhyan Anushthan or deep meditation practicum through your artistic talent. We will have a virtual talent show on 26 March 2022 at 10 a.m. Eastern Time, 9 a.m. Central Time, or 7 a.m. Pacific Time. We invite all age groups for this talent show. Participation could be solo performances for kids or adults, group performances, or center performances. Registration is open until 6th March 2022. We encourage that you sign up at your earliest convenience to avoid any disappointments as we have limited spots. Please read all the application guidelines carefully before signing up. And thank you for your enthusiasm and all the support. We are looking forward for your creative artistic tribute for this talent show. Jai Baba Swami. Thank you so much, Krishna ji. Now I would like to call Zurika ji to resume the interview. Thank you so much. Jai Baba Swami. Thank you, Darshana ji. And it's such an amazing program and Chaitanya filled Dr. Paras ji's anubhutis. So our next step is that we will be, let me introduce you to our next speaker. And he's Dr. Abhishek Bhatt. He's the son of Dr. Paras Bhatt. He's from Bhavnagar, Gujarat. And he completed his BHMS from Bhavnagar. After securing state rank number 2 in MD entrance exam, he is presently pursuing his MD at Anand Homeopathic Medical College and is serving as a lecturer of the practice of medicine, subject at the same college. Besides that, he has also done MD in Naturopathy and Yoga and holds a diploma in Ayurveda and Panchakarma. He is a national level hypnotherapist, a good anchor, writer, a blogger, advisor, and a youth counselor. He has been invited by many colleges and radio stations for multiple seminars on various topics and has been trying his best to help humanity through these means. He is deeply interested in spirituality. Abhishek is currently 24 years old. He joined Samarpan meditation in 2001 and he was only 3 years old and has been meditating regularly ever since. So let's hear from Abhishek ji and move the, let me unshare this and start Rasika ji to share. Thank you. Jai Swami. Jai Baba Swami, Jai Atmeshwar, Abhishek ji. So the microphone goes to you now. You can come in spotlight. First of all, I would like to thank the entire team for this valuable introduction of mine. So thank you, Jai Swami. This is beautiful. And we always like to remind everyone their childhood, that how they were and what they became today. So this is such a beautiful thing. The hats keep changing as the child was growing. look at this. कितने अलग-अलग तरह की टोपियां पहना रहे हैं ये. और कभी-कभी चश्मे भी बदल देते हैं. But it is an amazing thing to go back in our childhood. Once we had Sohamji from Germany, and he said that, Hitendra, you reminded me my childhood that I literally forgot, because after such a long time, I went back into my childhood and tried to remember certain things with my family, my parents, and try to pull back the pictures also like this, you know. So I think inside we are all always children. Inside there is a child who is alive all the time. And the root for that is what Ayurveda has told us. Ayurveda says that soul is alive before and after birth and death of this body. So that means
जो शाश्वत है, one that is permanent and one that is infinite, is the quality of our soul. And that soul is going to talk today through you with this program, in this program. So let us go and see. I will start diving into the interview itself because people are very curious to learn from you. Please tell us about your education and homeopathic practice, because we have learned a lot of things about your childhood already from your parents. So we want to go back into current things. Okay. So मैंने अपना BHMS यानी कि बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यहाँ Why स्वामी don't you stay in English, because I don't have to translate after. No problem, no problem. So I completed my BHMS from Bhavnagar itself. There's a small village named Sitsar, which is beside Bhavnagar. And there we have one college named Swami Vivekanand Homeopathic Medical College and Hospital. And from that college, I completed my BHMS. After completing my BHMS, I was interested into deeper studies in homeopathy. And because of that, I gave the MD entrance exam named AIPGAT, in which I secured the state rank 2, which even you described in the intro as well. But before that, I would like to say that homeopathy में जाने का जो decision था वो भी गुरुमा का. The decision was of Guruma as well as Swamiji. And since the childhood itself, I was interested into Ayurveda, yoga, and different such holistic approaches. So, जब मेरा 12th का merit आया, when I passed my 12th standard, at that time, the things were such that mom, dad, since I was interested into Ayurveda since the beginning, they wished that I could get admission in Ayurveda also. So when the counseling began, the things were such that the Ayurvedic colleges did not get the permission only. So now what to do? So at that time, I took admission in homeopathy, but Guruma had told since beginning that he was made for homeopathy, and बीच में थोड़ा सा ऐसा भी हुआ था कि MBBS में फिलीपाइंस भेजने का भी सोचा था, but Guruma said that I should not take admission in MBBS even if I am getting admission. It is because I am destined to be a part of the homeopathic practice, and because of that, I took admission in homeopathy, and later on, after completing BHMS, right now I am pursuing my MD degree, master degree in homeopathy at Anand Medical College and Hospital in the Anand city, and I am a lecturer of practice of medicine subject as well. After that, talking about the further studies and the further things which I am doing there is a campaign known as Azadi Ka Amrit Mahotsav. What is that? I will explain in brief. Azadi means freedom. And you know that this particular Independence Day, we are completing 74th or 75th Independence Day of India. So government decided to enjoy or to promote this entire year as Azadi Ka Amrit Mahotsav. So there are various celebrations in different colleges, and each college has to take part in that. Talking about our college, talking about our field, what we have to do, we have to promote homeopathy as well as other sciences, which are holistic sciences. Like Ayush Ministry has given us this wonderful opportunity and this task to serve from the government level. So as a part and parcel of this government campaign, I was invited by various colleges and various schools. So here on the slide, you can see I had given this seminars in, these are the pics where I was felicitated and invited. So these are the pics of Anand Education College, where I was being felicitated. That lady is giving me some gift. And the me in the pink formal outfit are the pics of Anand Law College. So these were the two colleges from where there are various colleges, others also. Like, for example, I was invited in Anand Arts College as well.
this red one, the red photograph of mine in the red outfit was of Anand Education College. The previous slide, which you did, yes. So this is where I'm wearing this red outfit is the photograph of the Anand Arts College, and various other schools also from which I was invited. I was invited in Anand radio station, the Voice of Campus, Anand radio station 90.4 FM, where I talked about homeopathy and where I gave a talk on homeopathy. And it was also relayed and enjoyed by the localites there. So yes, and talking about these colleges, I was also invited in many various schools. I am still astonished by the fact that Guru Kripa kitna kuch karya karwa deti hai, aap samjho. बहुत सुंदर. Madrasa High School. I was invited in the Anand Madrasa High School as well, where their approach was very nice and they were very disciplined, well behaved, and they enjoyed my session as well. I even talked many things about spirituality also, and they accepted it, on a broad aspect. I'm not promoting any religion. I'm not describing about any religion there, but there was a broad, because since homeopathic is a holistic science, we have to talk some things about the soul. We have to talk some things about the energies, and they accepted it at a very big level, and they enjoyed the session. So you can see here the happy and the smiling faces which they enjoy. Yes. So this was some things about my homeopathy. Talking about how I came or how I took admission into homeopathy. Yes, besides that, talking about my other degrees, I've also done MD in Naturopathy and Yoga. In the introduction, it is mentioned, right? So, and I've also done diploma in Ayurveda and Panchakarma. So a part and parcel of that, I was being invited in a lifestyle management conference, which was held for a national conference on lifestyle management by yoga and naturopathy. And as you all know that I am also a national level hypnotherapist. So in the same conference itself, I spoke about naturopathy, I spoke about yoga, I served as an anchor there, and also I gave a hypnosis session where I hypnotized more than 450 or 500 plus audience at a time. And this was I put them into deep sleep and they got perfectly relaxed. They experienced that we got the same refreshing sleep which we get in 6 hours in just 20 minutes. So it was a 20 minutes live hypnosis sleep demo, deep relaxation, where Jay experienced that we got relaxed and we got sleep like that of a 6 hours sleep. Very nice. Yes. So how would you relate hypnosis with the naturopathy or yoga in that conference? See, and this demo which I give is a demo what we call Yoga Nidra. Now you might be knowing that each sound has its own frequency, right? Right. When we talk about hypnosis, many audience thinks that, oh, this is Vashikaran, this is this and that, but that is not that. It is a part of yoga. It is a part of science. There is a deep science involved in it. For example, talking in a scientific way, what is it? See, every sound has its own frequency, and our mind resonates with that frequency. For example, if I am playing a sad song, my mind will have a certain kind of emotions. If I will play a DJ song, my mind will resonate and will start jumping out and start dancing, right? Similarly, if you see a small baby, right? When we speak a lori, when we do that particular sound, the baby sleeps. The baby is not understanding any kind of language at that moment, but still he or she sleeps. How is it possible? It is because our subconscious mind has no language. जैसे कि स्वामी जी बताते हैं कि international sadhaks many a times they come in the sessions. What do they enjoy? They enjoy the gap between the two words which is spoken by Swami ji. वो अंतराल जो होता है उसमें ध्यान लग जाता है, right? So what is that? It hits your subconscious mind. It is at that moment when your brain is resonating with the sound of
that particular speaker, it is resonating at the same level, and you experience a wonderful meditation. Now, the other thing, that there are various kind of logical people. The world is getting more and more materialistic day by day. So Yes. they just ask, how is it possible, right? So the audience here, I would like to ask you a question, and each one who is listening to this particular seminar right now has to answer that in one word. My question is, what is A for? What is A for? Apple. The answer comes apple. A for Abhishek bhi to hota hai, but no, nobody will think about that. किसी ने बहुत सुंदर बताया, A for आत्मा भी होता है, right? तो बहुत सारी चीजें A से होती है. A for apple भी होता है, वैसे ही A for airplane, A for आत्मा, A for Abhishek, बहुत कुछ हो सकता है. But what comes into our picture is A for apple. Now, if we are talking logically, apple was never in this picture right now. Neither you mentioned apple, nor I spoke about apple, but how did that particular apple come into our mind? In spite of the fact that Abhishek is speaking logically, if I speak, I am on the screen, right? A for Abhishek, A for Atma, हम सब आत्मा की बात कर रहे हैं, तो पहले वो चीज भी आनी चाहिए, किसी को आई भी, but majority of the times A for apple ही आया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि apple was fitted into your subconscious mind since childhood. ऐसा भी बोला जाता है कि ज्यादातर ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है. Here we are not talking about the anatomical brain. Here we are talking about the logical, conscious brain, right? So up till 5 years, whatever we are, whatever we behave, it's completely dependent upon our subconscious mind, which we even bring from our past life. Whatever we behave, truly related to that particular. You see, some children will recite shlokas when they are very small in age. Talking about me, the first letter which I spoke was Om. Right? So we only see how is a child's mind. Swamiji भी बताते हैं ना कि बच्चों का वो जो होता है वो एकदम सोलफुल होता है, वो उनका दिमाग एकदम प्योर रहता है, पवित्र रहता है. It is perfectly pure. और इसीलिए वो बाल शिविर भी करवाते हैं. बच्चों पे और युवाओं पे ज्यादा फोकस किया जाता है. Why? It is because up till 5 years of age, a child is not concretized by the conscious mind. Whatever is provided by the parents, by the environment, by the friends around them, he or she accepts it with 100% accuracy. Right. So it is very essential at that particular moment that a true guidance or a true command are given in their subconscious mind. Right. By the parents, by the environment, and there is some spiritual touch at the same moment. Very good. Why I am talking about this is some may be thinking that I am wandering off away from the topic, but no, it's related. I will come to the point. Whenever something is given when we are a child, it accepts purely at 100% because of the subconscious mind, because subconscious mind has no logic of its own. Whatever is given, it accepts. When it was said, when we were younger than 5 years old, when it was said that A is for apple, it was perfectly fitted into our mind that A is for apple, and it is still here in our mind. Similarly, how hypnotherapy works is, when a person is kept on sleep, when I speak at a particular frequency, a mind will absorb that sounds, and it will be like a lori for them, and they will go into that yoga nidra. Yes. They will go into that hypnotic sleep, and after which, whatever I command, I can, we can see. For example, if a person is suffering from depression, he or she is sad, we can tell him that he is happy. Yes. See, we see different seminars, we see even different motivational speakers that speak a lot of things.
They motivate, keep on motivating, right? But the motivation lasts for how many days? For example, if a motivational speaker has said that you should study, you should have your own goal, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, but for how many times, or how much span does it How last? long period you can practice it? For how long does it last, right? It does not last longer than a week. And that's what in Gujarati we say Arambe Shura, right? Many youths are suffering from these things. So my mom used to tell me, તને કોઈ મોટિવેટ છે નું કરી જાતું. And I and dad used to think that motivation is not a bad thing. Like people come, whenever I am having some exams, people come and wish, and they motivate us to work hard. They motivate us to, give our exams better. More. Yes. Mom is like, કોઈ તને મોટિવેટ છે નું કરી જાતું. And I am like, see, people are motivating. They are not abusing me. Why are you speaking in this time? वो मुझे motivate ही तो कर रहे, गालियां तो नहीं दे रहे. So mom is like, no, you be self-motivated. Very important. You don't need any external motivations. Once a person is self-motivated, कहा जाता है ना, अपदिपो भव. Yes. You are the light of your own self. Yes. This is the last statement made Buddha, when he was dying. This is the last statement he made in his life, giving to Anand. When Ananda said that, give us this summary of everything that you learn or you want to tell to your disciples. What will be in one sentence? So the Buddha said, Appadippo bhava. Be the light of your own. Be self-motivated. That is beautiful thing. Yes, and that's what is said in the same Gujarati poetry. Tu tara dil no divo thane. Tu tara dil no divo thane. Ore ore o bhaya. Kodiyu taru kachi mati nu. Kodiyu taru kachi mati nu. Tel divet chupaya. Ere uchi na rahi jase pad chaya. Tu tara dil no divo thane. Ore ore. That also teach the philosophy. Those who don't understand Gujarati, we are all made up of mitti, or the earth or dust. Okay, and Five elements of nature, to be very precise. We will all pass away one day, going back to the earth. Okay, but we need to enlighten ourselves during this lifetime so that our soul will remain in its true form of everlasting infinite life. So that is beautiful thing. Thank you very much. Such a great wisdom. Our audience is appreciating your comments that such a young age you are such a wise soul, and thanks to your parents for inviting the divine souls and giving us the live example here that why Swamiji has brought in Garbhadharana Sanskar in Samarpan family, and why he has dedicated his entire life to his gurus to invoke these Garbhadharana values for the future generations of young parents, because we are witnessing that in your story. Or give me 2 minutes. I want to touch base with my Indian audience also. जिन लोगों को ज्यादा हिंदी मीन्स अंग्रेजी नहीं जमती है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही छोटी उम्र में अभिषेक ने काफी पा लिया है. जैसे आपने फोटोज में देखा कि उसने BHMS यानी कि बैचलर डिग्री होम्योपैथी में तो की ही है, अभी मास्टर्स डिग्री भी कर रहा है, MD कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसने योगा और नेचुरोपैथी में भी काफी पढ़ाई की और आगे बढ़ रहा है. उसका जो सम्मान हो रहा है इस छोटी सी उम्र में, 24 साल की उम्र में, यह सोचने जैसा है और हमारे लिए एक आश्चर्यजनक बात है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी सारी बातों का ज्ञान है जो हमें एक गुरु की तरह उपदेश दे सकता है. बट मैं आपको याद दिला दूं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हो, या चाहे जीसस क्राइस्ट हो, वो सब 32 यानी 32 साल की उम्र तक जी के गए और उन्होंने कितना कुछ दिया हमारे संसार को. तो अभिषेक वैसी ही एक मिसाल है, और आपके बच्चे और हम लोग भी ऐसी पवित्र आत्मा बन सकते हैं जो पवित्र आत्माओं को लाने के लिए माध्यम बन सकते हैं. तो we will continue listening to your inspiring
knowledge and stories, Abhishek. Please continue. Yes. So what I was telling was about self-motivation, right? So when a person is kept on yoga nidra, and when we give commands to that person that you are self-motivated, you are happy, you are safe, you are a wonderful soul, you are a pure soul, you are a holy soul. Yes. What Swamiji has said, we have to speak from the inner heart. It should come from a subconscious level, not just an exterior mind. When we say I'm pure soul, I'm a holy soul, it should come from our subconscious level, not just from the logical mind. The same thing when we see there are different kinds of addictions as well, right? Now, whenever we go into the theaters, and typical when we see the Bollywood movies, at that time, the first thing that they show is like cigarette, dhumrapan padega mehenga. I was in a movie at a moment, and when this disclaimer came, dhumrapan padega mehenga, one person says, "तो सस्ता करो ना." So Swamiji बोलते हैं ना कि addictions जो होते हैं, Swamiji has typically said this incidents in he describes in various forms that एक बार उन्होंने कुछ शराबियों की शिविर ली थी तो कुछ ऐसा कुछ हुआ था. I don't understand I don't remember the exact thing, but he says that whenever he says to the drunkards that don't drink like when he says that don't drink wine or don't drink, then this drunkards don't like that decision. But Swamiji has never ever compelled anything. They just say, "Aap dhyan karo, baki sab apne aap chhut jaye." He is right. It is because Swamiji is putting that commands with different language into your subconscious level. You never realize what Swamiji has put in your mind. Absolutely. What beautiful commands he is putting in that antaral. Whenever he is speaking nothing, he is also speaking many things. Even his mere silence is speaking many things, and the silence is spoken by words. Absolutely. At the soul level, at the subconscious level. What we feel. I would like to add one sentence here. Rumi, who is the Turkey fakir, he has said once, the language of God is silence. So if you want to communicate to God, put back all your words and all your prayers aside and be silent. And Ramana Maharshi said the same thing, कि शांत हो जाओ पहले. Don't think, don't speak, don't worry about anything. Just शांत हो जाओ, फिर बाद में बात करेंगे. और आध्यात्मिक प्रगति वहीं से शुरू होती है. जैसे स्वामी जी कहते हैं, फॉर समर्पण मेडिटेशन निर्विचारिता पहली पायदान है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है. However, most of the meditation method in the world says that ultimate is nirvicharita. Here we are talking in a different language, and that is what is next level of spirituality. This is the thing that what Swamiji meant, कि spirituality is also progressing. It is also going on the next level of revolution, rather you will say, spiritual revolution. True. Amazing. Thank you. And what you spoke about nirvicharita, many people, many youth and many of my friends have this question, share that if meditation means having no thoughts, I'm getting thoughts and I'm not able to meditate. At that time, I just say, meditation is not about controlling your thoughts. It's all about not letting your thoughts to control you. Absolutely. It is because many of the times our intelligence is hijacked by the hormones, is hijacked by the environmental decisions, is hijacked by the actions and reactions of the people around us. Whatever we are reacting is based on these things. We are not analyzing if a person is speaking to us something bad or something good, that does not matter. We should analyze, why is he speaking like this? What is he speaking? When is he speaking? Where is he speaking? And how he or she is speaking?
If we go into that depth and if we understand that person from another mindset, from his mindset, by putting our feet into his shoe, we understand that he can be right. And that's what spirituality is. The mere beginning of spirituality begins from accepting that person as a whole. Yeah. However As he or is. she is, Yeah. accept that person. Very true. Very, very true. And in fact, meditation ultimately lead us to that kind of personality. The day Right. we stop being judgmental and the day we let go all the inner programming made by the society or surrounding or family or people around us, then we are going back into our conscious state. That is what it is. That is exactly what Veda or Vedanta has been teaching us. The Vedanta is ultimately about this. So here we are seeing the how you say, the cream, the butter out of churning of all this milk and buttermilk and everything, that how soul consciousness can be developed once you become more focused on the silence, more focused on what is not necessary. This is what Swamiji say कि गुरु पत्थर की तरह सब निकालता रहता है और उसी पत्थर में से मूर्ति बनाता है. तो हमको अपना खुद का मोटिवेशन चाहिए. We need to motivate, self motivation, self love, self respect. This is beautiful. Abhishek, in such a short time you have given so many inspiring words and frozen the mindset of so many who are attending this session at this point. And we want to learn and more things from you. Thank you. So yes, I was talking. You mentioned the significance of Yog Nidra. You asked me the significance of meditation. So this is the answer. That when a person meditates, he or she is self-motivated. When he takes that Yog Nidra, when I give him commands, when he's sleeping in the state of Yog Nidra, whatever, see, his subconscious mind is active. Right now, see, many people would have this kind of doubt that if a person is sleeping, how can his mind be active? But let me give you a perfect example. That, for example, we are sleeping and we are getting a dream. That dream is completely illogical. Let me say, an elephant is coming. He's riding a cycle and coming to us. So elephant is sitting on a cycle, he is riding a bicycle, coming on us. Here we are standing. And suddenly, from nowhere, this elephant would fly and would sit on us. And we feel that we are gone. Right. At that moment, our heartbeats would be tuk, 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 tuk. We will go into that state of tachycardia. And what not will happen? Sometimes we wake up screaming also. Oh, ma, mar gaya. Exactly. That's where I'm coming. That when we wake up screaming, after that, we realize, what did I see? I saw an elephant flying. Well, this was completely illogical. But when you were sleeping, at that moment, you took that dream. You accepted that dream as it was provided. Why? Exactly. During the dream, when the elephant was cycling, your mind did not question yourself that can elephant cycle, can elephant fly? No. Why this thing happens? It is because during sleep, a logical mind is sleeping, is not able to perform logic that why does elephant cycle, does elephant sleep? But yes, our subconscious mind is still active during the sleep. Yes. So whatever subconscious mind has no logic of its own, as I said. So whatever you provide, he or she will accept. So if the elephant is cycling, it's cycling. If the elephant is flying, it's flying. So we can take the advantage of this particular condition as a treatment purpose. That's what I'm doing. When a person is coming with depression, I give him positive commands. When he's sleeping, his subconscious mind is still active. So he will accept those commands. Whenever I say that you are happy, he will accept that, yes, I'm happy. When this particular thing is done in frequent sessions, repetitions of that particular commands, at that time, different kinds of addictions can also be reduced to a great extent. People can be self-motivated. People can use that thing
to uplift its part with spiritual practice also. Osho has said that combine meditation with yoga nidra or hypnosis, you will go to a Yes, great union. very, very true. That is very right. So all these things are very scientific, and I want to comment on that. So in Vedanta, we are told that there are 4 states of consciousness: Jagrut, yes, Swapna, Susupta, and Turiya. So perfect. in the Jagrut state of consciousness, in the awakened state of consciousness, we are of course using a lot of logical mind, but is that logical mind is conscious mind, or it is unconscious mind? It is what I particularly guess is it is pre-conscious, a layer between the conscious and the subconscious. When we throw some efforts, we can remember it, but after a state, we cannot remember that particular thing in detail. See, Right. in sleep also there are various waves, alpha, beta, delta. These are the various states of the brain. Based on that, Right. we have different sleep rhythms. Right. These things can be explained at a subconscious level, as I explained, and these things can be explained in a physiological level also, alpha, beta, delta, gamma, whatever the states are. And depending on that, a person behaves during sleep. For example, a person is sleeping right now. He or she will be aware of the sounds which are going on, which are running into the surroundings. He will be able to listen what people are talking. After a state will come that he is not able to listen anything, but listen a bit of it. Like he will recognize that someone is speaking something, but he will not be able to recognize those words, those exact words which are spoken by the audience around him or her. Very Next nice. state will come. Very nice. Very beautifully explained. I like Next it. state will come where he will be snoring. He would not be aware of anything around him. He will be just into a deep state of meditation. Because I say that Nidra Samadhi Sthiti. Whatever we talk about 8 different limbs of yoga. Yoga is not just asana. Yoga is comprising of 8 different steps. That is Ashtanga Yoga. We'll discuss that later on. But Nidra Samadhi Sthiti is saying when a sleep or meditation is taken into a great deep state of consciousness, we attain that state of Samadhi Sthiti. So, and the last stage is when we are not aware of anything, we just get dreams, but still our subconscious mind is still active. So these are the 4 stages which can be explained in the physiological terms as well. Right. Now, Right. Keep going. Yes. So we were talking about our various things, like I gave this hypnosis demo in national conference, and why I am interested into different sciences. That's also a story that my dad used to tell me that ekah shastra adhidhanam vidya. That was a slok. I don't remember the exact slok. I would like to tell my dad about that. आप बता दीजिए जी आप बता दीजिए जी वो आयुर्वेद का एक रेफरेंस है एक शास्त्रम अधीयानो न विजानीयात् चिकित्सक तस्मात् बहुशास्त्रम शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सक। हाँ, यानी एक शास्त्र अधीयानो सिर्फ जो एक ही साइंस का अभ्यास करते हैं, न विद्या शास्त्र निश्चय, वो उसका सही अर्थ पूर्ण रूप से अर्थ नहीं जान पाएगा। तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम, इसीलिए विभिन्न साइंस का, विभिन्न थियरीज का, विभिन्न शास्त्रों का आपको अभ्यास करना चाहिए। सही है ये, और तब आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। ऐसा सभी एंगल से। Due to this reason, I did not stuck up just in homeopathy. I decided to pursue my knowledge in the different systems of Ayush as well. So because of that, since I was interested into Ayurveda and spiritually since the beginning of my childhood, I even thought that let's do this degree of MD in Naturopathy and Yoga, as well as diploma in Ayurveda and Panchkarma.
Very So beautiful. that's Very what my beautiful. journey is. Now talking about, you specifically asked about homeopathy, right? So I would describe that Four you C's. might be Four knowing that C's. in, huh? I want you to talk about the 4 C's. We have a slide for that. About Yes, homeopathy. yes. So the 4 C's. Should I speak why I came in homeopathy and Right. how I Right. got interested into homeopathy later on? Yes, yes, yes. Please, please. Continue. Haji, Okay. Haji. So talking about why I got interested into homeopathy and what was that moment where I decided that I should only do homeopathic practice, because the sad reality is India is comprising of highest number of homeopaths, but not every BHMS student or not every BHMS doctor is practicing homeopathy these days. Now he or she may have different reasons, and I respect those reasons for the same. I'm not harming any personal choice; it's their personal choice. But talking about me, when I completed, when I completed my first year in 2014, my own grandfather, he suffered from sudden hypotension and he was admitted into a hospital. At that time, in spite of trying all kinds of things, in spite of giving him various kinds of allopathic treatment, the case was such that the blood pressure was not shooting up, temporarily shooting up because of the adrenaline, given that the blood pressure would rise to a normal level up to a few minutes and then for a few hours, and then it will suddenly come down up to this previous stage. So the doctors there were very concerned about him. So at that time, I was saying my dad that let's give him homeopathy. And that particular doctor also said, my dad, he also told my dad that you can give him Ayurvedic medicines if you want. At the same time, my dad asked him that Abhishek is telling since a few hours that we can try homeopathy. And at that time, I was just the first year. I just completed first year. So as a first year student, anybody would have that thought that should we rely upon him or not? And that's logical thought. He was very serious in ICU Yes. and not responding to any. Yes. He was in ICU and I was not responding to any treatment. Talking about my grandfather, the pathology was such. It was very serious. After that, I gave some homeopathic medicine and the blood pressure came back to the normal. But there was one problem. His respiratory center got depressed. So, because of which he was put on a ventilator. Now, the previous patient who was kept on the ventilator had died because of some gram-negative infection. Now, the bacteria of that particular bacteria which I'm talking about are such that in spite of proper sterilization measures, that bacteria would still remain up to a few extent, and then they would replicate and become double, triple, Yes. and quadruple within few hours or few minutes. And so that's what the problem occurred when he was kept on the ventilator. He got that gram-negative infection, and that was a SARS-MARS infection. And the cough, his entire lungs were filled with pneumonic patches with the cough and all. Also, as the respiratory center was depressed, his cough reflex was also not such that he can cough out all the sputum outside. So now what to do? So the doctors there were thinking about some antibiotics. And besides that, he had also developed multi-organ failure. Urinary output was also decreased, and peripheral cyanosis was about to develop. So the doctors there were deciding that we should put a hole, like we should do this tracheostomy and remove all that we should do that tracheostomy and bronchoscopy and like do that drainage procedure. And because physiotherapist also came and like he did that postural drainage procedure, because of which some amount of sputum came out, and that particular sputum was sent for the culture. Now in the culture, it showed that this particular gram-negative strain of bacteria is resistant to all antibiotics, including tigacycline. Now tigacycline is a broad spectrum antibiotic. It's like a brahmastra in medical science. Yes. When the particular pathology is such that even the highest to highest antibiotic is not responding, at that time there was a big team of doctors. There was 2 anesthetists, 2 pathologists,
one physiotherapist, one pulmonologist, one intensivist, two physicians, and two Ayurvedic doctors, my mom and dad, as well as me, a homeopathic doctor, or rather a homeopathic student working in this particular case. Now, the entire team of doctors had said that this particular case is such that in spite of giving proper treatment, my grandfather won't be cured. So let's pray and let's hope for the best. Let Swamiji do something. So somehow Swamiji might have decided that me might have selected me as a medium for that, and because of which I gave some homeopathic medicines, and my grandfather was cured. After Wow. that, this particular entire chain, which I said, big team of doctors believed that homeopathy is working to a great extent. And beside that, I also developed a deep faith in the homeopathic science, and I believed that homeopathy is not slow. So there were different kinds of myths, and you might be knowing that they are still in the society, prevailing in the society, that homeopathy works slowly. Homeopathy, takes time in working, but that's not the case. Homeopathy worked fast at that time, and that was just possible because of the Swamiji's blessings. So It I was thank proof. Swamiji for that. I thank Guru Ma's decision for Putting you in this. putting me into this wonderful holistic field of science. And I Very thank good. both of them. And I even thank the entire team of doctors because they have started referring the cases to me. And I really thank that team of doctors that whenever there is certain kind of pathology, they are calling me. They're even accepted homeopathy for them, for their families. And they are even Wow. insisting other MD allopathic doctors to take homeopathy and promote their system of this system to others as well. So I Such thank a this beautiful, entire team of doctors who helped me to achieve this great success. Thank you for that. such a beautiful example that you gave here, and it happened live in your own family. You had Yes, so that was the many first team of, case. That was the first case of my life that I took, uh, uh, in homeopathic terms, which was because a at life that and death situation, again. life and death situation. That too, see, the situation was such. You might be knowing that there is a saying that a surgeon, the biggest to biggest surgeon, would be able to operate hundreds or thousands of cases, but won't be able to put a scar on his own family. That's what the situation of mine was, because that was the first case of mine. That was as a student. I had not studied that much. Just the first year I completed. I got this first case as a first year student, and that too of my grandfather, and that too a case of IC with a multi-organ fail. Yeah, And it after is that, it is really something. It is, I think, to some extent it sounds and looks like miraculous solution yeah, that you found, but I would say this is where the divine powers and fate works, and this is fully orchestrated show that did not happen overnight. You see, we are talking yes, about homeopathy giving quick results, we are talking about allopathy failing, we are talking about two Ayurvedic successful doctors who yes, were also relying on the faith from the guidance of the allopathic doctors, and one young boy coming who is not even licensed at this point, he is a student only, and giving you the solution or giving you the things. I remember only one thing in entire story, not what everybody have heard or said. I remember only one thing what Swamiji told me in 2001. Don't try to make your children doctors or engineer or big paid IT professional. Let them be what their soul want to be. Abhishek has followed not what his parents wanted, like they wanted him to become Ayurvedic doctor. Abhishek has followed not what uh, other friends wanted to go into medical team, but Abhishek has followed his inner guidance that I want to listen to what Guruma has said. Let me try yes, what my Guruma, my dadi, because Guruma has considered your father yes, as her son. true. What my dadi is telling me, let me listen to that. Listen to your soul. And then Swamiji says, when your son or daughter
will listen to their soul and they will become whatever field they study into. It will be one of the best creation that they are going to make. For example, my kids are working in very creative field. They are being appreciated by their colleagues and professors and friends who are working with them, or managers who are working with them so much today. It is not about money, it is not about title, it is not about position. It is about your soul has come on the earth with very specific purpose. And when that purpose is fulfilled, you become the best in that field. You become the star in that field. And it is our prayer and blessings to you as our own son that आप आगे बढ़िए. आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो. You are telling so many beautiful things, and God has made you such a pure medium. We want you to become the Samarpan star, an example, hero for the rest of the world. That yes, when you practice Samarpan, when you surrender, and when you listen to your inner capacities, this thing happens. But more than that, the Vedic science, the Ayurveda and homeopathy are not this subject to be forgotten. That is the message that I want to take from your what you said. That you studied, but you don't practice, it is of no use. I studied microbiology, I don't practice, it is of no use. Okay, when you practice and when you appreciate what is given to you, it is very important. And that is why you were able to bring such a miraculous result at that time, being in that position. तो आगे चलाइए अपनी स्टोरी. मुझे तो बहुत मजा आता है. So many people ask me that how was that possible as a first year student to handle this particular ICU case. I just say that I surrendered to Swamiji, but still a logical, reason gifted mind won't be satisfied with that answer, right? So they just asked me that without that, how can we relate in general terms? So that's where I developed this 4C theory, which you had been asking me. That what are these 4 C's? Any case can be cured if these 4 C's are perfect. So let's see what are these 4 C's, right? The first C is the chikitsak, which means the doctor. Chikitsak should have trust in himself, as well as the patient should have trust on the chikitsak also. Why is this important? Because while writing the prescription, sometimes a doctor is in dilemma that I'm not confident enough. A patient, while seeking a doctor's advice, is not trusting the doctor. Sometimes patients come with the Google diagnosis and they say, Google madam like you say. Self-inflicted doctors. They just try to check doctors' decisions or doctors' knowledge. No, that's not the case. Second opinion. Doctor, second opinion ले लो, ऐसे क्या आते हैं. हाँ, second opinion. So a doctor should have trust in himself, as well as the patient should surrender himself to the doctor and should believe that whatever doctor is doing, then him or her is perfectly fine for him or her. So that's what the first C, that is the chikitsak is. And even in homeopathy, we have this particular line that the physician's high and only mission is to restore the sick, to help, to cure, as it is termed. The physician's high and only mission is to only cure the patient, not any other thing, not the money, because it will come as a byproduct. Many of the times when we are not acting as a spiritual soul, we just focus on money, and sometimes we even take wrong decisions, wrong advices. Absolutely. But that should not happen. When we have that profession, when we are given that profession, people respect us, and we should have that realization in our mind at the subconscious level, that if people are respecting us, it is because they are considering a doctor next to the God. And that's why the physician's high and only mission should always be to restore the sick, to help, to cure, as it is done, not any other thing. So that's the first C. The second C after chikitsak is chikitsa. As I said, chikitsa, what does it mean? It means that the method of treatment employed for that particular disease. Let's say, for example, in my grandfather's case, it was homeopathy.
So whatever we are studying, right? Now what happens is after completing BHMS, many doctors don't have faith in homeopathy, because of which they start practicing some different system of medicine. That should not happen. If we have studied that, if we don't have that particular faith when we are practicing, how will we be successful, right? Similarly, for example, let's say a person has been cured of this case, तो वो क्या करेगा? वो अपने बगल वाले को खींच के लाएगा कि ये जो डॉक्टर है ना, ये जो होम्योपैथी ना बहुत अच्छी अच्छी अच्छी, खींच के लाएगा। बट जो पेशेंट अभी आपके पास आ रहा है उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं, वो तो सिर्फ उस डॉक्टर उस अपने फ्रेंड की रिलेटिव की बात मानने के लिए वो आ रहा है, तो क्या उसको ठीक कर पाओगे? नो। व्हेन अ पेशेंट इज coming to a doctor, he should have trust not only in the doctor but also the method of treatment employed for that particular disease. He should have faith in homeopathy, let's say Ayurveda, let's say allopathy, whatever the system is, but he should have that faith that yes, whatever this doctor is doing, wo mera acha hi karega. That's what actual samarpan is. Samarpan is surrendering to the person who is restoring us. Right? Yes, very true. The third C is Chetna. Chetna means Vishwa Chetna, that universal healing energy, or let's say a healing power which is present in the universe, which is coming into our body and healing us. Because see, it is rightly said that we doctors just treat the patients, but it is He who cures. Now, what is this He? This He is God. Paramatma. Paramatma. For any religious or spiritual person. For a religious person, it's God. For a spiritual person, it's Paramatma. And for an atheist, it's universal healing energy. Whatever the name. It is nature for the atheist. For the atheist is nature. Whatever you call, they are just different names of the same entity. Right? Whatever the name it may be, but you should have trust on that. And the last and the most important C is Chit, that is the mind, on which Swamiji has been working. Because see, we have a lot of thought pollution these days. Our Chit is weakened by the environmental situations, by the people around us, by the circumstances around us. But we must understand that any problem in our life is just a situation until and unless our mind considers it as a problem. Right? So it is our mind who considers this situation as problematic or not. Right. अब किसी में नेगेटिविटी में चित्त डालने में से प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं. My question to the audience is, have you ever heard that, distance yourself from the negative? Please answer it in the comment section. What would you do when a person says that बहुत negativity आ रही है, बहुत negative ऊर्जा है, we just distance ourselves from the negative? But is it possible 100%? I don't think so. No. Because we are living in a materialistic world. We are living in a place where different mindsets people are there. People may have different mindsets. They have the different patterns. They have different patterns to act and react. How can you expect to be isolated from that negativity? If you distance yourself from that negativity, at the end, you will just be an isolated person. There will be no samvikta at all. Right. That's the sad reality. Because see, negativity and positivity is a subjective phenomenon. It is dependent on our interest. If a person is behaving as per my rules, my ethics, he is positive for me. If a person is not behaving that way, he is egoist, he is negative for me. Right. Even the best advisors, if we talk about history, the best advisors, gurus, were even harsh at some moments to their disciples. Yes. If disciples started taking it as negative thing, would that disciple be ever successful in life? No. So
maybe that particular situation is negative or unfavorable at that moment, but it may have some good consequences in the future. And what you are thinking that this particular situation is very perfect right now, but it may have very bad consequences in the upcoming future. Right. Right. So I chitta, want to, talking about in this terms, in the medical terms, the physician's chitta should only be treating the person as a whole. Right. Right. As I said, the physician's hand only mission should be only to restore the sick, to help to cure, as it is termed. And at the same time, if you refer the book named Secret, written by Rhonda Bryan, the author mentions about the secret of life, the secret of health. At that time, he says that a particular person should believe and should think that he is getting healthier. So even a patient's approach to that particular disease should be positive. He should be positive that yes, he is going to get cured, because if the previous 3 C's are perfect, then obviously he or she will get cured. Very so true. these are the 4 C's which I am talking about, and that's why I before giving any homeopathic medicine to my patients, first of all, I keep that medicine into the divine fate of Swamiji, ताकि वो जो मेडिसिन है वो वाइब्रेट हो जाए, उसके रिजल्ट्स अलग ही होते हैं. Because see, in homeopathy we have lots of medicines. We have more than 6,000 medicines. But what we have to do as a homeopath, we have to match the totality of the person with the totality of the medicine. So एक बड़े से सागर में से एक सुई बूंद निकालना ढूंढने होता जैसा है, है. बूंद निकालना है, बिल्कुल सही है. हाँ. So how is it possible? It is only possible when we surrender, when we get samarpit to Swamiji. तो स्वामी जी कहते हैं ना कि आप चॉकलेट मत मांगो, पूरा डब्बा मिलेगा, वही चीज है. Tell me something about you come and practice this homeopathy in Bhavnagar, where and who sometimes surprise you with her decision in selecting one of those medicines from the ocean. Yes. Talking about me, see, as you said, I am practicing in homeopathy in Bhavnagar, and I belong to the top 10 homeopathic physicians of my city as per the Curify website. So if you Google in Curify, top 10 doctors in Bhavnagar, Curify, they will show you my name. But I consider my mom, dad as the best physicians, and more precisely, mom. Now, why does this happen? I will tell you. What happens is, in our homeopathy, we take a detailed case taking. There is a requirement of detailed case taking, right? So we hear each and every details about the person, what he likes, what he or she does not like, how much water does he or she drink, what kind of dreams he gets, everything. And starting from the childhood up till now, we hear him, we listen to him, every event that has happened into his or her life. After that, after listening him for hours and hours, we decide a medicine. But my mom will be astonished. My mom just looks at the medicine's name. The point where I want to say here is, she has not studied homeopathy ever in life. Okay. Mm-hmm. She just tells me, she just looks at the medicine list and she says, Abhishek, give this medicine to that patient. And I am like, how is it how is it possible? But actually the medicine turns out to be the same. Whenever I put that symptoms into my analysis, it comes the same medicine which is selected by mom, and I get astonished. Even I have developed this new homeopathic method of treatment where I don't need to take detailed history taking, because it's not possible to take detailed histories in the cases of ICU. How would we be able to ask about the childhood history when the patient is in coma? Right. So I developed this particular sense that I can see a person's aura and can predict the nature based on that. There are many youths who ask me, who test me, they just show me a picture and I just tell them that
you have this kind of nature. But when I had not developed this theory, at that time a particular patient came to me and described everything. So I was thinking of this medicine, some kind of medicine. My mom said, no, this is not the actual medicine for him. Give him this medicine. And I am like, Mom, do you think that this particular medicine is suitable for this patient? Because see, this patient is very cool and calm, and it does not have any kind of bad things in life. He is very stable minded. No, mom said that no, money એવું નથી લાગતું. Like this is the medicine suitable. I am like thinking. So I just heard her and said yes, okay, okay. After that, within 5 to 10 minutes, that particular patient called me up and said that since madam was also sitting, matlab my mom, because I and my mom sit at the same clinic on the same table. So the patient might not be comfortable enough in sharing his inner side to me because of my mom's presence, and he detailed each and everything on the phone, and the medicine came out to be the same which was selected by my mom. Now, how is it possible? It is because she has surrendered her own self to the ultimate God. And my dad would describe that whenever there was there was one particular person or some guru who had came to him, who had met him, and said that the perfect diagnosis or perfect system is homeopathy, and perfectly diagnosis by pendulum could be done if Chakshuji would practice that particular system. Let my dad talk about it. Yes. So now you are telling us that your dad is not wrong when he keep consulting his wife for major decisions. Yeah. Because The wife is always right. Yeah, mom is always right. And I would say this is the reason why it has been jokingly said that wife is always right. Not in that sense, but it is, if you look on emotional level, if you look on the sixth sense level, sixth sense is developed very easily when your emotional side is more active. Okay, when women or ladies or even a man who has his emotional side which is more active, they are able to progress faster on the spiritual path than those who are very logical and very intellectual. Sometimes it is a woman, but she has more of the masculine energy. That is why I was talking about 1111 as feminine and masculine energy. At the end of the day, we don't just need to have scientific knowledge. At the end of the day, we don't just need to have knowledge of mind, body, and spirit. At the end of the day, we also need to understand the energy, masculine, feminine, positive, negative, and homeopathy, as we certainly discussed yesterday while defining the major difference between the allopathy, Ayurveda, and homeopathy. Homeopathy is considering the energy aspect. And this is the base of meditation, connecting with the life and science of our what you call life. So this is very powerful thing, and that is where we have to appreciate that our yogis or our ascetics or our rishis who worked on this Ayurveda and homeopathy and naturopath, they were the greatest scientists. Today in the world, with the quantum physics and all the other aspect that they are trying to understand the source of humanity, they are coming and going to our literatures from the India, and they are coming in a different English terms or modern terms, trying to market that knowledge in their way. But ultimately they are failing. You know why failing? Because they are more commercial, because they are more goal oriented, logical thinking, and their mind is still at the end of day money oriented. Now let me put everything that you said, how it affects our chakra. Okay, Dr. Bhakti, who is one of the doctor in America, Dr. Hemali Javia, who is one of the dentists in America, they like what you are sharing and they are enjoying this
with beautiful comments on your things. But what I want to say, today's doctors who became allopathy doctor, or they are practicing in the Western world, somewhere, somehow, India is following the same path today. Okay. And it has become a trend, as Swamiji also mentioned in the doctor's workshop, that people go to the doctor and he says, check him, and he gives the medicine. He says, अरे ये डॉक्टर तो बहुत क्या बोले सामान्य डॉक्टर है, उसने तो मुझे कोई महंगी टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं किसी और के पास. It has been trend. It has been जैसे fade हो गया that you send your patient for multiple tests to specialists, and it is the network of doctors that is making each other's how you say, getting clients, giving the business. Okay, that should not happen. If you look following these 4 C's that you have described, then you will rely on the treatment of a patient based on what Swamiji say. Even if you give the water, it is a placebo effect, like your father was saying in one of the case yesterday. It is a placebo effect that is going to cure the patient, because you had the prayer, because you had the 3rd C, Vishwa Chetna ke upar Vishwas. Okay, this is what counts. And again, when it comes to the patient, it is the mind that is going to work with the full trust using the 1st and 2nd C's. So my point is, your C's are very powerful. Your C's are not coming from a person, but it is the philosophy and guidance of our Vedic wisdom. Okay, we have to understand that. But when a doctor, because he has to do the job and he is employed at one clinic, he or she is trying to use the system based on the computer, they will say, Acha, this patient is 50-year-old, he has to go on the medicine for the cholesterol, medicine for the pressure, because that is the way the program is going to expect them to be a permanent client and bring the money. If that person is here in the clinic, they have to also go for this x-rays, this blood test, this, that. All this has become a cycle of money-making system. If you listen to B.K. Hegde, who has been a very renowned doctor, he is really going against this kind of system, money-making system. But you know what happens? These doctors who are practicing this for the survival and to keep their job, they are blocking their Nabhi chakra, they are blocking their Vishuddhi chakra. And if that doctor is using this kind of treatment and this kind of approach just to keep the job, they are also blocking their heart chakra. They are living with the fear, they are living with the guilt, they are living with the dissatisfaction. So this is the overall impact, and that is the reason why at the end of the practice for so many years, they become sick. They are feeling all these kind of things. This is the overall image, and this is the overall effect I am seeing in the medical field today. And I wanted to hear from a young chap like you, because this will awaken the next generation. This will inspire the next generation and the doctors who are practicing this in today's time, that no, something is very interesting and very powerful that we have got from our culture and from our medical knowledge. Let me use it with integrity and honesty, and let us see how, with the help of meditation, I can become instrumental to this society, and that will bring real health and happiness in the society and in our life. This is my personal understanding. Yes, you're right. By the way, talking about your books, the books that you recommended, have you ever read or heard about Dolores Cannon? She talks about 3 waves of volunteers. 3 waves of volunteers. She was a hypnotist, and she was going all around the world giving the talks about hypnosis. And in her hypnosis treatment to the patients, she came across so many different people who are saying that we are the volunteers who came from the higher realm. And in the past couple of decades, there was a wave that in the higher realm, they require the volunteers who come on the earth and become instrument to awaken the humanity for the
integrity, purity, and honesty, so that they can live more happy life with the light from within. As you said, self-love, self-motivation, and meditation can give that thing to everybody. But I am bringing this topic to the people like you because this is my ultimate objective. I am very much on that platform that we should not be the victim of the social programming. We should not be victim of what our parents has to say, or what our teachers has to say, or our job system has to require us to perform and live in our life. We should be more inner voice, how they guide and what to do. Then we will have the solution and treatment for any situation, like you were able to become instrumental for your grandpa. Okay, so this is very, very powerful thing. I will let you continue because मैं थोड़ा बीच में बोल देता हूँ, but I connect the dots with you. It's our pleasure to hear it from you. Thank you. Yeah. And as you said that regarding doctors, there is one particular doctor named Franz Kafka. What he has said, that it is easier to write prescriptions rather than coming to the understanding of the patient as a whole. Yes. So we must understand that that particular person as a whole is Atma. He is a soul. Very true. And his reactions, his actions, his behavior, all are the manifestations of the internal derangement of the soul. Whatever disease is, it comes at the level of mind, body, and soul. All the three levels. See, in allopathy also, there is a term named psychosomatic diseases, right? That first the mind is affected and then the body is affected. Like, for example, you might be knowing that in this era, there is a sudden raise of blood pressure. The Joint National Committee 8 has raised its recommendations of the criteria for hypertension. Earlier, it was 120 by 80 was considered as normal. Now, 140 by 90 is considered as pre-hypertensive or normal. More than 140 or 90, it's hypertension. At the same time, the criteria for the pulse rate have also been increased. Earlier, the pulse rate between 60 to 100 was considered normal. Lower than 60 was bradycardia, more than 100 was tachycardia. Now, even if a person is sitting, at that time also, the normal pulse would be running like more than 100. Why is this happening? It is because the people's psyche has been deranged to a great extent. Why? Yes. Because there is a lot of thought pollution. And what I'm trying to say is that Swamiji bhi bolte hai ki diabetes vicharo ka rog hai. It is true. Because ultimately the adrenal cortex is getting disturbed. So corticosteroids will be getting released. If some doctor is listening to this, he would be able to relate it. But what happens is, see, just as there are psychosomatic diseases, there are also somatopsychic diseases. That first body is affected and then the mind is affected. But let's say the approach towards a hypertensive patient, what is that? To give antihypertensives. Now the problem is in the psyche. He is suffering from the routine stresses of life, and we are putting them on antihypertensives. What will happen after 1 or 4 years? The dose, the power that is set for the hypertensive will keep on increasing. The set of medicines will also keep on increasing. First, there is only requirement of one antihypertensive. The blood pressure was coming back to the normal. But what about the stress? The stress is still there into the minds of the patient. That is a maintaining cause which acts as an obstacle to recovery. In spite of giving the proper treatment, the hypertension would keep on increasing, keep on increasing, keep on increasing. It would be normal for a couple of months, but then sudden raise. So the power of the medicine would be increased. Then we would add some other antihypertensive along with the main medicine. And then what will a patient become? He will be nothing except the series of various kind of drugs which are given to him. He will be just a materialistic body. Yes, and it is. Do you think that our existence is far more than the body itself? When the psyche is damaged, not only the mind is damaged, but also the soul is damaged.
if I relate to this particular thing, there are 7 chakras, and each chakra is related to each kind of plexus, what we call in medical terms. See, there are 7 different kinds of plexuses in our body. There is solar plexus, sacrococcygeal plexus, the various plexuses in our body, from where the nerve supply is going to the different organs. Each chakra is related to one kind of plexus. So there are 7 chakras and 7 main plexuses. When we have derangement in one chakra, the particular plexus related to that chakra is getting disturbed, because of which the nerve supply related to that chakra, whatever the organs may be. Let's, for example, the sacrococcygeal plexus is relating to the genitourinary organs. That particular person will get suffered from genitourinary organs. At the same time, Muladhara chakra is related to that. So various diseases are related not only to a mind level, but also to not only to the physical level, but also to the mind level and also to the soul level. Right. And the temples that were designed in the past were also designed for a specific purpose. What is a temple? I would like to ask the audience here. Please comment, what is a temple? Because in so far as you are living in foreign countries, so you might be able to relate that all Indians will, it's a gathering spot for all Indians. Yeah, it's They a social come from club. different social states. They club do in hi, and do that. And for some people, it is a place where you can. In India now, it is a trend that every weekend they go and eat outside in the restaurant. For Western world, it is a place where you don't have to cook on the weekend and go to the temple, so you can have the meal. So it is more of a bhojan than bhajan for the temple. Various but people are saying that a place where idols are kept, a place to meet your soul, etc., etc. See, you might be knowing, yes, temple is inside yourself. You're right. The various kind of comments are coming. But what I would like to say is, each and every temple has its own idol, and every idol that is kept is passed from a process named pran pratishtha. Right? Now that particular idol's vibrations are particularly put in 1 or 2 chakras. When we meditate, when we get silent, when we get still, we can feel particular vibration in our chakra. So each idol were concised made for a particular purpose. That if you are having that derangement related to a Muladhara chakra, go to this devta. Let's say for example, Lord Ganesha, let's put it this way. Yes. Tvam Muladhara sthitosi nityam tvam shakti trayatmakah. This is what is said in the Ganpati Atharvashish. Yes. Ganpati's color, I would like to ask my audience here, what is the actual color of Ganpati? Red. Because see, Ganpati is a particular god whose idols are made in various forms, right? Like various kinds of designs. In the Rangoli itself, we can notice. But what is the actual color of Ganpati? Yes. Isha Joshi ji, Sonal ji, sahi bataya, red. Now, what is the color of Muladhara chakra? Red color. Red. Right? So, it is related to that. In Ganpati Atharvashish, it is written Rakta Gandhanu Liptangam Rakta Pushpe Supujitam Surpakarnakam Rakta Vasasam Rakta Gandhanu Liptangam. This is what is written in the Ganpati Atharvashish. One who is drenched with the color of blood. That's the actual exact translation of this particular statement. So this entire thing is correlated. If you relate science and spirituality, it can come to a great extent. Yes. Similarly, there are various kinds of reasons, and each temple was made for a specific purpose. But as one comment said, somebody said that temple is within yourself. At that time, I would like to quote, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना में प्रिया न्या में क्रिया ही कर्म में रहता, मैं तो तेरी सांस में खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, ओ बंदा रे मैं तो तेरे पास.
मुझको कहाँ Swami ढूंढे रे said, बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो तेरे पास रे. and what Swamiji wrote in the first message, I am with you. जैसे पापा को बोला ना, I am with you. That is the mere realization that God exists in every single cell of the human organism. We will discuss that later on. Very true, very true, very And true. this, see, if you are interested in this kind of discussions, you can go to my blog also, and the link is kept on the slide itself, where I have related various kind of things with science and spirituality. So you That's can very true. see. Very true. You can review. So one thing that I wanted to say, Abhishek has explained us very beautifully about the 4 C's, about the doctor, about the treatment, about the universal consciousness and mind, chikitsak, chikitsa, chetna, and chitta. Okay, so one of the things that I have realized coming in the Western world and living almost more than 30 years now in Canada and America is there are 3 C's that is something that we can avoid. And if we can avoid, then we can take advantage of the 4 C's that Abhishek has given us. What are the block of those 3 C's which is affecting the 4th C from Abhishek, mind or chitta? हमारे चित्त को क्या प्रदूषित कर सकता है, and how we can avoid to keep pure chitta. Avoid 3 C's. First C is comparison. Second C is complain, and third C is condemning. Perfect. So condemning or criticizing. Okay, so the comparison is the worst thing that create you in your mind to think I am better or worse than this person. Then second thing that happens is you compared with XYZ, you start complaining that I want to have more than this person or that person. Okay, and then you also criticize the people because you think that I have more or I have less. Then you criticize that तुम तो छोटे हो, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो ugly हो, ये सोचते हैं. First start with comparison, then we start with complaining, because comparison and complaining is blocking our swadhisthana and nabhi chakra. समझ लो. Then we start Yes. criticizing, it is going to block even our heart chakra and visuddhi chakra. Condemn करने लग गए तो हम नहीं रहे, अहम हो गया. Then it is also blocking your visuddhi chakra. So all these little things, we are talking about simple things in life that can be avoided, and ultimately it is the meditation, samarpan meditation. Here we are connected with one thread, with one guru, with one chaitanya of a guru, Sri Shiv Kripanand Swamiji, through samarpan meditation. Let's keep that as a focus, and we can talk so many things and so many interesting subjects, but ultimately we have to understand that without practice there is no result. So आप ध्यान तो करना ही पड़ेगा, स्वामी जी कहते हैं. So I'm just trying to bring your attention back to your soul. Okay, your soul needs that nurturing, that fertilizer, or that water to have practice, and practice in the association of divine souls like Abhishek ji, Paras ji, Chakshu ji has given us such a beautiful sunlight, because in order to create the chlorophyll, we just don't need the water, we don't just need the earth, but we also need the sunlight. Sunlight is the Guru Shakti, sunlight is the Prakash, sunlight is the ray of divine knowledge that is coming in our life. We also need that. Okay, so the chlorophyll of mumuksa bhavana, okay, the chlorophyll of purity of chitta will develop in the presence of this kind of water, which is the practice of meditation, earth, which is the solid ground of faith in universal consciousness and Guru Shakti, and this light of Guru wisdom,
this light of soulful knowledge that is going to help us. Very beautiful. And everybody, please take note of this blog that you are seeing on the screen. अभी यानी कि यहाँ पर, but यानी कि ये लोग जो हमारे सामने बैठे हैं 97. This blog you can go .wordpress.com and you will be able to hear and learn so many things like this from Abhishek ji, and enlighten your spirit, enlighten your intellect also, and you can feel free to ask questions also. Is there any next thing that we have to one more thing I would like to say, that if somebody has any kind of questions, if somebody wants to discuss anything, one can do one thing, that he or she can mail me. So here in the my blog's link is abhibhatt97 WordPress. My email ID is abhibhatt97@gmail.com. Yeah. Okay. And So on if the anybody blog is also you have these contact details, by the way, we have checked. On the blog also you have contact details, right, Abhi? Yes. So please feel free to connect, because there are some interesting stuff coming from Abhi. Abhi thoda आगे बढ़ते हैं. Thank you. So let's see. How do you take out time for meditation in such a busy life? You are saying that you are studying for MD. You are saying that you are practicing with your mom in Bhavnagar. You are saying that you are doing meditation. You are going to so many places and giving talk. My goodness, for the age of 24, you are doing 24 different kind of tasks. Tell us how you manage it. Okay. So, Swamiji had, once there was a shibir of doctors held at Ahmedabad. He spoke that there is a thing named thought pollution. I would give an example. A cancer specialist doctor would die of cancer. A cardiologist would die of an heart attack. How is it possible? If he or she has mastered that particular science, don't you think that doctor would be aware when he would get early warning signs of cancer or early warning signs of heart attack? Because see, cancer and heart attack are not, it won't happen in just 1 or 2 days. There's a long process behind it. There are very early warning signs which a layman won't be able to recognize, but a doctor can recognize. But what is the point? He has not known his inner self. The very lacking knowledge is about the consciousness. He or she is not aware to an extent of that consciousness that he cannot recognize what is going on, not only at the cellular level, also at the psych level, also at the soul level. Because any disorder, I repeat, any disorder or any disease that starts, that particular disease first starts in the mind. Absolutely. Thinking, willing, and acting are the 3 stages that leads to any disease. First of all, we think something bad. Then we have the will to do it, right? And then we act accordingly, because of which we get a disease. Let's say, for example, if a person has got STD, sexually transmitted disease, right? He or she does not directly get that STD. We say that he or she is suffering from HIV. We see that he or she is suffering from syphilis. Why he is suffering? Because that particular bacteria or virus entered into his body. But that's not the cause. First, he thought of having this particular bad thing. Then he had those will to do it. And then he does this action without thinking much. So thinking, willing, and acting were the 3 states which led him to his own disease. Similarly, any disease he or she is getting because of this thing. Now, in order to prevent that, we must meditate, because we have a lot of thought pollution. Patients, whenever they come to us, what will they speak? They will only keep on saying about their ailments. Now, cancer surgeon or a cardiologist will only get those particular patients which are suffering from cancer or
हार्ट अटैक. सो पूरा दिन स्वामी जी की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूँ तो यू वही का वही, वही का वही, वही का वही, repeatedly goes on that. So what I was thinking is this particular reason can be possible that a doctor's chitta is continuously on the negative ailments. Now we in the morning itself starts what, for example, our morning routine starts from brushing the teeth, right? Then we take a bath, we go to the toilet, we clean our body. But what about the garbage that is present into our mind? What about that negativity? Are we cleaning it? No, we are not cleaning it. So our chitta is on the disease. And once it is beautifully said that what we think, we become. Very true. What we think, we become. So it is ultimately our chitta. So whenever we are focusing only upon the disease, we get that disease. Because consciously or unconsciously, willingly or unwillingly, we are attracting that particular energy into us. What has written in the Rhonda Byrne's the book named Secret? You just have to, how law of attraction works. You just have to put some command into the universe and it follows. So whenever your focus is just on the disease, you will get that disease. So we need to clean ourselves. तो स्वामी जी कहते हैं ना कि हमें रोज आधा घंटा नियमित ध्यान तो करना ही चाहिए. सही है. Now talking about my busy schedule, how I take out time, I wake up daily in Brahma Muhurat. Now what is this Brahma Muhurat? It is a time 1 or 1.5 hours before the sunrise. So I wake up daily at 3:40 a.m. and I meditate daily. Somebody had asked a beautiful question yesterday, that why do we get deep energies when we meditate at night? Somebody had asked, I had read, I don't know who asked, but somebody has asked to my dad in the comment section that पारस जी ऐसा क्यों होता है कि हम रात को ज्यादा एनर्जीज हमें महसूस होती. So here the question was, why do we get more energies at night, right? But what is the definition of night in the Western world? They call 12 o'clock as midnight, right? And the day starts when the sun rises. That's what the concept in Western world is. But that's not the point. If you're meditating at 3:40 a.m. and considering it as night, no, that's a wrong concept. It is Brahma Muhurat, not night. If you are meditating at that moment and if you are getting good energies, then it's the best time to meditate. But if your concept of night is different, that you are meditating at 12 o'clock or 1 o'clock, then it should not be done, because there are certain energies that are active at a particular time. Different kind of energies. Now we are resonating with one frequency. Let's, for example, we are a radio, right? And those energies are the frequencies. If we want to watch a particular program into the radio or into the TV, we should on our radio or TV at that time only. वरना तो देख ही नहीं पाएंगे ना. 7 बजे अगर कोई चीज आने वाली है तो 7 बजे हमें हमारा टीवी या रेडियो ऑन करना पड़ेगा, वरना कैसे पकड़ पाओगे. Second thing, we must adjust the frequency of the radio similar to the program which we want to listen. Let's, for example, 90.4 FM है तो 90.4 FM करना पड़ेगा, right? So whenever we wake up and we meditate, 3:40 a.m. is the best time. Why? Because there are no, most of the people are sleeping around you at that time. So there is no traffic. There is profound silence at that moment. And Kundalini awakening can happen at that moment. There's profound silence. You can hear your own breath at that time. Right? So the best time to meditate is, I guess, in Brahma Muhurat. So very good. Yes, I don't after once I wake up, after 9 o'clock, I get into my routine schedules. I go to my hospital, I see my patients, I take lectures, I do every kind of things. But this particular 3:40 a.m. to 5 a.m. is my time. I wake up daily and I meditate. And I joined Samarpan when I was just a 3-year-old kid. You might be knowing that Yes. I was born in 1997 and I joined Samarpan at 2001.
So just as a 3-year-old kid, I joined it, and I have been meditating since then regularly. So that's Very my. good. Very beautiful. Can we go on the next slides? Yes. So this sure. is very inspiring for the people, young people especially, or the busy people, busy professional people who are complaining that I don't have time. This is the way to manage. In fact, most of us, your parents and myself also, we are the early morning meditators. Like we do the meditation in the evening or daytime also sometimes. But first meditation, as Swamiji also mentioned, should be individual or personal meditation. That should be your own in the Brahma Muhurat, or at least early morning when there is less thought pollution. But one very interesting thing is the energy of the nature is in the rising mode. Please understand that also. And that helps your Kundalini also to rise. And once Kundalini is rising at that clarity of environment, that purity of environment, your mind will absorb everything in the rising environment, and it will be fully charged. Like your battery is so charged that in 30 minutes your cell phone was charged, and then you can use it for the entire day. You are going to do the same thing with your own mind and body. Charge it up and use it. Many people say, like, I like to go for walk early morning. So after meditation, I go for walk, and then I feel so fresh in the entire day that you are having fun. So that is very beautiful thing that you shared with us. I have a lot of comments in previous discussion also, but for the time's sake, we will move on the other things. We can meet again, Abhishek. As I told you, I want to bring you back not just on the public's demand, but also for very specific subject that I want to discuss with you in the future. Would you like to share any unique experience that you had after coming into this meditation and spiritual journey? Sure. There are many actually, but let's start with the first experience. Like नहीं, तुम पारस भाई के बेटे हो तो बहुत सारी अनुभूति होगी ना तेरे पास भी. तेरे डैडी के पास तो खजाना है. कुछ अनुभूतियां तो पापा मम्मी ने ऑलरेडी बता दी. But I would like to say about my Yagnopavit sanskar. See, there are soul sanskars, right, in the Sanatan Dharma that are actually the rebirth. And Yagnopavit sanskar is part and parcel of the Brahmins. Here I'm talking about the, not only the caste Brahmins, but also Varna Brahmins. There's a lot of difference between the caste and the Varna. So, what do we do in Yagnopavit? We wear this sacred thread named Janoi, and there is a specific ritual to follow. At that time, in India, we all know that we put the first card into the divine feet of Sri Ganesh Ji, right? Because Ganesh Ji is considered as Vignaharta Ganesh, so that there is no difficulty. But we kept that invitation, the divine feet of our Swamiji, and we had also sent the invitation to ashram, right? So that was the case. Now, on that day, when the card was put into the divine feet of His Holiness Swamiji, after coming back to the school, I usually had a daily routine to call my mom right from the parking itself. And I used to call, Mommy. So from the parking itself, I used to call like this, and mom used to be into the kitchen. And she would come out from the kitchen into the parking and would lift me up. This used to be a daily schedule. So on that particular day, when this particular invitation card was put in the divine feet of His Holiness Swamiji, when I came back and I called, Mommy, I was in the parking, my mom was in the kitchen. In the kitchen itself, she felt lots of divine fragrance filled with roses. There was a much distance. When she came, she lifted me up, and there was continuously this divine fragrance of roses was entirely coming out or from my body. Not only from my body, but also from my mouth when I was speaking. So my mom also asked, oh, this is amazing. So gulab ni sugandh aave che. That's what she said. So I also told mommy that, yeah, in the school itself, many guys were asking me that, have you,
put any Did you perfume? eat any kind of toffee that was of a rose flavor, or did you have any kind of perfume of roses? I said no. તે કઈ ગુલાબ ખાધું છે એવું પણ લોકો પૂછતા હતા. Did you eat rose and came? I said who Gulkan, is Gulkan. like that? So that was an anubhuti of my friends and my classmates around me. I was also wondering what happened. But when I came back, Mom also told the same thing. That was a divine experience. And when my Ragnopavit Sanskar was going on at that time also, Swamiji was about to come in the Darshan Shivir at Bhavnagar, but he came 3 days earlier to Bhavnagar. And he surprisingly sent 4 sadhakas, 3 to 4 sadhaks. One was Sanjay Soni, and there were 3. Can you move on the next slide, please? Yeah, thank you. Yes, see here it is shown that there was a surprise visit. Even we were not knowing, and when they were questioned and asked about the visit, they said that we were being guided, we were being told by Swamiji to attend this divine function and bring a tiffin for him. So it was a privilege to send the tiffin, send the prasad for Swamiji, and this surprisingly visit by these 3 to 4 divine souls happened. So what that is was the an- special thing about this Swami Purnanandji photo? Yes, this Swami Purnanand Swami is Samadhi's guru of my mom, and his ashram is in Petlar. So when I went there, the photographer was standing just beside me, and the pic was just clicked randomly. The pic was clicked to have a picture of Purnanand Swami in the mobile itself. But here you can see, if you zoom it, you can see that the photographer is not seen. The photographer is not seen, not at all seen, though he was standing just beside me. So many guys wonder who took this photograph, because I am standing with my hands back. The photographer is not visible, and you notice here that the mala or the thread that is worn by Purnanand Swami Maharaj is enclosing in such a way that it resembles my janoi. And the Yes. Bhagwa worn by Purnanand Swami is like that it is worn by me. You can see into the picture. It was a mere reflection of me seen in the Purnanand Swami's picture. Basically, you can literally see that through you, Purnanand Swami is giving darshan. And here in the glass, the reflection of the photographer is not seen, who has taken the picture, but only we see Abhi in this picture. So these are the kind of things where your faith gets strengthened, where you have to start believing that this is not just mere coincidence. This is not just, when you start believing, then your life becomes miraculous. This is where you develop your soul's strength to be very powerful, very pure, and very effective. This is what I see in your anubhuti. Very beautiful anubhuti. I cannot say more, because your own word is giving the beautiful word, energy. It is amazing for us to keep listening to you like your father. You have that divine touch in your speech. And I want to tell everybody, those who elevate themselves on a spiritual path, regardless of their age, those who elevate themselves on a spiritual path, and those who reach up to the Vishuddhi Chakra with the purity of body, mind, and soul. I am repeating this again. Those who reach up to Vishuddhi Chakra with the purity of body, mind, and soul. These awakened, enlightened soul, whatever they are going to speak, regardless of the word or subject or topic or place, this sound, Nada Brahma, what we are talking, okay? This sound is acting like the वो हम सपेरा कैसे बीन बजाता है, the sound is going to act like the awakener. That person becomes like a one who awaken the kundalini, one who affects the life force immediately of the audience. You are not even creating any effort, but that create the yog nidra in the eyes of others, okay, in the physical body of the others.
That is the power of divinity of the soul. And that kind of things happens not just overnight in one life. It happens with multiple life, multiple birth of sadhana. And this is Right. where we have to understand that if Swamiji is coming in our life and we are starting the Samarpan meditation suddenly, that is not making Parasji or Abhishekji or Chakshuji or myself or any other another sadhak overnight a divine soul. It is multiple births of sadhana that I want to show you through this picture of Swami Purnanandji in this photo. That sadhana is coming out through some divine sanket or signal that we are seeing in the photo, that here I can get something more from this person or this soul. Okay. And you can also see that Purnanandji, whose sadhana your mom has made all her life, because Purnanandji she never met personally. That blessing of the Guru Purnanandji came in her life through you. And that is what we are seeing. And that is what we bow down, that Guru Shakti, that let that energy of Purnanandji reach to each and every soul or viewer who is watching this photo and who is listening this story, and enlighten those souls to benefit from these blessings the way Abhishek and Bhatt family has been benefited. Thank you. Thank you for sharing Talking this in with me. this reference, when you spoke that we have been connected in previous lives, and talking about this reference of Puran Swami Maharaj, when I saw my past life, who was I? I was Rishi Aditya in my past life, Wow. and I came in contact with many people. Some of them are in Samarpan, some of them are outside Samarpan. But I came in contact with few of them, and one of them is probably is obviously my mom. She Very was good. my shishya in my past life, and Beautiful. when I told her that I was Rishi Aditya in my past life, my mom got astonished, and she said that in this life, my name was thought to be, I was to be about to get named as Aditya in this life. But Wow. since my birth occurred after Rudra Abhishek, as mentioned by my dad in the previous session, I was named as Abhishek. Abhishek, very beautiful. That But is very my name was thought to be kept as Aditya. And mom liked his name Aditya since the beginning. So yeah. this You was. see, so that is the soul's call. जो आत्मा कहती है ना, क्योंकि पूर्व जन्म से जानती है, तो आत्मा ने उसको आदित्य के रूप में ही देखा है, आदित्य के रूप में ही भजा है, उसकी साधना की है, पूजा की है, अर्चना की है, तो वही रूप में देखेगी. और I am trying to bring to the attention of people that past life, reincarnation, and having vision of knowledge of the past life is not just mere belief or hoax. Okay, you have to understand and you have to believe a lot of things here based on the real life story, real life experiences, and one reaches to that level of spirituality. One can be beyond the life and birth logical mind. It is beyond what you know only from this life. You can go literally and travel into the past life and get the information. But it does not come by wishing. मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दे दो. Yes. You have to be in that state of zero, and then your subconscious is going to recall, okay, this happened, this you have, and if you are hungry, you can cook that and you can enjoy this recipe. Yes. Let's go next part. Yes. Sure. Array, this is another thing. You had experience with the astral travel also? Yes. So I had this exam of my fourth year, final year BHMS. So it was scheduled at some 11 o'clock or something like that. So in the morning, after completing the daily routine activities, I was sitting in my garden, meditating. चूल्हे पे बैठा था, मस्त मेडिटेशन लग गया था. तभी स्वामी जी came, and Swami ji said, तुझे आना नहीं है क्या? चल. And he took me, he holded my hand and took me up. So I'm coming up.
I could see my own house. I could see the traffic. I could see everything. After that, suddenly he lifts me up. I could see the clouds and the entire thing. Then suddenly a state comes where I have traveled miles and kilometers, I don't know, in a very fraction of seconds. I could see everything. But there were this Swamiji took me to a place where there were two different things. Here were people with negative energy. You can't actually see their bodies, but you can identify their few things that they might be looking like this and like that. But they were filled with negative emotions. They didn't have any horns or their faces or nothing like that, but they were filled with negative energies. On this side, Swamiji took me on this side also. At that time, people were greeting Swamiji. Namaskar kar rahe the unko. They were filled with very positive energies. उनकी आंखों की जो चमक थी, that unearthly spark in their eyes was very, divine. Mhm. At that moment, I saw some faces. We cannot identify. We can see the energies. We cannot identify the clear-cut faces, but yes, we can get an idea of that. So people were greeting. They were also greeting me. I also greeted them like namaskaram. And then Swamiji took me to a step higher. One more important point was there was a river that was separating these two things, like the two sides, one with the negative sided people, one with the positive sided people. Between that, one river was flowing. And then Swamiji took me to a little bit upstairs. There were people meditating, very divine souls. Some greeted Swamiji, some had their eyes closed. We cannot identify their bodies, but we can see some kind of like some kind of things. We can get an idea. There were certain gurus who just nodded their head when Swamiji came. No namaskaram, nothing. Eye to eye contact, just nodded their head. And their eyes were, oh my God. I could, I could see those faces and recall them, but I can't identify their names because some of them I had seen in my father's literatures. Because as you know that my father likes to read a lot of holy books and has been updating many kind of videos on gurus. So I identified few of them, but I could not name them. જાણીતા છે પણ નામ નથી. After that, Swamiji suddenly looked back to me and said, "तेरे को देर नहीं हो रही है क्या? चल जा नीचे." And he just pushed me down with keeping his hand on my head and just did like this. Beautiful. तेरे को जाना नहीं है क्या? चल देरी हो रही है चल. ऐसा तो मैं पूरा नीचे गिरा and I was like, oh my God, what is this happening? I could see the clouds, these all things. Sudden shoom, and I'm coming down. I could see the clouds. I could see my house again. And जो झूले पे बैठा था वो भी मुझे दिखा. उसका वो जो ऊपर का जो roof होता है वो भी दिखा. And I was like, I will get smashed. Now I will get killed. But I got penetrated from that roof and entered my body again. That's where this something happened. So I was a bit oscillating, and my the chula on which I had sat was also oscillating a bit. So that sudden jerk happened. I opened my eyes. So I was like, कि ऐसा क्यों हुआ? At that time, I got one call. I just took my phone, and my phone was, though it was kept on silent. My friends always complain me that I never receive calls on time. But on that day, though the phone was silent, as I was meditating, the phone was kept on silent. But still, when I opened my eyes, I took the phone and I saw someone ringing. On the first ring itself, I picked the phone up, and there was one friend who got very happy that, वाह, तूने तो पहली रिंग में फोन उठा लिया, क्या बात है? मैंने बोला क्या बोलना था, बोलो. तो ही इज लाइक कि जो वाइवा 11 बजे था ना, वो वाइवा रीशेड्यूल थोड़ा अर्ली किया हुआ है. So everyone has to come early, and I am informing you
because I know that तू ऐसा मतलब ऑनलाइन वगैरह ज्यादा नहीं रहता है, तो पहले तेरे को बोलना था, फिर मैं ग्रुप में अभी मैसेज डालने वाला. So he was about to put that message into the group, but prior to that he informed me, and that's where I felt that, see, Swamiji is taking care of each and everything. It took me up, and when the time came when he get that notification that revival is rescheduled to a bit early, he just put me down and bring into my body back. So that's what anubhuti was with Ashok travel. And after that, when I discussed this anubhuti with my dad, I told him that I felt that the people with negative energy, I would call them as nark in my terms. Now, I don't know that was an exact description, but I would call it as nark. And the positive people were like swarg. But there was a river flowing in between. Now, I have not read those big literatures and all that. I have read a few of them. But I asked my dad that, is there any kind of river flowing between Nark and Swarg? Like any kind? Dad said, yes, there is one river which is named as Vaitani Nadi. The Vaitani river flows exactly between the Swarg and the Nark. So this is something which I have not read, but I experienced and came back and I discussed it with my dad. It got confirmed that the literatures that are mentioned in Sanatan Dharma are so accurate. The divine energies, the divine souls, the divine rishis who has read that had those mere third vision to see the things which are not, which are even a scientific mindset won't be able to see that in the upcoming future also. Those kind of vision the saints had. And I'm happy with that anubhuti. So I thank Swamiji. But after that, when my dad made a video on Jalaram Bapa, and after that, he made a video on Bhojalram Bapa. At that time, I identified Bhojalramji. He was the guru of Jalaram Bapa, and I said that Papa, this particular guru was there in that guru lok. So when Swamiji took me up from the these two separations between Swarg and Nark, he took me a bit up where I told you that they were divine souls. I identify it as guru lok. So that was guru lok where Swamiji took me, and I saw this Bhojalram Bapa, the guru of Jalaramji, Jalaram Bapa, into that. And other so many gurus, which I may not have been, I may not be knowing the names of those, but whenever I will come or whenever I will see that, see their pictures and read those literatures, I will surely identify them and tell you that these gurus were present in Guru Lok. Very beautiful experience. I want you to go back to these Guru Lok things. Okay, so what Abhishek was describing was heaven and hell. As you see in the bottom left picture, all the way on the left side, our team, Rasikaji, has done excellent job of creating the hell, the darkness of negative energy. And then we have shown you here on the right side, the light or the heaven's energy, positive energy, that right side. That is the heaven's energy. And in between the hell and heaven, there was a river flowing, which is the water you can see, the river of Vaitarni. Okay, so we try to depict the dream or rather the experience of Abhishek in a beautiful way that is beyond earthly plane or three-dimensional plane. It is, you can say, more on the fifth dimensional level, okay, where your soul is. And on the even higher level where you go, we call sometime Amarapur. I have heard this word Amarapur. That is the realm of all those who have earned the Amrit. This is the Guru Lok, what we call, or the realm of ascended masters for the Western world. Saint Germain is one of the ascended masters. Buddha, Jesus, these are the people whom we can consider as those masters who have reached to very high level beyond the life and birth state, and they don't have to take birth anymore.
This is the people, these are the souls who are living in the higher realm. There is a saint in the Saurashtra, not too far from Bhavnagar and Rajkot, in the guru whom we know as Jalaram Bapa, his guru was Bhojal Ram. And that Bhojal Ram, if you can see in the center, one who is wearing the white turban, one who is sitting in the center with the white clothes, is the image that we created from Swamiji's Himalayaka Samarpan Yoga. Prabhakar Sharmaji has created. We used this and we created this Bhojal Ram's image into this chair where Swamiji used to stand and offer his salutation or namaskar. So what I want to say is, this is such a beautiful depiction of Abhishek's dream. And this is possible for Abhishek also to explain through these images because of this atmiyata, this soulful bonding that happened between a young boy, a young doctor from India, and these sadhaks, young sadhaks and sadhikas from Americas. This is where Samarpan is a global family. This is where we are able to convey the teaching of Swamiji and the experiences of Swamiji that we cannot express in word, but somewhere, somehow, we can connect the dot and we can put it in the mind and heart of people to awaken their soul. This is our objective by this is Samarpan program. What a beautiful anubhuti, what a beautiful experience. I really love these things. And we feel blessed and privileged that we are hosting you as one of our divine guests. Thank you very much for sharing this anubhuti with us. Next. So your parents have been deeply involved with spirituality and Ayurveda. What is your take on spirituality and Samarpan meditation? So, as I said that I had been involved in spiritual field since, when I was just a 3-year-old kid. I joined Samarpan meditation, right? So I had deep interest in spirituality. Talking about Ayurveda, since my mom dad are Ayurvedic doctors, I was interested into this field. How? Let me tell you that when I was in a primary school, when I was a kid, I used to go to my mom's clinic. She used to take me along with her. And whatever I have read or whatever I have by-hearted, she used to ask me from the books whenever she got time in between the patients and during the break. So I used to read that, and she used to examine the patients, and I used to do my all kinds of things like lessons and homework and all things. So I was deeply interested into this Ayurveda and medical field since the beginning. In childhood, I had this interest of becoming a pilot also. Wow. And related to that also, I have an experience that I had cylindrical numbers when I was a kid. I was not able to read properly. I had this defect in vision in lower KG, right? In lower KG. So I was not able to read properly. So mom, dad tried the Ayurvedic medicines, but as a kid, I could not take those Ayurvedic medicines for a much longer time because they were a bit bitter. And we even consulted an ophthalmologist for the same. And that ophthalmologist was a senior ophthalmologist, vast experience in his field. So he said that this particular kind of numbers persist for a lifetime. Wow. They won't get cured, but the good thing is they won't increase also. They will be stable as it is. They will remain forever, but they will be stable. They can neither be get cured nor it can increase to rapidly. So this was his statement. After that, since I was interested in becoming a pilot, the prerequisite is like we should not have any kind of defect in vision. Because while driving an aeroplane, if we have that defect in vision, how would we be able to handle all that stuff? So my mom was concerned about me that काश इसके आँख के number चले जाए तो अच्छी बात है. So she just used to wash my face in the morning because I was a kid and used to say Jai Vasami, Jai Vasami, Jai Vasami at that time. And she used to even vibrate water at that time. I used to drink that. I used to wash it on my face.
after that, suddenly, when I came in 4th standard, I told my mom that I'm not able to see properly when I am wearing spectacles. પેલું કોઈ મિલ ગયા નો ઓલા છે ને ઓલા ઋતિક રોશન એના જેવી માં मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मां अब मुझे सब दिखाई दे रहा है that thing happened with me when I removed my specs. I was able to see everything. When I put my specs on, the vision is really blurry. So I told my mom. So my mom thought that मतलब स्कूल में सब बच्चे चश्मिश चच्चू और सब ऐसा बुलाते हैं ना, तो ऐसा मतलब मैं कुछ झूठ मूठ का बोल रहा होगा. But I was very sure about it. So my mom had decided that let's consult ophthalmologist. So कुछ महीनों पहले ही टेस्ट करवाया था. Before few months itself, I was, I had gone for the checkup, and ophthalmologist had told the same thing. So his opinion won't be changed, but let's try this time. So I went for a checkup. The ophthalmologist, before checking me up, said the same thing, that you came, that's a good thing for the checkup because you should come for the routine checkup. But we had a checkup a few months back only, and the number remains same. So it will still show the same thing only. Let's check it. So he did my checkup, and to his astonishment, he got shocked. He told my mom, dad, that these are the spectacles. Throw them in the dustbin forever. Now he won't ever need spectacles in his life. Wow. Now you see, as so far as the science and medical science is concerned, that particular numbers cannot be cured. But this was something miraculous that happened. Right. It was only possible because of the grace and blessings of His Holiness Swamiji. So you see, one thing that I like from this experience is you have solution. It is valid for you and it can bring fruit in your life only if you believe. Yes. तो स्वामी जी कहते हैं होना और मानना, उसके बीच की कड़ी जो है वो समर्पण ध्यान है. चश्मे के नंबर होना था, यानी कि हो रहा था, ये रियलिटी थी. मानना मम्मी डैडी और तुम्हारा भाव था, और समर्पण ध्यान वो कड़ी थी जो मिरेकल कर गई. यानी कि समर्पण और ग्रेस, गुरु की कृपा दोनों मिल गई तो सब कुछ हो जाता है. हम अगर मान सकते हैं, हम अगर समर्पित हो सकते हैं और गुरु की कृपा, परमात्मा के आशीर्वाद बस गए, तो बस मान लो चमत्कार तो होना ही है. हमें मानना पड़ेगा बस. दिस इज व्हाट आई सी फ्रॉम दिस एग्जांपल. आगे बढ़े. यहाँ पे तो यार किशन कन्हैया बन गए हो तुम, बांसुरी बजा रहे हो. Many people, nickname me as modern Krishna also. In my cake itself, they send cakes like that you are modern Krishna. Very nice, very nice. तुम हो ही ऐसे बड़े नटखट हो. ऋतिक रोशन की भी आवाज निकालते हो. ये बोला बड़े नटखट हो, ऋतिक रोशन की आवाज भी निकाल लेते हो. सभी की मिमिक्री करता है. फॉर एग्जांपल अमरीश पुरी की करें तो ओए जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी. तो ये मिमिक्री के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज अगेन, जो मिमिक्री होती है या किसी सिंगर की आवाज में गाना होता है, यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच करना होता है. एंड जो आध्यात्मिक स्थिति होती है ना, तो अगेन मैं विशुद्धि पे जाऊंगा, वही बात करूंगा साउंड वेव्स और ब्रह्मनाथ की. तो आप किसी की भी आवाज निकाल सकते हो, किसी की भी मिमिक्री कर सकते हो. व्हेन यू नो to travel into that wavelength, you know to match with the frequency. तो ये बहुत ही सुंदर बात है. मैं भी कई सिंगर्स की आवाज में गाता हूँ, लेकिन मुकेश की आवाज मेरी नेचुरल आवाज है, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है मुकेश के साउंड के साथ बिल्कुल सही जमती है. लेकिन ये सब चीजें हैं जिसका अध्यात्म के साथ बहुत लेना देना है, लोग समझते नहीं है. और अभी तो तुम अगर सारेगामा पे या किसी सिंगिंग टैलेंट शो में जाओगे तो वो अपनी अपनी झाड़ते रहेंगे, तू तो नाक से गाता है, तू तो इसकी कॉपी करता है, ये करता है. अरे बाबा, ये बच्चे को ये टैलेंट है कि वो वेवलेंथ मैच कर सकता है. ये इसकी आध्यात्मिक स्थिति है. कभी कभी छोटे बच्चे आते हैं, वहां पे गाते हैं और गूज़बम्प होते हैं, क्योंकि वो जागरूक था पूर्व जन्म में, और इस जन्म में फिर से जब भी गाता है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनीथिंग वो जागृति आ जाती है. बहुत समझने वाली बात है, बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं.
सो और कुछ आयुर्वेदा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ कहना है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ. Ayurveda, see, Ayu means life. The Ved means science. So Ayurveda is science of life. And talking about yoga, yoga is not just asana, as I say. It is comprising of 8 limbs, which we call as Ashtang Hriday. Ashtang Yoga, sorry, Ashtang Yoga. What we call it as Ashtang Yoga, right? So these are the 8 limbs. It comprises of Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. Very beautiful. These are the 8 pillars. We have to go step by step to attain, to achieve the state of Samadhi. Or see, here I want to say one thing. There are various kinds of meditative methods, and one of the method is they focus on something. Sometimes people say, focus at one point, focus on this star and meditate. How can you meditate by focusing on something? I would like to ask my audience, can you explain? It is because, see, meditation is a journey of subconscious mind. Now, when you are concentrating, when you are focusing on something, your conscious logical mind is active, not your subconscious mind. So what that particular concentration meditation is not actually meditation. That is dharana, not dhyan. Yes. Dhyan means deconcentration. And Osho has wonderfully said that rather than concentration, you should be watchful. The right meaning is watchfulness. Witness. If you are sitting here, if you are aware of your own self, what is going on internally in your mind, in your body, in your soul, if you are watching the events around you, that a particular person is cycling, the birds are chirping, but you are at state, you are able to listen your own Brahmana, that is the actual meditation. So rather than concentration, or rather than deconcentration, have the habit of watchfulness. That's what I can say. Very nice, very nice, very beautifully said. तो बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Yes, sure. So being a young fellow, you must have a lot of friends who are young also. And Yes. you must be getting into the argument with them, because sometimes your friends might not agree. Yes. When you start talking about spirituality or God or Paramatma and so many, like I was at in high school and people used to say you are too idealistic. ये सब नहीं जमता है, ये नहीं होता है. But that is the kind of things that I used to get. So I'm asking you today, that do you get in argument with your friends based on your belief or what you live in your real life? It's obviously. See, this is an era of 21st century. And in this particular era, we are getting so materialistic that we only believe what is seen, right? It should, for any kind of materialist, anything must have some weight, some dimension, some, body structure. Then and then only materialist would believe it. So this materialistic mindset people are increasing these days because the entire world is getting materialistic. And they ask that, is there anything like God? Do God exist? If they do exist, give me the proof for the same in scientific terms. And I guess audience जो भी ये देख रही है उनको भी शायद जिज्ञासा होगी या जानने के लिए कि क्या अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आप प्रूफ दीजिए. तो द आंसर इज, इफ आई एक्सप्लेन इट एज इमोशनल लेवल, दूध में भी दही होता है, दूध में भी छाछ होती है, लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती है. कब दिखती है? उसको एक प्रोसेस करनी पड़ती है, तब दिखती है. Now that is an emotional example, but let me describe it in a scientific way. In Bhagavad Gita, it is written that Sri Krishna says that Kan Kanma hu vasu chu. I reside in the every interior of the living organism, and whosoever recognizes me into that state and sees Paramatma in every living organism would attain the further state of enlightenment. This is what he speaks, right? Now, how to prove it? So, in that reference, our body is comprising of various kind of cells. You can see on the slide. We have lots of cells, trillions of cells.
Now, each cell has mitochondria, and we all know that mitochondria is known as the powerhouse of the cell. We have been taught since the school life that mitochondria is the powerhouse of the cell. It generates energy in the form of ATP. But here, I would like to contradict the same statement by quoting the reference of physics and chemistry that energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can just be transformed from one form to another. Right? Yes. So this means that mitochondria can never ever generate its own energy in the form of ATP. It can only convert some form of energy into the other. So there is some form of energy in the entire universe which is pervading into the every interior of the human organism, because of which our body is become sensational, functional, and is able to self-preserve. Because in our homeopathy, in aphorism number 10 of Organon of Medicine, it is written that a material body without the vital force is capable of no sensations, no functions, and no self-preservations. See, a dead body, say for example, has died of an heart attack. His central nervous system is absolutely normal. Now, when you ask a doctor that, doctor, please explain me, if I touch or pinch here, how can I feel the sensation? So they will say that the sensory nerve goes from this here to the brain, and then the brain sends this signal to the motor nerve that is present here. That's why we get this response. Does the audience agree to this? We are explaining this way, right? Yes. Yeah. But say, for example, a dead body, there is a dead body of a person who has died of an heart attack. The central nervous system is absolutely normal. So if that is the case, then if we pinch the dead body, even the dead body will get the sensation, because central nervous system is absolutely normal. If only the sensory nerve is responsible for sending the functions to the brain, and the brain is responsible for sending the response to the hand by the motor nerve, the dead body should get that sensation, but it's not getting. Second thing, a material body without the vital force capable of no sensation. Another thing is no functions. Now, what do we say? For example, if we ate something, how is it getting digested? The people or doctors will say that there is a peristaltic movements of our intestine. The intestine will move like this and that, and will churn all kinds of food, and the food will get digested. And the next day it will come out of the rectum and will go to the toilet and will pass the stool. That's what the case is. Agree, audience? Yes. But a dead body who has died of an heart attack, his gastrointestinal system, his GIT was absolutely normal. His intestines were normal. His stomach was normal. And you might be knowing that even dead body, when we dissect it, we can see what he or she has eaten before dying. Yes. So this means that a dead body cannot digest his food, even if the intestines were normal. So what is that thing that is digesting the food? In Bhagavad Gita, Adhyay 15, Shlok number 4, it is written that aham vaishvanaro bhutva pranam deham ashrita prana pranam samayuktam pachamyaham chaturvida. What does this mean? That I reside, I means Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Krishna says, I reside in the very form of Vaishnavara energy into the, as a digestive heat, into the stomach of every human organism. And by combining the pran and apan breaths, I digest 4 kinds of foods. This is the scientific explanation. And the last point is self-preservation. A dead body is not able to self-preserve itself. Now, in Corona times, you might have seen that how can we protect ourselves from Corona? And we say that we must wash our hands with sanitizer, and each and every sanitizer or soap kills 99.9% germs. You whatever product you use, it kills 99.9% of germs. But here we must note one thing, that even if we don't bath for 3 to 4 days, do we get putrefied? Do we get decayed? No, we don't. But if a dead body is kept for 3 to 4 days outside, it will get decayed. It will get decomposed.
Why it happens? The doctors say that we don't get decayed, we don't get decomposed because we have immunity. The dead body does not have immunity. Okay. From where does this immunity come from? So they explain that there are various kinds of immunity, humoral immunity, innate immunity, and there are certain kinds of cells in our body, on the skin, and various kinds of organs. They are also flowing inside our blood that protect us from any kind of antigen which is coming from outside. Say, for example, a bacteria or a virus. Okay. But even a dead body has those antigens, antibodies. ब्लड तो है ही ना डेड बॉडी का, बट फंक्शनल नहीं है. They say that the dead body will get decayed because there are certain environmental factors also that are playing in the role. I do agree. But for example, if we are bringing milk from a shop and we are keeping it outside, not in the fridge, and we are keeping the other milk into the fridge, which one will decay more faster? The one in the fridge or the one which is kept outside? I would like to know from the audience. Outside. Outside. So this means that whatever we want to store, it should be kept into the cold storage, right? Mm-hmm. Then and then only it will get stored. If we are keeping it outside the cold storage, it will get decomposed, or it will get degraded. If that's the case, which body is more hot, living body or the dead body? Living body is more hot. Let me give you an example. If you examine your temperature with a thermometer inside your axilla, it is less. If you measure the temperature by keeping the thermometer into the mouth, it will show some reading more. And if you measure the rectal temperature, it is even more. So the rectal temperature is always more than the oral, and the oral temperature is always more than the axillary temperature. What does this suggest? That our body from inside is hot, whereas a dead body is cold. And as per the rule, if we keep the milk product inside the fridge into the cold storage, the dead body is already cold, and the dead body is already kept into the cold storage. Will that prevent it from decaying? No, it will still decay. In spite of, and logically speaking, we are more hot as compared to the dead body. So logically, if we don't bath, right, we should get decomposed within 3 to 4 days, but we are not getting decomposed. So what Yes. is this thing which is giving us the sensations, the functions, and self-preservations? It is this vital force or this soul that exists into our body, and there is this universal energy that is coming from the universe inside our body that is making us sensational, functional, and capable enough to preserve itself from various kinds of antigens. That's where we can say that the material body without the vital force is capable of no sensation, no function, and no self-preservation. And the absence of this vital force is death. And that's where we realize that when Sri Krishna says that I reside in every cell as Paramatma, and whosoever sees me in every organism attains me. Right? Yes, yes. So that is very that's the thing. beautifully explained. Yesterday also we discussed with your dad about Yomam Pasyati Sarvatra Sarvam Chamai. So God is everywhere, God is omnipresent, and this was very good answer for those logical mind who want to understand where God is and how I can live. Again, my job as a narrator or host of this program is to connect at the end of everything with Swamiji. So what I am going to say is, Swamiji says, when we were born, there were 3 things that came on the earth from our mother's womb. That was a physical body as an infant, then there was a soul, and there was a Kundalini Shakti, which is the vital force or the live energy. So Prana Shakti jise hum kehte hain. You have to understand this principle, and you have to apply the knowledge that Abhishek has provided us. In the Western world,
in the time of Osho, people were a little bit reluctant about using the term consciousness, especially in the scientific world. Today, consciousness is also being used very openly, because quantum physics has becoming new source of bringing us to the source of how humanity or entire creation came from the black hole. What I want you to understand is, let's not get distracted, but at least start practicing meditation, at least start coming closer to your soul, at least start connecting with the divine energy and feel the bliss. Because as Abhishek was saying, that if you go only on the logical mind and you think about today's time, the way intellect is developing, is job of intellect is to cut and divide. Okay, so intellect always want to be sharp, and you are so lost with the social programming, educational programming, material world's programming. I want to be rich, nobody want to be poor. I want to be good, nobody want to be bad. I want to be right, nobody want to be wrong. But in this, we are excluding the option and possibility of learning. What yoga, meditation, Ayurveda is teaching you, you cannot exclude. Life is as it is. You have to accept it the way it is. You have to accept the world, society, people, life situation as it is. And in order to accept it the way it is, first thing you have to learn is, I can be unhappy also. I can be treated badly also by others. Unless and until I do not accept myself as who I am, I will not be able to accept others as who they are. Whether it is my father, my mother, my brother, sister, wife, children, you have to first accept yourself as who you are. Then you will be able to accept others who they are. Meditation is going to teach you that. This kind of understanding, philosophy, Vedic knowledge, religious scriptures, regardless of what religion you believe, you have to go back to the roots. You have to understand what is the real truth, not what is being imposed on your mind. You have to understand with a conscious level of your soul. And then when you are truthful, when your Vishuddhi is clear, your Agya has no negative thoughts, no negative energy, no negative intention. तो स्वामी जी कहते हैं, जब आपके मन में कुछ बुरा रहा नहीं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते नहीं, तो क्या करोगे? संसार का कल्याण करोगे. That is what happens once you reach to the Agya to Sahasra. Okay, and that is what is happening right now with this Bhatt family. They are staying awake after midnight in India. हमें देने के लिए क्या मिल रहा है? कुछ नहीं. That is what you want to do. That is what we are doing, and that is where we will be happier and healthier. Health happy does not come in accumulating wealth. Health happy does not come in reading a lot of books or having multiple degrees. Health and happiness come when I am connected with the divine, and I am pleasing divine by not disobeying his divine principles of love and light. तो वो हमें करना है. This is such a simple thing. और ये young बच्चे हमें सिखा रहे हैं. इतने सारे questions हैं कि I don't want to take much time, but I wanted to summarize this with the context of Samarpan meditation and Swamiji's teaching. That's so much to learn, so much to enjoy. Let's go move on the next part, and we will move on the questions. चलो भाई, इन लोगों को तो आप जानते ही हो. हितेंद्र जी है, सोनल जी है, और आपको ये समर्पण प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप आइए हमारे प्रोग्राम में. You are most welcome to join us as our guest and share your expertise, your knowledge, your divine gift with the others in the Samarpan family and for the humanity itself. These are our numbers. You can write down. We can come back again. Let's move on the next part. Jai Baba Swami. Jai Baba Swami. Thank you. Thank you very much, Abhishek, Paras ji, Chakshu ji. हमें तो ऐसे लगा ये वीकेंड तो हमारे लिए ट्रीट था. हम सब भावनगर पहुंच गए और भावनगर हमारे घर तक पहुंच गए.
यस, हमारे ऑडियंस ने काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पारस जी, अभिषेक जी आपके लिए। आई नो शरीर को तकलीफ हो रही होगी थोड़ी आपको No, काफी। we are okay with it. No problem. You can ask me any questions. Thank you so much for taking that. Yes, because बहुत सारे curious souls हैं यहाँ पर chat, YouTube chat और यहाँ से, तो I will let ऐश्वर्या जी take over and वो आपको सवाल पूछेंगी। और हमने इस तरह से किए हैं कि कुछ सवाल अल्टरनेट कर दिए हैं, पारस जी के पहले दिन के भी थे और अभिषेक जी के आज के, तो मिक्स मैच कर दिए, तो आपको थोड़ा सा बोलने में ब्रेक मिल जाए। पर तो ये सवालों का सिलसिला चालू करते हैं ऐश्वर्या जी से। Aishwarya ji, are you ready? Whenever a question is put, just mention that whether it is for me or for that. तो हमने डाल दिए हैं मोस्टली, और अगर जो ओपन है उसमें नहीं लिखा है तो feel free to pick it up. Yes, No we can problem. put it in the chat. So Let's begin. yes, yes. Aishwarya, is there a technical difficulty in sharing? You're muted also. We can't see your screen. You want me to share? Let's give 1 minute to Aishwarya. Okay. Okay. Her system is stuck. So go ahead, Sagar bhai, jab tak Aishwarya, because she has done some work in the PowerPoint regarding the translation and other things. But wait, let's get the question answer started, and as soon as she's back, she can. So लगता है कि स्वामी जी चाहते हैं आप शेयर करो, तो please go ahead, Sagar. Hold on, let me share my screen. Okay, can you see my screen? हाँ जी. Yes, we can see it. जब तक ऐश्वर्या वापस आती है तब तक मैं सवालों का सिलसिला चालू कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा देर नहीं हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है पारस जी आपके लिए। तो ये सुकन्या जी ने पूछा है, ये YouTube चैट में था कल। तो जय बाबा स्वामी, माय हम्बल क्वेश्चन इज did this intense advanced ध्यान happen because of previous प्राणायाम practice? क्या यह गहन ध्यान पिछले प्राणायाम के अभ्यासों के कारण हुआ? So I remember ये क्वेश्चन आया था जब आपने पहली बार आपने समर्पण ज्वाइन भी नहीं किया था, और उस समय के जो हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चन चल रहे थे तब आया था पारस जी कि आपके शुरू वाले स्पिरिचुअल जर्नी का। So if अगर आप आंसर कर सके तो। जय वासाई। जय वासाई। जो हम ध्यान की एक अवस्था प्राप्त करते हैं, तो ध्यान तक पहुंचने में जैसे बताया कि अष्टांग योग की कई पायदाने हैं, और हम वो जर्नी वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हम हैं। ठीक है, अगर आपको बम्बई पहुंचना है तो आप भावनगर से है तो भावनगर से जर्नी स्टार्ट करोगे, दिल्ली है तो दिल्ली से स्टार्ट करोगे, कलकत्ता है तो कलकत्ता से स्टार्ट करोगे, और मद्रास से है तो मद्रास से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप कहां पर है वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। लेकिन ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो है गुरु कृपा। बाकी जो भी हम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उस प्रयास से हम परमात्मा तक पहुंचने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। थोड़ा बहुत उपयोगी बन सकते हैं वो प्रयत्न, लेकिन आखिर में वो प्रयत्न की सफलता तब है जब किसी जीवंत गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो। वो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकता, और जीवंत गुरु की जब कृपा होती है तब गहन ध्यान की अवस्था भी घटित हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। जीवंती जीते जी मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो हम किस स्टेप से पहुंचे
वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है गुरु तक पहुंचना, सदगुरु तक पहुंचना, जिनकी कृपा में सब घटित हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो थैंक यू स्वामी जी जिनके पास हम पहुंचे। सो लुक्स लाइक हम रिज्यूम कर सकते हैं। ऐश्वर्या जी कैन स्टार्ट शेयरिंग, सागर you can stop share, and Aishwarya ji can take over. Thank you buddy for being back up and instantly jumping. हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अपन सेकंड में जाते हैं। एंड ऐश्वर्या ओवर टू यू। ये वाला हो गया। यस, गो अहेड प्लीज। जय बाबा स्वामी। शायद मेरे यहाँ एनर्जी इतनी फ्लो हो रही थी कि मेरा शेयर करते वक्त ही थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, बट हम कंटिन्यू करते हैं। और ये क्वेश्चन हमने अभिषेक जी का यहाँ पे रखा है कि प्रणव जी पूछते हैं, कैन नॉर्मल पर्सन सीकर exercise or practice to attain yoga nidra by self without anyone's support? क्या एक सामान्य व्यक्ति साधक बिना किसी के सहयोग के स्वयं योग निद्रा प्राप्त करने के लिए व्यायाम या अभ्यास कर सकता है? Yes, they can. Because every hypnosis is self-hypnosis. Every yoga nidra is self-yoga nidra. There are two kinds. One is guided and one is self. Whether it's meditation, whether it's yoga nidra, one can practice by its own. What we have to do is, see, best example दूं तो हम जब meditation करते हैं वो तो एक प्रकार की समाधि स्थिति योग निद्रा के जैसा ही है. That is also one self thing. जो गुरुदेव करवाते हैं वो भी कर सकते हैं. One another method is, see, whatever we are, if we want to sleep, what do? We just close our eyes so that we don't see anything, right? And the same thing we do during the meditation. We just close our eyes. So whenever we are sleeping, whenever we are doing meditation, or whenever we are into yoga nidra, the prerequisite is we should shut our senses off. Why? Because see, whatever we are capturing from the universe, we capture it by our five senses. If our eyes is closed, we cannot see the exterior thing, but we can see our inner own self. That is turning your eye inwards, shutting your eye inwards. Because whenever we are closing our eyes, even our eyes are open inside, right? We are not able to see the outward thing, but still we can see some black thing or anything like that. So the first requisite is this. Second thing, we can even close our ears. So for that, one can, if one wants to attain the state of yoga nidra, one can do like that, that one can close the ears by the earplug or by the earphones, so that one cannot hear the outward voices, right? So right now also you can do an exercise. Just close your ears like this and then speak something, or just take a deep breath. You will be able to hear your own deep breath up to a higher sound. The sound of your breath will increase. If you close your ears and take a deep breath, you will feel like as if it is a wave of an ocean. So the thing is, we must close our all senses, withdrawal of all senses, right? Somebody has said, yes, Hitendra Ranaji has perfectly said, the withdrawal of all senses. Correct. So basically, after that, what will happen? Before going into the yoga nidra, you will be able to hear the music, the orchestra, which is going on inside your body. You will be able to hear your own breath sounds. You will be able to hear your heartbeat. Then there will be, a state where तुमने है ना, like आपको खंजरी जैसा कुछ सुनाई देगा. The खंजरी को क्या बोलते हैं? In English, I don't exactly. I'm not getting that. Brass nahi. You will get a typical sound. Then after that, you will treble sound. So, and after that, you will hear your own Brahmana. So these are the steps through which you can go, withdrawing yourself from the senses
And every hypnosis or every yoga nidra is self hypnosis or self yoga nidra, whether it's guided or done by Jai Rashmi. Right. So I hope Pranavji's answer is very explicitly answered, which is yes, one can do by itself, and you always you set the steps in very detail. So thank you so much. Thank you so much. Yeah. Let's go to the next question. Okay, yeah. So this is for Parasji, and they are asking, what things did you follow during his 8 days shibir in his day-to-day life to get maximum benefit of the shibir? पारस जी के लिए मेरा एक सवाल है कि उन्होंने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में 8 दिनों के शिविर के दौरान शिविर का अधिकतम लाभ पाने के लिए किन बातों का पालन किया? बहुत अच्छा। जब मैंने पहली बार शिविर अटेंड की और जो सुगंध का अनुभव पहले दिन से शुरू हुआ, तो मैंने संकल्प किया कि एकदम चुस्त रूप से सभी नियमों का पालन करके ये शिविर अटेंड करनी है। तो स्वामी जी ने जो भी समझाया था उसका पालन करने का प्रयत्न कर रहा था। दूसरा, एक छोटा सा लिफलेट दिया था कि जमीन का संपर्क रखिए, संतोष रखिए, ऐसा सब कुछ। तो वो, और दूसरा कि स्वामी जी ने कहा था कि आपका चित्त सहस्त्रार में रखने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात जो स्वामी जी ने बताई थी कि आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, निर्विचार रहना है, यानी कि आधे घंटे ध्यान करना है, बाकी 23.5 घंटे सहस्त्रार में चित्त रख के निर्विचार स्थिति में परमात्मा के साथ जुड़ करके सभी कार्य करने हैं। हाँ, वो जो सूचनाएं थी ना, उसमें था कि ध्यान के दौरान आपको किसी को देखना नहीं है, ठीक है, वो ध्यान के दौरान का था। लेकिन मैंने अर्थघटन ऐसा किया कि स्वामी जी ने आधे घंटे ध्यान और बाकी 30.5 घंटे ध्यान की स्थिति कहा है, तो मैं पूर्ण रूप से सहस्त्र में चित्त रखने की प्रैक्टिस करता था। और ध्यान के दौरान नहीं देखना है तो पूरे दिन तो आंखें में खुली रखता था, लेकिन चित्त किसी में नहीं जाना चाहिए। अगर हम किसी के सामने देखते हैं तो उसमें चित्त जाएगा, तो चित्त भी सहस्त्र में ही रखना है। तो वैसे मैं बात करता था, लेकिन आंख में आंख मिला के भी नहीं करता था, सब कुछ छोड़ दिया। न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया 8 दिनों के लिए, टीवी देखना, टीवी में भी न्यूज देखना, सब कुछ छोड़ दिया था। और सिर्फ सहस्त्रार पे चित्त रखना है, गुरुदेव की बातों का स्मरण करना है। तो पूरा सिंसियरली 8 दिन ये प्रैक्टिस की थी, और उसमें कई हंसने जैसी बातें भी उसकी वजह से घटित हो गई थी। यहाँ पे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसे भी घटित हुए थे कुछ प्रसंग। ऐसा दिस इज लाइक जब स्वामी जी हमें जनक राजा की कहानी बताते हैं कि सभी में होके चित्त सभी में नहीं डालना है। बहुत छोटी चीज है सहस्त्रार पे चित्त रखना है, बट वेरी पावरफुल थिंग टू हैव योर। बहुत बढ़िया बताया अभी कमेंट में कि इट वाज लाइक दैट नारद मुनि इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर बाउल filled with milk, not letting it to dropping the that particular story. Yes, thank you so much. Yes. तो ये आप ये क्वेश्चन में पढ़ लेती हूँ। Why we feel more vibrations at night than daytime? नागराज पाटिल पूछते हैं कि हमें दिन की अपेक्षा में रात में अधिक कंपन क्यों महसूस होते हैं? I answered that question, I guess, when I was speaking. I will still repeat that. Just little bit conclude in small, like few words for audience. Okay, a few words, like again in brief, that here he or she is asking about the vibrations at night. Now, what do you mean by night? The Western concept of night is they call anything before the sunrise is night, right? And when the sun rises, it's day. That's what the Western concept is, because the Western world considers 12 o'clock as midnight. So but if you are meditating at 3:40 a.m. and you are considering it as night, then that's not night. Okay.
Indian night time, talking about Indian night time, before Brahma Muhurat, like before 3 o'clock, if you are meditating, then there are certain energies, okay, that will, harm you. Or the meditation that is done at particular time is made for a particular purpose. For example, tantrics do at a different time, we do at a different time. And so far as Bhagavad Gita is concerned, they also mention different spiritual practices, right? सात्विक, राजसिक, तामसिक जो लोग हैं, और ऐसे ऐसे भी लोग, मतलब कौन किसकी पूजा करते हैं, तो उसका भी टाइम्स है कि यम का क्या टाइम है, भूत का क्या टाइम है. There are the time mentioned, but the reason why you are feeling more vibration during the night time is because everyone around you is just silent. When everybody is silent, you don't have that thought pollution or traffic, so you can easily resonate with that frequency. So there are pros and cons of meditating at night. You decide it by yourself which method suits you the most, right? I don't meditate, but once I sleep, if it goes on to Sahasrara, okay, that's great. That's great. That's actually a kind of, beginning of Yoga Nidra. वैसे स्वामी जी बोलते हैं कि सुबह ध्यान करो, सुबह मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त या 3-3:30 बजे जो बोलते हैं, कभी भी जो थॉट्स का पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में वो सबसे कम होता है, एंड दैट्स व्हाई you get the vibrations more. So if that makes sense, I guess your question is answered, Nagraj ji. I'll go to the next question. तो ये है अभिषेक जी आपके लिए. मीरा जी पूछती है, what is the difference? Are you saying something? ऐसे प्रश्न आते हैं ना, स्वामी जी फिर बाद में बोलते हैं, अरे बाबा तू ध्यान करना, छोड़ दे सुबह शाम सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ कर बहुत हो गया. Yes. So yeah, I'll read the question for you. What is the difference between Atma Sakshatkar as per Swamiji and descriptions given in books? Books have a very different definition, while Swamiji during meditation tell us to repeat, कृपया हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करें. तो ये जानना चाहते हैं कि पुस्तकों में या किताबों में दिया गया आत्म साक्षात्कार का डेफिनेशन और जो स्वामी जी हमें बोलते हैं कि प्रदान करें आत्म साक्षात्कार, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, okay. See, here what I am trying to say is, you might be knowing that we are blessed with Manushya Yoni, right? Now, when we take birth as a human, our main intention or main goal is to attain Atma Sakshatkar or enlightenment. Now, there are various steps of enlightenment. Talking spiritually also, that is different thing, but let me come to a very basic thing. The first stage is to be happy. Okay? After happiness comes joyful. After happiness, there is joy. After joy, there is ecstasy. And after ecstasy, there is enlightenment. So our graph should go from happiness to joy to ecstasy to, happiness to joy to pleasure to ecstasy to enlightenment. These are the 5 steps. I repeat, happiness to joy to pleasure to ecstasy to enlightenment. Now, how is our graph going? Are we happy? I would like to ask the audience. No. Because see, logically speaking, a child is more happy or we are more happy? A child is more happy. Now, if you think practically, a child has no choice to wear his own, the clothes of his own choice. Whatever clothes he's getting, mom, dad, just they bring from the market and they just tell him or her to wear. That can vary from person to person. But whenever you are going in a school, you have a fixed uniform. You have no choice. You have to wear this. Matlab, you have to wear this. And you have to keep your clothes like this. You have to daily, you have to oil yourself. You have to cut your nails. You are also being beaten when you are a child. You are given grievous punishments by your teachers because teachers have been harsh to you. But still, a child managed to be happy. And we are having complete freedom.
we are earning, we can live the life we want, we can wear any kind of clothes, no compulsions, no restrictions, but still we are not happy. Why? Because when we were young, when we were child, we were thinking the world and we are capturing everything from the subconscious level. But when we have grew up, we are being concretized so much. And still we are logically thinking, what is Atma Sakshatkar? Just focus on these things. Atma Sakshatkar will happen as a byproduct. First, go from happiness to joy, to pleasure, to ecstasy, and then go towards the state of enlightenment. It will happen by its own. And what Swamiji is mentioning here, that कृपया हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करे. Swamiji even says कि कृपा या कोई आत्म साक्षात्कार 5 रुपए की चीज है कि आप मांगते हो कि मैंने दे दी, ये ले, ऐसा भी बोलते हैं स्वामीजी, right? So Right. these all things are not to be understood in a logical term. मांगने की चीज नहीं है, but ये स्वामीजी जो बोलते हैं ना, कृपया हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, that is what, that is अनुभूति, that is a state of bliss. And bliss is the state of enlightenment. What is anubhuti? Swamiji even explains that briefly. देखो, कुछ ना करना ही ध्यान है. That is the definition of ध्यान as per Swamiji. Perfectly explained. और अनुभूति क्या है? अच्छा लगना अनुभूति है. बोलते हैं स्वामीजी, सिर्फ अच्छा लगना. What is that? Happiness. There are various levels of anubhuti, and at last it comes enlightenment or atma sakshatkar. So the graph should go from this happiness to joy to pleasure to ecstasy to bliss and enlightenment. जय वसाई. अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन थोड़ा सा सिंपल बात मैं करता हूं कि आत्म साक्षात्कार जो है वो एक जीवंत प्रक्रिया है. पुस्तकों में जो परिभाषा की है, डेफिनेशन की है, वो शाब्दिक परिभाषा है, वो एक अंगुली निर्देश करती है, लेकिन अनुभव नहीं होता. जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि पुस्तक की गाय है वो दूध नहीं दे सकती. पुस्तकों में गाय का चित्र है, उसका वर्णन है. ये तो दिया जलाने की प्रक्रिया है. अगर हमारे घर में, हमारे कमरे में अंधेरा है तो दिया जलाना पड़ेगा. पुस्तक में लिखा होगा कि दिया जलाने से प्रकाश होता है, इस तरह से दिया जलाते. दिया जलाने की विभिन्न डेफिनेशन दी होगी, दिए के प्रकार दिए होंगे, लेकिन वो पुस्तक रखने से या पढ़ने से उजाला नहीं होगा. उजाला सिर्फ वो दिया जलाने से होगा. और आत्म साक्षात्कार रूपी दिया जलाने की प्रक्रिया सिर्फ जीवंत गुरु कर सकते. अगर जीवंत गुरु मिल गए तो पुस्तकों की व्याख्या एक फिकर छोड़ दीजिए. जय बाबा स्वामी. जय बाबा स्वामी. तरह से कहा. वेरी क्लियर. मैं एक बात जरा और जोड़ना चाहता हूँ कि स्वामी जी कहते हैं कृपया हमें ब्रह्म शक्ति प्रदान करें. तो इन इंग्लिश व्हाट यू विल से इज, स्वामी जी in a way try to connect your self consciousness with the universal consciousness. He came in our life to connect our soul with Paramatma. So think like that. And in a simple terms, when you come in front of somebody, that is Atma Sakshatkar. मेरा आत्मा साक्षात्कार हुआ, यानी कि मुझे दर्शन हुआ. Okay, so here a living guru is in front of you as a representative of Paramatma himself, personified in front of you. तो वो आत्म साक्षात्कार हुआ, वो जीवंत है. जैसे मैंने आगे कहा, as I mentioned earlier, since he has enlightened himself to such an extent that just his presence, his vision, जैसे दृष्टिपात हो गया, his presence in the aura itself is going to enlighten you. So that Atma Sakshatkar is a very unique thing. And Swamiji जैसे कोई महान आत्मा हमारे जीवन में आ जाए तो होना ही है आत्मा साक्षात्कार. ऐसे समझ लो, you have been enlightened, that's why you are still sitting here and listening this. Otherwise there are so many people trying to think so many different things, but you are, that's why you are here. आगे बढ़ते हैं. Thank you so much. Thank you so much for briefing us on that. Yes. ये भक्ति जी से पारस जी के लिए क्वेश्चन है. जय बाबा स्वामी. पारस जी, could you please explain what is human consciousness? कृपया बता सकते हैं कि मानव चेतना क्या है? वैश्विक चेतना का अंश है. जो पूरी वैश्विक चेतना है उसका ही अंश है.
अब अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में अभिषेक जी ने बताया था कि कण कण में परमात्मा है, तो इसका एक एग्जाम्पल है ये। जो पशु नहीं है वो मानव है। मनुष्य देह बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य देह ही ऐसी संरचना है जिसमें हम आत्म जागृति के बाद सहस्त्रार तक पहुंच सकते हैं। देखो, इन if you go through the evolution of mankind, it is because of the awakening of the consciousness that the backbone that used to be like this, horizontal from the ground, and we were like four-legged animals. Because of the awakening of the consciousness, that started rising like this, and today we are standing on 2 feet. Okay, so that is the Manav Chetna. That is how we became human being. Now it is challenging for us to stay being human. Okay, we have to remember that, and for that reason Swamiji came in our life. चलो आगे बढ़ते हैं। Perfect. तो अभिषेक जी, आपके लिए, with such plethora of knowledge, such beautiful blessings, and all the anubhutis and achievements that you have described today, how do you stay so humble, loving, and calm and composed? Guru Kripa is the main secret behind that. And बस daily meditation करो, और जो भी लोग आपके परिवार में या आपके नजदीक है, आपके मित्र वर्तुल में है, जैसे भी है, उनको एक्सेप्ट करो और उनको साथ लेके चलो, and consider that person as a soul and treat them as a divine soul. That's what it is. जय स्वामी। जय बाबा स्वामी। एक क्वेश्चन रसिका जी ने अभी डाला है कि यू सेड, पारस जी से है ये प्रश्न, मैंने अभी चैट में भी डाला है। यू सेड आप सतत सहस्त्रार चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करते थे या निर्विचार में रहते थे, इसके ऊपर कुछ टिप्स कीजिए कि हम कैसे ये आजमा सकते हैं। वो दोनों एक ही बात है। सहस्त्रार पे चित्त जाने से निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार हो ही जाते हैं सहस्त्रार पे चित्त रखने के लिए। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रयास नहीं, ये प्रसाद है, गुरु कृपा है, तभी हो पाता है। हमें सिर्फ अपनी शुद्ध इच्छा व्यक्त करनी है प्रयास से, और वही तो समर्पण है कि हम अपने प्रयत्न से नहीं कर पाते तो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं ना, गुरुदेव करवा लेते हैं। ये कैसी बात है कि एक छोटा सा बच्चा है, अभी चलना नहीं सीखा, थोड़ा थोड़ा जमीन पर रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, माँ अपने काम में व्यस्त है, बच्चा है, माँ के पास जाना चाहता है, तो वो क्या है, एक दो कदम वो चलने के लिए आगे बढ़ने के ट्राई करेगा, फिर कहेगा माँ माँ, तो वो तो एक दो कदम चलने की कोशिश करेगा, लेकिन माँ है वो 10-15 कदम दौड़ के आएगी और उसे गोदी में उठा लेगी। तो ऐसे हम सिर्फ इच्छा जाहिर करती कि ये हमें करना है, गुरुदेव शास्त्र में स्थिर रहना है, तो फिर उनकी कृपा बरसेगी और वो स्थित करवा लेंगे। जय वसाई। और एक आखिरी सवाल है, प्रॉमिस ही आपके लिए आखिरी सवाल है, इसके आगे हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो प्रणव जी पूछ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन व्हाट अदर थिंग्स यू डू टू कीप योरसेल्फ or on your chitta clear from decision and away from negativity you might be dealing in your day-to-day life? जी बस वही है कि मेडिटेशन के अलावा गुरु चरण में चित्त रखना या सहस्त्रार पे चित्त रखना, तो गुरुदेव का प्रोटेक्शन मिलता ही रहता है, और हमें बस अपना सकारात्मक अभिगम अपने सभी कार्य में रखना है, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है। बस जीवन में अच्छा सकारात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है, बाकी गुरु कृपा में सब हो जाता है, तो प्रोटेक्शन है ही, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी है। और one more thing कि when we say that I am pure soul, I am a holy soul, रोज ये बोलिए, और बोलिए तब सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए, क्योंकि जब आप लॉजिकल माइंड से बोलते हो, जब आप बाह्य बोलते हो ना, ये चीज कहीं ना कहीं आपको गिल्ट महसूस कराएगी। जब आप बोलते हो आई एम अ प्योर सोल, योर माइंड विल से कि हाँ क्या मैं प्योर हूँ, मैंने इतने तो पाप किए, मैंने तो ये किए, मैंने वो किए। But when it comes from the subconscious mind that I am a pure soul, I am a holy soul, you are neither going into your past
neither going into your future. You are just in this present state, in that state of bliss. In that state, you are not letting your past to blackmail your present to ruin a beautiful future. The दिए जिंदगी फिल्म में ये बहुत बढ़िया एक कोट है, ये जो मैंने अभी बताया वो. You have to speak this particular thing from the subconscious level. That's it. Once you do this thing, everything will happen on its own. बहुत ही सुंदर. और there are such a beautiful feedback coming, especially from our sadhaks in Americas. Yash Shimpi, who is one of our officer from the USA Trust, and very divine, very pure soul, lovely boy. He has given vote of thanks to you, the Bhatt family. So आप पढ़िएगा जरूर. Thank you, yes, ji. I would request Yash to put the volume and read in your own voice to get the vibration. Yash, can we make Yash ji co-host if not yet made? वो जब आ रहा है उससे पहले मैं स्लाइड्स किसके पास है, मैं आपको कहता हूँ कि वो हेवन और हेल वाली जो गुरु लोक वाली जो स्लाइड थी उसके ऊपर, उसके आगे वाली स्लाइड जहाँ पे अभिषेक जी ध्यान कर रहे हैं. नहीं, ध्यान में बैठे अभिषेक जी. या इसके पहले. Okay. Go. Just before, after. This is what I want. I am ready, uncle, whenever you are. So happy, so. हाँ, तो आप पहले शुरू करिए, बाद में. So amazing. Can you hear me? Sorry. Give me 1 second. एको हो रहा है, किसी का फोन या सिस्टम डाउन करनी पड़ेगी. Yeah, Yash and Darshana are doing Guru Karya from same house, इसलिए. Yes. जय बाबा स्वामी पारस जी, अभिषेक जी, चक्षु माँ. This is what I want. I am ready, uncle, whenever you are. शुरू हो जाओ भाई. Yes, go on. We are listening. Yes, ji. Thank you. So I will be reading my vote of thanks because there is so much love and thank you so much. मतलब दिल से इतना happiness है. So I'm just going to read through that, and I'm pretty sure everyone has the same feelings for all of you. So dearest Dr. Chakshu ji, Dr. Paras ji, and Dr. Abhishek ji, I'm sure you saw and read the reaction from everyone here on Zoom. And there is so much more love on our YouTube chat. So you should have seen the YouTube chat as well. We had live YouTube chat, so much love there as well. I want to express heartfelt love for you. Thank you so much for your precious time during this blissful weekend. During these 2 days, we got to learn so much. We felt so much energy and vibrations everywhere. You've been so polite, so humble, and so loving, answering every question in a way that we could easily connect and understand every single thing. And honestly, for some reason, it feels like we know you or we are connected to you from a long time and feel like we are part of your family as well. It is just your love and your humble nature. And thank you so much, Swamiji, for blessing us with this opportunity. And Abhishek ji, आपके लिए तो सच में क्या कहे, दिल से thank you for touching our hearts and walking us through this journey. I think like I have learned so much spiritually, emotionally, and energy-wise just during these 2 days. And Hitendra uncle and TIS team, Sonal di, Aishwarya, everyone, Rasika di, what beautiful pictures and the presentation. So thank you so much for just this opportunity. Thanks a lot. Yes. Hey, Papa Swami. These are our sadhaks, and they said it from their heart to cover up the love and the gratitude from all of us, from the Samarpan family. So बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से. लेकिन मैं एक बात से बहुत खुश हुआ जो what I heard from Yash words, and yesterday Banu Ben Kotecha from Canada also told me, we felt like we are one family. We felt like we met somebody whom we knew from the long time. And this is where I am saying, सारी कायनात का सारा ज्ञान, सारी दुनिया का सभी नॉलेज आप एक जगह पे रख दीजिए. जैसे अभिषेक जी के ये नेक्स्ट स्लाइड के अनुभव में है ना, दुनिया वैतरणी नदी है और नेगेटिविटी है,
तो वहां पर छोड़ दीजिए नेगेटिविटी उस दुनिया के लिए। हमें स्वर्ग की दुनिया, प्रकाश की दुनिया, गुरुलोक की दुनिया में जाना है। आप उसके लिए एक ही चीज पकड़ लीजिए, आज से मैं सब में स्वामी जी को देखूंगा या देखूंगी। आज से मैं सब में स्वामी जी को देखूंगा या देखूंगी, और आज से मैं ध्यान करने में चोरी नहीं करूंगा या करूंगी। ये दो चीज मुझे चाहिए, ध्यान की चोरी नहीं चाहिए, स्वामी जी को सब जगह पे देखना है, और फिर स्वर्ग आपका ही है। सेल्फ रियलाइजेशन, सहस्त्रार चक्र, ये वो सब आपका ही है। प्यार करना सीख जाओ। इसीलिए यहाँ पे स्वामी जी, अभिषेक जी जब ध्यान करके बैठे थे ना अपने घर के झूले पे, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं मालूम है? कई सदियों से, कई जन्मों से, कई सदियों से, कई जन्मों से, तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आ जाओ, आ जाके अधूरा है अपना मिलन, कई सदियों से। ये रिश्ता आज का नहीं है, 8 सदियों का, 800 सालों का है। जब अभिषेक जैसा बच्चा स्वामी जी से 3 साल की उम्र से जुड़ गया, आप और मैं क्यों नहीं जुड़ सकते भाई? हम भी जुड़ जाएंगे, हम भी इसका मजा लेंगे, हम भी इस ग्लोबल समर्पण परिवार को अपना परिवार बना लेंगे। इसलिए दिस इज समर्पण is one of the best thing that happened in the समर्पण history, and it is going to continue happening। आपके प्यार की वजह से, स्वामी जी के आशीर्वाद की वजह से। देखो स्वामी जी बुला रहे हैं, आप भी जरा एक वर्चुअल हक दे दो स्वामी जी को। जय बाबा स्वामी। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। और चक्षु जी, आपके चक्षु से हमें दर्शन दे दो, आ जाओ आप भी साथ। थैंक यू, બહુ સારું લાગ્યું અને બહુ મજા આવી। તમારી નીંદ હરામ કરી નાખી અમે તો। આજે તમને ये है बाबा स्वामी का परिवार, ये है गुरु माँ का परिवार, ये है समर्पण परिवार। जय बाबा जय बाबा स्वामी। आप हाथ में दे रहा हूँ, आगे का प्रोग्राम जारी रखिए। Okay, let's go to the thank you slide, all the way towards thank you so much। तो ये होता है कि जब स्वामी जी बोलते हैं ना आशीर्वाद लेना होता है, खींचना होता है, तो ये यहाँ पर मेरी लाइनें थी, पर यश भाई ने गुरु कार्य करके और अपनी लाइनें लेके आशीर्वाद खुद ही बटोर लिया। तो ऐसे ही समर्पण फैमिली है कि हितेंद्र जी ने बोला कि यश पढ़ेंगे, उसके पहले ही मैंने ग्रुप में डाला कि कैन वी मेक यश को होस्ट। मतलब हम वो मन में ही एकदम साथ में ख्याल है कि ये तो यश भाई को ही करना पड़ेगा। ही जम्प्ड इन, मतलब सभी नहीं, पूरे पीछे बैक स्टेज में जहां देखा कि जरूरत है अपने आप काम करना चालू कर दिया। हर पर्सन ने किसी को बोलना ही नहीं पड़ रहा था, और कल भी ऐसे लग रहा था और आज भी कि पारस जी, चक्षु जी और अभिषेक जी के लिए तो जो आदर और प्यार बह रहा है वो तो बह ही रहा था, पर ये सब बच्चों के लिए भी उतना ही तीव्रता से बह रहा था। तो लगा कि स्वामी जी ने सही मायनों में स्वर्ग बना दिया हमारे आसपास। मतलब एक पारस जी, एक चक्षु जी, एक अभिषेक जी ने, यहाँ पर तो 10 ऐसे लग गए, ऐसे लगा कल इन सब लोगों का काम देख के कि मैं कर दूं, मैं कर दूं, मैं कर दूं, ऐसे कूद रहे थे। किसी का नाम नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे कुछ पीछे, कोई पीछे नहीं, बस सब आगे। सो थैंक यू टू एवरीवन हु मेड इट हैपन। मतलब आप लोगों को शारीरिक तकलीफ हुई होगी इतना जगने की वजह से, पर हमको जो आपने चैतन्य दिया है, जो स्वामी जी से बिल्कुल हर अनुभूति में ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी यही हैं और हम वहां हैं जहां पर आप हमको लेकर गए। तो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं आपका टाइम डिले करने के बजाय हम अगली स्लाइड पे थैंक यू जो हमारी टीम के लिए बनाया गया एक ब्यूटीफुल वीडियो वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो प्लीज गो अहेड।
is the surprise. ये पहली बार हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे थॉट में परिवर्तन कैसे आया ऐसा। जैसे जैसे मैं नजदीक जाता गया, स्टेप उतर गया, जैसे कि मेरे भीतर वाइब्रेशन बढ़ने लगे, मेरे भीतर भाव उमड़ने लगा, कुछ प्रेम उमड़ने लगा, ऐसा लगा कि नहीं इसके चरण पकड़ ही लूं ऐसा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। आपकी पूरी टीम को और आज की ऑडियंस को जिन्होंने शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम सुना, उन सब के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि 100 चांद भी उतर आए। एक second, sorry to interrupt. I would like everyone in the team to turn on their video before that, please. Ab jaiye. Sorry about the interruption. No problem, no problem. So before concluding this, I would like to thank the entire team और हमारी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने आज के पूरे कार्यक्रम को पूर्ण शांतिपूर्वक और इतने पॉजिटिव अभिगम के साथ सुना। तो सभी को थैंक्स कहने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 100 चांद भी अगर उतर आए, 100 चांद भी उतर आए, फिर भी आज के कार्यक्रम में वो बात न रहती, सिर्फ आप सबके आ जाने से ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। कैसे शुक्रिया आभार उपकार अदा करो आप सबका, कैसे शुक्रिया आभार उपकार अदा करो आप सबका, अगर आप और स्वामी जी ना आते तो ये शाम महकती ना थी। थैंक यू। खूब बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसा लगा कि स्वामी जी ने कितनी सुंदर गिफ्ट दी है, कितना सुंदर परिवार दिया है। और मैं कहता हूं कि हमारे बीच में इतनी दूरियों के बावजूद, इतने वक्त के डिफरेंस के बावजूद जो प्यार है, जो आत्मीयता है, यह देखकर स्वामी जी को लगेगा ये बच्चे आगे चल के समर्पण को आगे ले जाएंगे। जो गुरु ने हमें दिया है इतने प्यार से, हिमालय से स्वामी जी लेके आए हैं, वो अगली पीढ़ी तक पहुंचे, यही प्यार भरी हमारी उम्मीद है। और जैसे आखिरी पंक्ति में कहा, दाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, बाकी सब ज्ञान की बातें छोड़ के सिर्फ प्यार की बात से हम आगे बढ़ाए इस परिवार को, और ध्यान करना न भूले, दूसरों में स्वामी जी को देखना न भूले, आगे बढ़ते रहें। All the best and thank you for appreciating and joining this program, because it is because of the thirsty people like you जो आत्म ज्ञान के लिए प्यासे हैं, आत्म आनंद के लिए प्यासे हैं। This program is happening and I want to tell you something, that it has been a passion for us, it has been a life for us. We are working together as one family, we are working together
to give the voice of Swamiji. हमें तो लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, हम तो लगता है हम नहीं कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं। सभी बच्चों को ऐसे लगता है, अभिषेक हो या धारा हो या उत्सव हो, सब बच्चों को ऐसे लग रहा है कि स्वामी जी हमें माध्यम बना रहे हैं। जब ये आनंद अंदर से आता है तो फिर वो आत्म साक्षात्कार नहीं है तो क्या है, अरे बाबा एंजॉय करो ना, मजे करो, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। बहुत अच्छा लगा और सबको साथ में देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। आज तो शिरीष जी भी बैठे हैं। शिरीष जी प्लीज से 2 वर्ड्स, आपकी आवाज भी सुन ले। शिरीष जी हमारे ट्रस्टी है और राजकोट 2005 की शिविर में वो पहली बार स्वामी जी के दर्शन किए थे और बहुत ही हमारे लिए सम्माननीय आत्मा है, क्योंकि उनकी विजडम और उनका ज्ञान और उनका साथ हमें मिला तो कनाडा ट्रस्ट में हमारे लिए बहुत आशीर्वाद बन गए वो। और शिरीष जी आप 2 शब्द कहिए जरूर प्लीज। अनम्यूट करना, आप म्यूट है, अनम्यूट करना। Yes. Can you hear me now? अभी हाँ, थैंक यू। Yeah. Jai Atmeswar, Jai Baba Swami. So nice. What an experience. What an experience last 2 days. It's been. Thank you. Thank you. मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। बाबा स्वामी का बस प्रेम है, प्यार है, वही एक ही शब्द है प्रेम का, जो आपने कोई तरह के कोई different ways you express that, you know, in so many ways. Ultimately वही है, प्यार बताया सब लोग ने। बहुत आनंद आया, आपने हमको एक्सटेसी से एनलाइटमेंट तक ले जाने का कोशिश किया इसमें से। थैंक यू। और ये वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर के मुंह से डॉक्टर परिवार को मिले, उससे ज्यादा क्या दे सकते हैं हम।